Zan, ball is missing everything, and rightly so. Umpire Sheikh Malali knows that ball is going towards outside the line of leg stump, going to miss the leg stump, and that's why he's not interested. Rightly so. The much required dotted delivery from Majid. 34 on the board. Again, going for the drive, misses is completely well within the reach of the batter. So far Majid has been bowled a fantastic over, the good over so far, as he just testing the temperament of the batter, the bowling that around his legs, and the experienced bowler Majid, and putting his all experience in this particular over. So far it's a very good over and quiet over. Majid bowls again, he bowled a little bit outside the line of leg stump. Wicketkeeper completes the job. A wonderful over there for Majid, but a fantastic innings of Hafiz, which is comes to an end. And Majid at last picked the first wicket for his team. Relax here for the captain of Neo Boys, Faisal Nagar. But Hafiz, I think he did all the damages what he wanted to do in this first 3 overs. And over number 4 completed. After completion of over number 4, it's 34 on the board for the loss of 1 wicket. A partnership of 34 runs which is comes to an end. Naku over na ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ವೆಲ್ಡನ್ ಕಾಲ್ಕಟ್ಟೆ 34 ಅಮೂಲ್ಯ ರನ್ನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಅನೀಫ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ರನ್ನಿನ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಕಡೆ ತಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 25 ಅಮೂಲ್ಯ ರನ್ನಿನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನೀಫ್ ದ ವೆಲ್ ಪ್ಲೇಡ್, 25 runs. It's the big contribution from Anif for his team. Has scored 25 valuable runs, and now 5th over is going to start as Ranjit has got a ball in his hand. Very experienced campaigner Ranjit, excellent all-rounder, will go into ball first over of the last over, fifth over. Driven beautifully down to deep, extra coverage and protection has been given in the deep so that the batter have to settle for the singles. The new batsman Bashit is off the mark with the single. Ifas is on strike. He's batting on 5. Lan, beautiful stroke, but there is a protection in the deep. They're coming back for the second. In comes the throw. Ranjit trying for the run out in the striker's end, but batsman safe. Opportunity of run out in the non-striker's end, but Ranjit just thinking about the run out in the striker's end, and that's why the batsman quite safe in the negation. Isa's got a couple of runs. With that couple of runs, Kobat Namozan to number 5 in progress. Ranjit right above the wicket. This time delivery which is a flighted one. Tried to clear the boundary, but is not couldn't able to clear that one. The fielder there at wideish long on, making no mistake at all in the negation, Karthik, and wicket number so wicket number 2 which is back into pavilion, and this time a flighted delivery. Ranjit quite deliberately flighted the delivery which is outside the line of off strength. Batsman Bashit wanted to hit that one across the line of the delivery, and he just pays the penalty for that, and the fielder making no mistake at all in the negation. Javed is a new batsman in. Now deep long on is there. Akshay down at deep long on. There is a short mid wicket. Little bit correction, the previous catch which is taken by Akshay. There a deep long off is there. Again lovely delivery to
ball to the new batter. As for the new rules and regulation of cricket is concerned, each and every time the catch is taken, there is no chance for the rotation of strike. New batter has to take the strike. Ranjit bowls. This time again, lovely delivery in the end. That's what I'm talking about. The experience is so important. And Ranjit so far is putting his all experience in this particular over. And being the experience is not important, but converting that experience into performance is so important, as Ranjit so far is managed to keep the things tight in this particular over. That's only because of the wicket of Anif when he's back into pavilion. Looks like new boys able to put some pressure onto the batsman. Driven firmly down to deep long off region. Good collection and written by the fielder. It was a fantastic over is comes to an end after completion of over number 5. Well done. Kalakat is still there in the right track of getting good score here. 39 on the board for the loss of 2 wickets. 2 very good overs. After that, 3 expensive overs bowled there by the bowlers of New Boys Faisal Nagar. That looks like they are able to pick the wickets of very dangerous man Anif first, and after that they able to tighten up the screws here, bowling some good line and length. The last over will go into start as Majid, one of the best bowling figure. He has got 1 over, no maiden, 3 runs and 1 wicket. And suddenly the captain wanted him to continue to bowl the last over, the second over of his quota. Right arm over the wicket, he bowls outside the run of leg stump again. He just bowling that line quite beautifully, just confusing the batsman by bowling that line which is within the line, which is we can see that ball is just within the line, and that's why umpire Sheikh Malali is not interested to give wide. Rightly so. Right arm over the wicket. This time again, lovely delivery, beautifully ball, chance of run out, turning and hitting the stumps. Appeal for run out here, but umpire Sheikh Malali is not interested. And the good piece of fielding there by Majid in derogation on his follow throw, feels the ball and turns back, hits the stump, but that time I think the batsman is safe. I request the captain of YFC Nantur as well as challenge Adyar to report for the signatures. Eagerly signature na ಬಾಕಿ ಇದೆ. 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸಮಯದ ಅಭಾವಿದೆ. So look at the Majid. This is what you're talking about, the 2 bowlers, Ranjit and when Majid. 2 bowlers managed to pull the things back inside of New Boys. Majid again. This time lofted but not quite enough, and just a single, looking for the 2 then, and good running between the wicket. That's a good thinking as far as the point of view of the non-striker is concerned, and the non-striker Bashit is running towards the danger end. Ifaz, little correction, Ifaz running towards the danger end, and Javed is a striker now. Got a couple of runs in the previous delivery. Majid bowls, drives that one powerfully down to deep long on. This time they're charging for the second. In comes a throw from the deep. Ranjit have to work hard, but here is the batsman Javed is sprinting towards the striker's end, and I think it's a wrong end to return the ball, because you can see that it's give a lot of time if the fielders try to return the ball towards the striker's end. It will give a lot of time for the batter to complete the couple of runs. With that couple of runs, scoreboard numbers on to 44 on the board. The last delivery of the innings of well done Kalakate will go into begin. So last 2 deliveries of Majid, last delivery remaining. I'm talking about last 2 deliveries. He conceded 4 runs, and he bowling final time in this over. Again, ball is just deflected from the leg of the batsman, so leg by is called by umpire, and over which is completed after completion of over number 6. Scoreboard is 45 on the board, and they set a target of 46 to win the match for New Boys Faisal Nagar. The first match itself, it was an exciting game of cricket, and both the teams desperately wanted to be in the next round of this cricket tournament, and we will see how New Boys Faisal Nagar will going to get this the 40
6 runs to win this match in a stipulated 6 overs. That means 36 balls and 46 runs required for the victory. And before next the innings will go into start, the change in commentary box, I would like to invite my a friend and one more the new face, but a new face especially in this particular cricket ground, and I request Kabir Kudroli to take over the microphone, famously known as Junior Gopi in mic. Please welcome Mr. Kabir for the further explanation of the match in our national language, Hindi. Thank you. धन्यवाद इस वक्त सतीश सर को। और इस वक्त मैच को यहाँ पर फ्रेंड्स शांतिनगर प्रस्तुत करते हुए नेत्रवती ट्रॉफी 2022 इस वक्त शानदार तरीके से आयोजन करते हुए फ्रेंड्स शांतिनगर मैच नंबर 1 अतिरिक्त महारथियों के साथ इस वक्त रिबन कट करने के बाद उद्घाटन यहाँ पर होने के बाद आज का दिन का पहला मैच इस वक्त चलते हुए वेल्टन कल्लकट्टे और वेल्टन न्यू बॉयज फैसल नगर के बीच। न्यू बॉयज फैसल नगर की जो कप्तान ने टॉस जीतने के बाद शतरक्षण करने के लिए यहाँ पर निर्णय ले चुके थे। 45 रन की यहाँ पर बन चुके थे बल्लेबाज वेल्टन कलकत्ता की, और न्यू बॉयज के लिए इस वक्त 46 रन की लक्ष्य यहाँ पर रखते हुए 6 ओवर का मैच 2 ओवर पावर प्ले माना जाता है। 2 फील्डर केवल 2 मात्र फील्डर आउटसाइड द सर्कल पर शतरक्षण करना पड़ेगा। और मैच का इस वक्त ऑफिशियल इस मैच की शेख मलाली टॉप मोस्ट एक्सपीरियंस इस वक्त मैच को यहाँ पर मेन अंपायर के नाम से, और नाजिर बजाल इस वक्त स्कोरर अंपायर के काम यहाँ पर बढ़ते हुए, और स्कोरर के इस वक्त अमीन लाइव टेलीकास्टिंग पर बेद्रा मीडिया के इरफान बेद्रा इनके सारथियों के साथ इस वक्त लाइव टेलीकास्टिंग यहाँ पर चलते हुए, और हरे भरे पेड़ पौधे इस वक्त लहराते हुए झंडों के साथ एनसीजी यानी नेत्रवती क्रिकेट ग्राउंड पर इस वक्त मैच चलते हुए नेत्रवती ट्रॉफी 2022। दोनों आक्रामक बल्लेबाज इस वक्त स्ट्राइक और नॉन स्ट्राइक रन के निशान पर खेलने के लिए तैयार। स्ट्राइक रन के निशान पर खेलने के लिए अक्षय और नॉन स्ट्राइक रन के निशान पर खेलने के लिए हर्षित, और गेंदबाजी पर थोड़ी सी वहां पर बातचीत करने के बाद देखना पड़ेगा किस गेंदबाज को कप्तान चुनाएगा पहला ओवर फेंकने के लिए।
और मैच पर तैयार होता है वे ग्रीन सिग्नल इस वक्त मिल चुका है गेंदबाजी पर जावेद और बल्लेबाजी करने के लिए अक्षय और नौशे के निशान पर हर्षित। पावर प्ले इस वक्त जारी हो चुका है, केवल 2 फील्डर आउटसाइड सर्कल, इस बार गया पहला गेंद ऑनसाइड के निशान पर खेलना चाहा लेकिन पैरों पर टकराई और इस वक्त लेग बाइस का इशारा एक्स्ट्रा की तरफ से 1 रन वहां पर मिलेगा और इस वक्त 1 रन के साथ बल्लेबाज की टीम की यहाँ पर खाता यहाँ पर खोल चुका है। पहला गेंद पर 1 रन यहाँ पर बनने के बाद पावर प्ले इस वक्त जारी हो चुका है, केवल आउटसाइड द सर्कल पर 2 फील्डर और इस वक्त फील्डिंग में जमावट करने के बाद क्योंकि दाएं और बाएं हाथ की खिलाड़ी दोनों लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन इस वक्त चलने के बाद थोड़ी सी फील्डिंग में परिवर्तन करना ही पड़ेगा। अब गेंदबाजी पर जावेद फिर से गेंदबाज करने के लिए दूसरी गेंद, इस बार गेंद का वहां पर खेल चुका था लेकिन मिड ऑफ द बैट कनेक्ट नहीं, 1 रन वहां पर दौड़कर प्राप्त कर चुका है। शायद गेंद को फील किया था लेकिन कम से कम गेंद डायरेक्ट हिट हुआ तो बल्लेबाज को वहां पर खतरा मार सकते थे लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर सुरक्षित 1 रन दौड़कर प्राप्त कर चुका है। इस 1 रन के साथ रन संख्या यहाँ पर जंप होते हुए 2 रन इस वक्त बन चुका है। शानदार तरीके से आयोजन करने के बाद फ्रेंड्स शांतिनगर इस वक्त आयोजन करने के बाद नेत्रावती ट्रॉफी 2022 इस टूर्नामेंट का पहला मैच यहां पर चलते हुए जावेद गेंदबाजी पर फिर से गेंदबाजी, इस बार राउंड साइड के काफी दूर और अंपायर का इशारा वाइड करार एक्स्ट्रा की तरफ से वहां पर 1 रन अतिरिक्त की तरफ से बल्लेबाज की टीम को 1 रन मिलेगा जरूर। इस 1 रन के साथ रन संख्या यहाँ पर जंप होते हुए 3 रन यहाँ पर बन चुका है 2 गेंद प्राप्त करने के बाद। तीसरी बार जावेद गेंदबाजी पर, इस बार गेंद वहां पर पैरों पर टकराए, जोरदार फील लेकिन वहां पर अंपायर का लेग बाइस का केवल इशारा दे चुके थे। गेंद शायद ऑन साइड के थोड़ी सी दूर चले गए थे पैरों पर टकराने के बाद भी और अंपायर का कोई वहां पर इशारा नहीं थे। लेग बाइस का केवल 1 रन अतिरिक्त की तरफ से मिलेगा जरूर। इस 1 रन के साथ रन संख्या यहाँ पर बनते हुए 4 रन पहला 3 गेंद प्राप्त होने के बाद। चौथी बार गेंदबाजी पर जावेद गेंदबाज करने के लिए बल्लेबाजी पर हर्षित, इस बार गेंद अलोंग द कारपेट जैसे अंग्रेज में कहते हैं बिल्कुल जमीन के साथ है, गेंद को रख चुके थे एब्सोल्युटली फैंटास्टिक क्विक रन। गेंद तेजी के साथ इस वक्त गेंदबाज किया था जावेद ने और बल्लेबाज का पूरा चकमकाते हुए विकेट कीपर ने गेंद का कलेक्ट किया और डॉटेड गेंद बिंदी गेंद यहाँ पर साबित होते हुए इस 4 गेंद समाप्त होने के बाद पावर प्ले इस वक्त जारी हो चुका है। केवल आउटसाइड द सर्कल पर 2 फील्डर खड़े होते हुए वाइडिश लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के निशान पर 2 फील्डर आउटसाइड द सर्कल पर खड़े होते हुए 5वीं गेंदबाजी पर जावेद गेंदबाज करने के लिए तैयार। इस बार गेंद का उछाला, गेंद वहां पर थोड़ी सी ड्राइव किया था वाइडिश लॉन्ग ऑन के निशान पर 2 फील्डर थे, 1 रन वहां पर मिलेगा, दूसरा रन भागने के लिए कोशिश वहां पर, दूसरा रन वहां पर मिलेगा। 1 रन वहां पर दौड़ चुके थे लेकिन 901 रन के निशान पर जो खिलाड़ी थे वहां पर फिर से दूसरे रन भागने के लिए जल्दबाजी पर दूसरे रन वहां पर खत्म कर चुका है। इन 2 रन के साथ धीरे धीरे से रन यहां पर आगे बढ़ते हुए 6 रन बन चुका है 5 गेंद समाप्त करने के बाद। आखिरी गेंद जावेद गेंदबाजी पर, हर्षित स्ट्राइक रन के निशान पर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार जावेद। आखिरी बार इस बार गेंदबाज, इस बार गेंद ऑन साइड के निशान पर गए, एक टिप्पा करने के बाद जो फील्डर थे वहां पर फील्डिंग किया, यहाँ पर मौका था बल्लेबाज का 2 रन प्राप्त करने का, 2 रन यहाँ पर प्राप्त कर चुका है। गेंद टिप्पा करने के बाद जो फील्डर थे वाइडिश लॉन्ग ऑन के निशान पर जो दौड़कर गेंद को पीछे वहां पर भाग चुकी थी लेकिन गेंद उनकी सर के ऊपर चले गए थे लेकिन बैकअप फील्डर ने गेंद को वहां पर कलेक्ट करने के बाद थ्रो किया था 9 रन के निशान पर। इसके पहले वहां पर 2 रन दौड़कर प्राप्त कर चुका है। इन 2 रन के साथ यहाँ पर रन जंप होते हुए 8 रन यहाँ पर बन चुका है पहला ओवर समाप्त करने के बाद। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट ओवर स्कोर कार्ड इज मूविंग ऑन 8 ऑन द बोर्ड, बिना कोई विकेट के नुकसान पर 8 रन यहाँ पर बनते हुए पहला ओवर समाप्त करने के बाद। अब 30 गेंद बाकी है, पावर प्ले का 1 ओवर बाकी है और देखना पड़ेगा कि इस 1 ओवर पर क्या बल्लेबाज स्ट्राइक रन और नॉन स्ट्राइक रन के निशान पर खिलाड़ी है अक्षय और हर्षित फायदा उठा पाएगा या नहीं देखना पड़ेगा। और गेंदबाजी पर 8 नंबर जर्सी पहनते हुए गेंदबाजी करने के लिए तैयार यहाँ पर राशिद इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। राइट आर्म रॉन द विकेट इस वक्त गेंदबाज करने के लिए तैयार।
फील्डिंग में सजावट यहाँ पर करते हुए परिवर्तन वहाँ पर मिलेगा, क्योंकि हमने फरमाया था माइक्रोफोन पर राइट एंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन है, बाएं हाथ और दाहिना हाथ की खिलाड़ी वहाँ पर खेला गया, तो शायद फील्डिंग में वहाँ पर परिवर्तन करना ही पड़ेगा, क्योंकि दाहिना हाथ खिलाड़ियों के लिए थोड़ी सी वहाँ पर फील्डिंग में चेंजेस करते हैं, वहाँ पर बाएं हाथ के खिलाड़ियों के लिए भी वहाँ पर फील्डिंग में चेंजेस करना ही पड़ेगा। अब गेंदबाजी पर नए गेंदबाज रशीद दूसरी ओर फेंकने के लिए तैयार, सही रन के निशान पर अक्षय बल्लेबाजी करने के लिए तैयार यहाँ पर होते हुए इस बार गेंद को उछाला, गेंद ऑफसाइड के निशान पर गिरते हुए गेंद के बीच वहाँ पर फील्डर भागते हुए गेंद को कलेक्ट किया और फील्ड किया था। 2 रन बल्लेबाज दौड़कर प्राप्त कर चुका है। 2 रन वहाँ पर बनने के बाद रन संख्या यहाँ पर जंप होते हुए 10 रन 10 on the board after completion of the first ball। पहला गेंद यहाँ पर ऑफ साइड के निशान पर गेंद जाते हुए वहाँ पर तेजी से गेंद को उछाल दिया था, लेकिन मिड ऑफ द बैट कनेक्ट नहीं। इसी के पहले गेंद वहाँ पर क्षेत्ररक्षक ने दौड़कर गेंद को कलेक्ट करने के बाद 2 रन वहाँ पर मिलेगा जरूर। दूसरी बार गेंदबाजी पर इस बार गेंद को ऑफ साइड के निशान पर खेलना चाहा, लेकिन चुके, और इसी के साथ डॉटेड गेंद बिंदी गेंद यहाँ पर साबित होते हुए एब्सोल्युटली फैंटास्टिक बॉलिंग वहाँ पर गेंदबाजी रशीद परिवर्तन के वहाँ पर परिवर्तन के दौर पर थोड़ी सी स्लोअर वन गेंद वहाँ पर रख चुके थे और बल्लेबाज कोई रन नहीं मिलेगा। तीसरी बार इस बार गेंद को उछाला के वहाँ पर फील्डर मौजूद, प्रोटेक्शन इज देयर, फील्डर वहाँ पर खड़े हुए थे, वहाँ पर एक टप्पा करने के बाद कलेक्ट किया और बल्लेबाज 1 रन वहाँ पर दौड़कर प्राप्त कर चुका है। इस 1 रन के साथ यहाँ पर रन संख्या आगे बढ़ते हुए 11 ऑन द बोर्ड। अब 3 गेंद बाकी है दूसरी ओवर की समाप्त होने के लिए, 3 गेंद केवल बाकी पावर प्ले की। वहां पर इस बात को मद्देनजर रखते हुए बल्लेबाजी इस वक्त हर्षित बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। चौथी गेंद इस बार रिवर्सिप खेलना चाहा और चूंकि बल्ले वहां पर गेंद शायद पैरों पर नहीं, वहां पर अंतिम क्षण पर बल्ले पर लगने के बाद 1 रन वहां पर मिलेगा जरूर। इस 1 रन के साथ रन यहाँ पर आगे बढ़ते हुए 12 ऑन द बोर्ड। अब 2 गेंद शेष, 5वीं बार राशिद गेंदबाजी पर कोई वहाँ पर बाउंड्री का मौका नहीं मिल रहा है बल्लेबाजी के लिए। वहाँ पर अच्छी तरफ से गेंदबाजी यहाँ पर लाइन और लेंथ के साथ इस वक्त गेंदबाज करते हुए रशीद। 5वीं बार रशीद गेंदबाज करने के लिए तैयार, लेफ्ट आर्म और द विकेट। इस बार गेंद को चला, वहां पर गेंद एक और टिप्पा करने के बाद 4 रन वहां पर मिलेगा। गेंद ऐसा लग रहा था कि पैरों की करीब गेंद को वहां पर गेंदबाज किया था गेंदबाजी ने, लेकिन मिड ऑफ द बैट कनेक्ट करने के बाद गेंद को उछाल दिया था, ड्राइव किया था ऑन साइड के निशान पर बाउंड्री के लिए। इस चौके के साथ थोड़ी सी आसान का साहस कप्तान को मिलेगा, क्योंकि इस बाउंड्री के साथ रन संख्या यहाँ पर जंप होते हुए 15 समाप्त 16 ऑन द बोर्ड यहाँ पर जंप होते हुए स्कोर कार्ड पर। अब आखिरी बार देखना पड़ेगा कि पावर प्ले की आखिरी 1 गेंद से केवल 2 फील्डर आउटसाइड द सर्कल। अक्षय बल्लेबाजी करने के लिए तैयार, गेंदबाजी पर राशिद गेंदबाजी करने के लिए आखिरी बार इस वक्त लास्ट टाइम राशिद। इस बार गेंद को वहां पर फिर से लॉफ करना चाहा, लेकिन गेंद वहां पर तेजी से कनेक्ट नहीं हुए थे। 1 रन वहां पर बल्लेबाजी टीम को मिलेगा। इस 1 रन के साथ रन संख्या यहाँ पर जंप होते हुए 17 यहाँ पर 2 ओवर समाप्त करने के बाद बिना कोई विकेट के नुकसान पर 17 रन यहाँ पर बन चुके हैं बल्लेबाजी टीम ने। वेल डन कल्लगट्टे। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सेकंड ओवर स्कोर कार्ड इज मूविंग ऑन 17 ऑन द बोर्ड। दो ओवर समाप्त करने के बाद 17 रन यहाँ पर बन चुके हैं बिना कोई विकेट के नुकसान पर। अब गेंद बाकी है 24 बॉल्स इज लेफ्ट। अब 24 गेंद पर 29 रन चाहिए। अब 24 गेंद पर 29 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। 24 बॉल्स 29 रन नीड टू विन दिस मैच। अब गेंदबाजी पर नए गेंदबाज को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हुए तमीम गेंदबाजी पर नए गेंदबाज इस वक्त
गेंदबाज करने के लिए तैयार। स्ट्राइक रन के निशान पर अक्षय इनकी बल्ले पर एक चौके के साथ इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। अक्षय अब 30 गज दायरे की बाहर 5 शायद फील्डर आउटसाइड द सर्कल पर वहां पर रक्षण करने के लिए तैयार। फील्डिंग में वहां पर जमावट करने के बाद परिवर्तन यहां पर करते हुए, क्योंकि बाएं हाथ की खिलाड़ी इस वक्त बल्लेबाज करते हैं, इस बात को यहां पर मद्देनजर रखते हुए कप्तान ने कुछ परिवर्तन के साथ इस वक्त फील्डिंग में यहाँ पर जमावट करने के बाद गेंदबाजी पर 04 जर्सी नंबर पहनते हुए तमीम गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए। स्ट्राइक रन के निशान पर अक्षय, तमीम पहला गेंद। इस बार गेंद ऑफसाइड के काफी दूर और अंपायर का इशारा वाइड करार देते हुए एक्स्ट्रा के साथ यहाँ पर 1 रन मिलेगा जरूर। इस 1 रन के साथ रन संख्या यहाँ पर जंप होते हुए 18 ऑन द बोर्ड, 18 रन यहाँ पर बनते हुए तमीम फिर से गेंदबाजी पर इनकी पहला गेंद वाइड करने के बाद फिर से वहां पर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। तमीम इस बार ऑन साइड के निशान पर गेंद को अकेला वहां पर फील्डर मौजूद, 1 रन वहां पर मिलेगा। दूसरे रन भागने के लिए कोशिश, वहां पर दूसरी रन नहीं मिलेगा। 1 ही रन वहां पर संतुष्ट होते हुए इस 1 रन के साथ गेंद को वहां पर ऑन साइड के निशान पर खेल चुकी थी, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद है। गेंद को कलेक्ट करने के बाद वहां पर थ्रो किया था 9 सेकंड के निशान पर, 1 रन वहां पर मिलेगा। इस 1 रन के साथ रन संख्या यहाँ पर जंप होते हुए 19 ऑन द बोर्ड। अब स्ट्राइक रन के निशान पर हर्षित बल्लेबाजी पर, गेंदबाजी पर फिर से तमीम गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दूसरी गेंद, दूसरी बार इस बार गेंद को वहां पर रिवर्सिप किया डिक्लेयर एरिया के निशान पर शायद नहीं, वहां पर बल्ले के बेहतरीन किनारा गेंद लगने के बाद दौड़कर 1 रन प्राप्त कर चुका है। इस 1 रन के साथ वहां पर रन संख्या जंप होते हुए 20 रन यहां पर बनते हुए 20 ऑन द बोर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सेकंड बॉल। 2 गेंद समाप्त करने के बाद 20 रन यहाँ पर बनते हुए अब रन संख्या चाहिए 26 बचे हुए गेंद पर। इस बार तीसरी बार इस बार गेंद को उछाला, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद है। 1 रन वहां पर मिलेगा। दूसरे रन भागने के लिए कोशिश, वहां पर दूसरी रन संपूर्ण यहाँ पर होते हुए ಅಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ सहकरिसಬೇಕಾಗಿ विनंती। अब 2 रन यहाँ पर दौड़कर प्राप्त करने के बाद इस वक्त बल्लेबाज किया था अक्षय ने। गेंद को ऑन साइड के निशान पर खेलने के बाद 2 रन वहां पर समाप्त। अक्षय ने सही, वहां पर अक्षय ने गेंद वहां पर ऑन साइड के निशान पर खेलने के बाद 2 रन यहाँ पर प्राप्त कर चुका है। इन 2 रन के साथ रन संख्या यहाँ पर बनते हुए 22 ऑन द बोर्ड। फिर से गेंदबाजी पर तमीम गेंदबाज करने के लिए तैयार। चौथी बार इस बार गेंद को वहां पर ऑफ साइड के निशान पर उछालना चाहा, लेकिन चूंकि गेंद थोड़ी सी स्लो रन करने के बाद विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया और इसी के साथ बिंदी गेंद यहाँ पर साबित होते हुए इन 4 गेंद समाप्त करने के बाद रन संख्या पर होते हुए 22 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 4 बॉल स्कोर कार्ड इज मूविंग ऑन 22 ऑन द बोर्ड। बिना कोई विकेट के नुकसान पर बल्लेबाजी इस वक्त करते हुए अक्षय और हर्षित ने 5वीं बार इस बार फुल टच गेंद को वहां पर मौका करने के लिए कोशिश किया था। गेंद हवा में और गेंद के नीचे फील्डर विकेट कीपर ने गेंद को वहां पर नजर डालते हुए कैच करने के लिए कोशिश किया था, लेकिन कुछ फील्डर ने वहां पर डैश करने के बाद गेंद इनके हाथों पर जाने के बाद फिसल चुके थे और इसी के साथ इस मौके के यहाँ पर उठाते हुए बल्लेबाज दौड़कर 1 रन प्राप्त कर चुके थे। ऐसा लग रहा था कि एक कैच आउट हो सकता है, लेकिन अंतिम ओवर पर कुछ फील्डर ने वहां पर मिस कम्युनिकेशन करने के बाद, मिसअंडरस्टैंडिंग वहां पर होने के बाद गेंद टिप्पा का इनके हाथों पर टिप्पा का चुकी थी जरूर, लेकिन गेंद फिर से वहां पर नीचे गिरने के बाद वहां पर क्या चोट नहीं हो चुकी है और इसी के साथ 1 रन वहां पर संपूर्ण कर चुका है। इस 1 रन के साथ रन संख्या यहाँ पर आगे बढ़ते हुए 23। फिर से वहां पर गेंदबाजी पर इस बार गेंद को फिर से वहां पर रिवर्सिप खेला और शायद रिवर्सिप खेल गया तो वहां पर नीचे कोई बाउंड्री नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर डिक्लेयर के निशान पर रन मिल पाएगा, लेकिन गेंद को वहां पर फील्डर ने कलेक्ट करने के बाद क्षेत्ररक्षण किया था जरूर। इस 1 रन वहां पर संपूर्ण कर चुका है। इस 1 रन के साथ रन संख्या यहाँ पर जंप होते हुए 24 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 3 ओवर स्कोर कार्ड इज मूविंग ऑन 24 ऑन द बोर्ड। 3 ओवर समाप्त करने के बाद 24 रन यहाँ पर बनते हुए ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಡ್ಯಾರ್ YFC ನಂತೂರ್ 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು
ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಡ್ಡಿಯಾರ್ ಹಾಗೂ YF ಸಿನಂತೂರು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. अब 3 ओवर समाप्त करने के बाद 24 रन यहाँ पर बनते हैं बिना कोई विकेट के नुकसान पर. अब रन चाहिए 22, बचे हुए 18 गेंद पर. 18 बॉल इज रिमाइनिंग. 22 नीड टू विन दिस मैच. कम से कम 7.33 पर इस वक्त रिक्वायर्ड रन रेट यहाँ पर चलते हुए 7.33 इस वक्त रिक्वायर्ड रन रेट चाहिए बल्लेबाजी टीम के लिए जीतने के लिए. बचे हुए 18 गेंद पर 22 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए. और देखना पड़ेगा कि किस गेंदबाज इस साझेदारी को वहाँ पर तोड़ पाएगा, देखना पड़ेगा. वहाँ पर कप्तान ने कुछ हद तक गेंदबाजी पर बातचीत करने के बाद वहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए तैयार. गेंदबाजी पर जावेद फिर से वहाँ पर गेंदबाज करना पड़ेगा. पहला ओवर इन्होंने गेंदबाज किया था, केवल 8 रन वहाँ पर दे चुकी थी. पहला 4 प्ले ओवर पर इन्होंने गेंदबाज किया था. 4 प्ले ओवर पर गेंदबाज करना एक आसान का बात नहीं है, क्योंकि केवल आउटसाइड द सर्कल 2 फील्डर वहाँ पर खड़े होते हैं. इस बात को वहाँ पर मद्देनजर रखते हुए अच्छी तरफ से लाइन और लेंथ के साथ इस वक्त गेंदबाज करने के बाद फिर से वहाँ पर दूसरी ओवर फेंकने के लिए तैयार यहाँ पर होते हुए इन टीम के कप्तान माना जाता है. इनकी वहाँ पर पूरा का पूरा जिम्मेदारी के साथ इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार. और सहीकरण के निशान पर बल्लेबाजी करने के लिए हर्षित इस वक्त बल्लेबाजी करने के लिए तैयार. 5वीं ओवर पहला गेंद जावेद गेंदबाजी पर लेफ्ट आर्म और द विकेट इस वक्त गेंदबाज करते हुए इस बार गेंद को वहाँ पर रिवर्सिप खेल चुके थे. 1 रन वहाँ पर मिलेगा जरूर. सेंसिबल क्रिकेट माना जाता है. और क्योंकि वहाँ पर केवल 7.33 रन की वहाँ पर रिक्वायर्ड रन रहे. इन बात को वहाँ पर मद्देनजर रखते हुए सेंसिबल क्रिकेट कहीं वहाँ पर मौके मिला तो बाउंड्री को वहाँ पर खेल सकते हैं. इस वहाँ पर कुछ हद तक कम्युनिकेशन के साथ इस वक्त स्ट्राइकर हर्षित और अक्षय इस वक्त बल्लेबाजी करते हैं. इस बार गेंद बराबर टकराए और इसी के साथ लेग बाइस बिफोर विकेट वहां पर मिलता है. पहला विकेट यहाँ पर गिर चुका है. स्ट्राइट डाउन वहां पर सीधे गेंद जाते हुए पैरों पर टकरा चुकी थी अक्षय की. और इसी के साथ अंपायर का उंगली वहां पर उठ चुका है. पहला विकेट यहाँ पर गिर चुका है 25 रन पर. 25 फॉर 1 विकेट. इस वक्त 25 रन पर 1 विकेट यहाँ पर जाने के बाद अच्छी तरह से वहां पर साझेदारी किया था इन दोनों बल्लेबाज अक्षय और हर्षित ने. इन दोनों मिलकर वहां पर 25 रन वहां पर पूरा कर चुका है. हॉल 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 कुछ हद तक वहां पर बातचीत करने के बाद वहां पर सफलता यहाँ पर पा चुके हैं जावेद ने. दूसरी गेंद पर अक्षय यहाँ पर बल्लेबाज इनकी जगह बनने के लिए नए बल्लेबाज अली 12 ಆಟಗಾರ ನ್ಯೂ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಲ್ಲಗಟ್ಟೆ ತಂಡದ 12 ಆಟಗಾರ कमेंट्री बॉक्स संपर्किसಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದೇನೆ. और दूसरी गेंद पर सफलता पाने के बाद इस वक्त कुछ हद तक वहां पर आसान का साहस कप्तान को मिलेगा, क्योंकि उन दोनों बल्लेबाज अच्छी तरफ से तालमेल के साथ बल्लेबाज किया कर चुके थे. इन दोनों बल्लेबाज 50 रन की वहां पर साझेदारी किया था. और इस बार गेंद फिर से वहां पर डॉटेड गेंद बिंदी गेंद अच्छी तरफ से कम बैक जिस तरफ की वहां पर कम बैक करनी चाहिए था इस तरह की वहां पर कम बैक होते हुए गेंदबाजी पर जावेद. और इसी के साथ बिंदी गेंद होने के बाद 3 गेंद वहां पर फेंक चुके थे. केवल एक ही मात्र रन वहां पर दे चुका है जावेद ने. एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, नो डाउट अबाउट इट. और इस बार गेंद को वहां पर पैरों पर टकराए. फिर से जोरदार अपील किया था, लेकिन अंपायर का कोई लेग बाइस के इशारे देते हुए और गेंद ऐसा लग रहा था कि अंतिम ओवर पर गेंद टर्न होने के बाद लेग स्टंप को छोड़कर जा चुके थे और अंपायर का वहां पर लेग बाइस का केवल इशारा देते हुए. और इसी के साथ 4 गेंद वहां पर फेंक चुके हैं जावेद ने. केवल 2 मात्र रन वहां पर मिलेगा बल्लेबाजी टीम के लिए. बल्लेबाजी पर हर्षित फिर से बल्लेबाजी करने के लिए तैयार. 5वीं गेंद को वहां पर सामने करने के लिए तैयार होते हुए जावेद गेंदबाजी पर लेफ्ट आर्म और द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार. इस बार गेंद को वहां पर उछाला, लेकिन वहां पर गेंद टॉप जाने के बाद विकेट कीपर की दस्तानों पर गई और विकेट कीपर ने जल्दबाजी थे और इसी के साथ कैच आउट वहां पर ले चुके थे. इन विकेट जाने के बाद दोनों ओपनर
इस वक्त पहले पर लौटते हुए 2 ओपनर्स आर बैक इनटू द पेविलियन। 2 वहां पर ओपनर्स थे, बल्लेबाज वहां पर साझेदारी किया था 25 रन की। इन साझेदारी तोड़ने के बाद बैक टू बैक जल्दी से वहां पर दोनों का वहां पर विकेट गिर चुका है, अक्षय और हर्षित के। अब देखना पड़ेगा कि इनकी जगह बनने के लिए नए बल्लेबाज है, 1 मोर एक्स्ट्रा टैलेंटेड प्लेयर ऑलराउंडर इस वक्त बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। रंजीत इस वक्त इनकी जगह बनने के लिए यहाँ पर तैयार। अब रन से केवल चाहिए था, इस ओवर के पहले 18 गेंद पर 22 रन चाहिए था, लेकिन इन 4-5 गेंद समाप्त करने के बाद अब रन चाहिए 21। 21 रिक्वायर्ड रिमाइनिंग। बीस रन चाहिए बचे हुए 13 गेंद पर। 13 ಬಾಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್, 20 ನೀಡ್ ಟು ವಿನ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್। ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಚಾಲೆಂಜರ್ ಅಡ್ಯಾರ್ YFC ನಂತೂರು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। और फिर से वहां पर शॉर्ट ब्रेक करने के बाद फिर से वहां पर मैच पर लौटते हुए अब रन चाहिए 20 बचे हुए 13 गेंद पर। 13 बॉल रिमाइनिंग, 20 रन, 20 नीड टू विन दिस मैच। इस बार गेंद को चल रहा ऑन साइड की निशान पर, लॉन्ग ऑन की निशान पर जो फील्डर थे दौड़कर गेंद को कैच आउट करने के लिए दौड़ चुकी थी, लेकिन थोड़ी सी वहां पर फिसलने के बाद गेंद उनको छोड़ते हुए वहां पर बैकअप फील्डर ने गेंद को कलेक्ट किया और इसी के साथ 2 रन प्राप्त करने के लिए मौका वहां पर मिल चुके थे बल्लेबाजी टीम के लिए। वहां पर इस मौके का वहां पर फायदा उठाते हुए 2 रन बच चुके हैं। इन 2 रन के साथ अब रन केवल चाहिए 18 बचे हुए 12 गेंद पर। 12 बॉल रिमाइनिंग, 18 नीड टू विन दिस मैच। शायद इन दोनों बल्लेबाज जो अक्षय और हर्षित वहां पर खेल चुके थे, इस खेल को वहां पर देखा जाए तो इन दोनों बल्लेबाजी को, पुनीत और रंजीत को इस तरफ की वहां पर बल्लेबाजी करनी चाहिए। शायद मौका मिला तो कभी बाउंड्री वहां पर लगाए तो शायद इस मैच को वहां पर आसानी के साथ जीत जाएगा, लेकिन इन गेंदबाजी ने, जावेद ने इस तरह की वहां पर कमबैक किया था। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, नो डाउट एट ऑल। और इसी के साथ जावेद 2 विकेट के साथ बैक टू बैक 2 विकेट यहाँ पर लेने के बाद अपने टीम के वहां पर कमबैक कर चुका है जरूर। अब 12 गेंद बचे हुए 18 रन चाहिए। 12 बॉल रिमाइनिंग, 18 नीड टू विन दिस मैच। देखना पड़ेगा कि किस गेंदबाजी को वहां पर चुनाएगा गेंदबाजी करने के लिए। नए गेंदबाज इस वक्त मुजम्मिल इस वक्त गेंदबाज करने के लिए तैयार। बल्लेबाजी पर पुनीत इस वक्त स्ट्राइक रन के निशान पर बल्लेबाजी करने के लिए, नॉन स्ट्राइक रन के निशान पर ऑलराउंडर खिलाड़ी रंजीत और गेंदबाजी पर नए गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज करने के लिए तैयार। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। 08 8 नंबर जर्सी पहनते हुए ओके वहां पर फिर से गेंदबाजी पर तब्दील करने के बाद रशीद को वहां पर बैक एंट्री दे अटैक वहां पर खेलने के लिए। इस बार गेंद को वहां पर टिप वहां पर लग चुकी थी जरूर। विकेट कीपर वहां पर गेंद को कैच आउट करने के लिए थोड़ी सी आगे आते हुए गेंद को वहां पर कैच आउट नहीं कर सकते थे और इसी के साथ कैच को वहां पर मिस किया। वहां पर इस फायदे को उठाते हुए मौका वहां पर मिल चुका है बल्लेबाजी के लिए और इसी के साथ 1 रन दौड़कर प्राप्त कर चुका है। गेंद इनको वहां पर छोड़ने के विकेट कीपर के छोड़ते हुए बैकवर्ड वहां पर गेंद विकेट कीपर की पीछे वहां पर जा चुकी थी। 1 रन बल्लेबाजी टीम के लिए। इस बार गेंद को ऑन साइड के निशान पर खेला जरूर। 1 रन वहां पर मिलेगा। दूसरे रन भागने के लिए कोशिश, दूसरी रन वहां पर मिल चुका है।
एब्सोल्युटली फैंटास्टिक रनिंग बिटवीन द विकेट्स। इन दोनों खिलाड़ियों के साथ कुछ हद तक वहां पर तालमेल रखने के बाद 2 रन वहां पर दौड़कर प्राप्त कर चुका है। गेंद ऑन साइड के निशान पर खेल चुके थे और कुछ फील्डर ने थोड़ी सी वहां पर मिस फील्डिंग करने के बाद इस मिस फील्डिंग को वहां पर फायदा उठाते हुए बल्लेबाज 2 रन वहां पर ले चुका है जरूर। रशीद फिर से गेंदबाजी पर तीसरी बार 08 जर्सी नंबर 35 इस बार गेंद को ऑन साइड के निशान पर खेलना चाहा लेकिन चूंकि बल्लेबाजी और इसी के साथ विकेट कीपर के दस्तानों पर गई गेंद, विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया और डॉट गेंद वहां पर साबित होते हुए तीसरी गेंद डॉट गेंद बिंदी गेंद के साथ इस वक्त गेंदबाजी पर रशीद फिर से गेंदबाजी करते हुए चौथी गेंदबाजी पर राशिद इस बार गेंद को उछालने की जल्दबाज लेकिन वहां पर 30 दायरे के अंदर जो फील्डर थे गेंद को कलेक्ट किया और इसी के साथ स्ट्राइक तो वहां पर गेंदबाजी की हाथों पर दे चुकी थी और गेंदबाज ने विद इन द फ्रैक्चर्स ऑफ सेकंड्स वहां पर गेंद को विकेट की स्टंप्स के वहां पर लगाने के बाद रनआउट के वहां पर खतरा हो चुका है। इस रनआउट के बाद रंजीत की बारी वहां पर खत्म होते हुए जो कप्तान का उम्मीद थे रंजीत के ऊपर इस उम्मीद को वहां पर तोड़ते हुए नजर आ रहा है। रंजीत की यहां पर खत्म होने के बाद बारी खत्म होने के बाद इनकी जगह बनने के लिए नए बल्लेबाज फिर से वहां पर 33 जर्सी नंबर पहनते हुए नए खिलाड़ी 12th man अगर 33 नंबर इरफान इस वक्त बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। रनआउट यहाँ पर होते हुए इनकी जगह बनने के लिए नए बल्लेबाज रंजीत रनआउट होने के बाद इरफान इस वक्त बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। अब उछाल कर बल्लेबाजी करनी चाहिए। अब गेंदबाज को गेंद को ऑन साइड निशान पर खेलना चाहा चुके और इसी के साथ डॉटेड गेंद बिंदे वहां पर फिर से वहां पर होते हुए अब दबाव बल्लेबाज के ऊपर बढ़ते हुए जो रन अब चाहिए केवल बचे हुए 7 गेंद पर 15 रन चाहिए। 7 गेंद पर बचे हुए 7 बॉल इज रिमेनिंग 15 नीड टू विन दिस मैच। 7 गेंद बाकी है 15 रन और चाहिए। रशीद गेंदबाजी पर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक गेंदबाज यहां पर दिखाई दे रहा है। केवल 3 मात्र रन वहां पर दे चुकी थी। इस बार गेंद का वहां पर उछालना चाहा अलॉन्ग द कारपेट जैसे अंग्रेजी में कहते हैं बिल्कुल जमीन के सर गेंद को रख चुके थे और इसी के साथ बोल्ड होते हुए बल्लेबाज की बारी यहां पर खत्म हो चुका है। बल्लेबाज पुनीत की यहाँ पर बारी खत्म हो चुका है और इसी के साथ अब बचे हुए 6 गेंद पर रन चाहिए 15। 6 बॉल इज रिमेनिंग 15 नीड टू विन दिस मैच। देखना पड़ेगा कि किस बल्लेबाज छक्के और चौके के साथ मैच को जीत पाएगा या नहीं। देखना पड़ेगा नी बॉयज का लड़का का साथ देने के लिए और नए बल्लेबाज इस वक्त 10 नंबर जर्सी पहनते हुए बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। नॉन शेखरन के निशान पर जाते हुए और शेखरन के निशान पर ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಡ್ಡಿಯರ್ ಹಾಗೂ ವೈಎಫ್ಸಿ ನಂತೂರು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದೇನೆ। ವೈಎಫ್ಸಿ ನಂತೂರು ಹಾಗೂ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಡ್ಡಿಯರ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದೇವೆ। अब बचा हुए 6 गेंद 15 रन चाहिए। 6 बॉल रिमेनिंग 15 नीड टू विन दिस मैच। देखना पड़ेगा कि किस गेंदबाज को वहां पर कप्तान चुनाएगा। 6 गेंद वहां पर बाकी है 15 रन चाहिए। बल्लेबाज वहां पर दोनों सावधान बल्लेबाज फ्रेशर बैट्समैन इस वक्त सेकंड और नॉन सेकंड के हिसाब पर खेलते हुए और नए बल्लेबाज नए गेंदबाज वहां पर मुजामिल इस वक्त 19 नंबर जर्सी पहनते हुए गेंदबाज करने के लिए तैयार। देखना पड़ेगा कि बल्लेबाज इरफान क्या गेंद को वहां पर उछाल कर बल्लेबाजी करता है या नहीं। इस बार गेंद को केवल दिशा दिया था ऑफ साइड के निशान पर 1 रन वहां पर मिलेगा। अब 5 गेंद बाकी है 18 रन चाहिए। 5 बॉल इज रिमेनिंग 18 नीड टू विन दिस मैच। देखना पड़ेगा कि समाप्त 14 रन चाहिए। 14 नीड टू विन दिस मैच रिमेनिंग 5 बॉल्स 5 गेंद बाकी है 14 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए और गेंदबाजी पर मुजम्मिल गेंदबाज करते हुए 6 रन के निशान पर
इरफान के लिए इस बार गेंद को वहां पर चला चाह लेकिन पैरों पर टकराए, जोरदार अपील किया था गेंदबाजी ने और अंपायर का इशारा वहां पर आउट करार देते हुए अंपायर का उंगली वहां पर आसमान की तरफ से वहां पर बुलंद होते हुए और इरफान का बारी यहां पर खत्म हो चुका है, समाप्त। नए बल्लेबाज की वहां पर बारी खत्म हो चुके हैं और इसी के साथ रन चाहिए था 14, बचे हुए 5 गेंद पर। इस आउट होने के बाद 4 गेंद पर 14 रन चाहिए कम से कम। छक्के और चौके को वहां पर जरूर चाहिए बल्लेबाजी टीम के लिए जीतने के लिए और इसी के साथ अच्छी तरफ से वहां पर गेंदबाज किया था और एलबीडब्ल्यू के साथ विकेट वहां पर सफलता के साथ इस वक्त गेंदबाज करते हुए मुजम्मिल। अब मुजम्मिल हैट्रिक विकेट वहां पर ले गया था, 500 का इनाम यहां पर रखते हुए इनकी टीम की खिलाड़ियों। अब गेंदबाजी पर मुजम्मिल, नए बल्लेबाज मनीष के लिए 4 गेंद बाकी, 14 रन चाहिए इस बार। गेंद को चला, गेंद के नीचे फील्डर वहां पर कैच आउट होता है, नहीं देखना पड़ेगा और इसी के साथ कैच आउट। गेंद को वहां पर उछालना चाहा ऑन साइड के निशान पर, गेंद वहां पर मिड ऑफ द बैट कनेक्ट नहीं और गेंद वहां पर हवा के थोड़ी से साथ लेने के बाद फील्डर की वहां पर हाथों पर गए। अब हैट्रिक विकेट ले गए तो शायद मुजामिल को वहां पर 500 का इनाम यहां पर रखते हुए देखना पड़ेगा कि इस गेंद पर शायद विकेट वहां पर ले गया तो 500 का इनाम आज मिलेगा। एक छोटी कड़ के खिलाड़ी यंग ऑलराउंडर बॉलर इस वक्त गेंदबाज करते हुए 19 नंबर जर्सी पहनते हुए मुजामिल और इसी के साथ 2 बैक टू बैक विकेट यहाँ पर ले चुका है और इस 2 बैक टू बैक विकेट लेने के बाद अब रन चाहिए केवल 3 गेंद बाकी है, केवल 14 रन चाहिए जीतने के लिए। क्या इस गेंद पर छक्का मारेगा या नहीं देखना पड़ेगा और विकेट ले पाएगा या नहीं देखना पड़ेगा। इस बार गेंद को वहां पर ऑफसाइड के निशान पर खेला जरूर लेकिन वहां पर विकेट नहीं मिलेगा, छक्का वहां पर नहीं मिलेगा। इस 1 रन वहां पर मिलेगा सर। इस 1 रन के साथ अब आखिरी एक मौका बल्लेबाजी पर बल्लेबाज करते हुए इरफान, 2 गेंद बाकी है, 13 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। क्या इरफान इस 2 गेंद पर 2 छक्का मारेगा या नहीं? इस बार गेंद को पर फ्रंट फुट आकर गेंद को कनेक्ट किया और इसी के साथ थोड़ी सी मिस फील्डिंग। जो लॉन्ग ऑन की निशा पर फील्डर थे, लॉन्ग ऑफ की निशा पर गेंद जा चुकी थी, लॉन्ग ऑन की निशा पर जो फील्डर थे आगे होकर थोड़ी सी दौड़ कर गेंद को वहां पर कलेक्ट करने के लिए कोशिश किया था लेकिन इनके शरीर पर लगने के बाद लॉन्ग ऑन की निशा पर गेंद जाते हुए बाउंड्री के लिए। इस चौके के साथ अब रन चाहिए, केवल 1 गेंद बाकी है, रन चाहिए 9 रन, 9 is required, remaining 1 ball। शायद इस गेंद पर 9 बॉल या वाइड फेंका है तो मैच पर कम बैक हो सकता है क्योंकि छक्के और चौके जरूर चाहिए और इस बार गेंद को वहां पर बैक टू द बॉलर के निशान पर गेंद जाते हुए वहां पर कोई रन नहीं मिलेगा और इसी के साथ मैच, पहला मैच इस टूर्नामेंट का फ्रेंड्स शांतिनगर प्रस्तुत करते हुए नेत्रवती ट्रॉफी 2022 का पहला मैच यहाँ पर टीम वेल्डन कल्लकट्टे वहां पर जीत चुका है। इसी के साथ इनॉग्रेशन मैच वहां पर जीतने के बाद अपने अगले हंत को यहाँ पर प्रवेश कर चुका है। ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಡ್ಡಿಯರ್ ಹಾಗೂ ವೈಎಫ್ಸಿ ನಂತೂರು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ನೋಂದಾಯಿಸಿ 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರು नाने चुमिका की वेदिके संपर्कित विनिस्तिದ್ದೇನೆ और धन्यवाद। इस वक्त इस मैच को यहाँ पर कंग्रेचुलेशन कहते हुए टीम कल्लकट्टा के लिए और ऑल द बेस्ट टीम नी बॉयज फॉर द योर फ्यूचर मैच। अब माइक्रोफोन पर मैं आमंत्रण करना चाहता हूँ मेरे गुरु सतीश सर को यहाँ पर आमंत्रण करना चाहता हूँ और माइक्रोफोन पर आमंत्रण करना चाहता हूँ मजीद सर को। आइए सर। और इस मैच का मैन ऑफ द मैच पुरस्कार दिया जाएगा ಹನೀಫ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ। इस मैच का यहाँ पर मैन ऑफ द मैच पुरस्कार हनीफ वहाँ पर चुना गया है और इस ट्रॉफी को देने के लिए, पुरस्कार को देने के लिए मंसूर सर को यहाँ पर आमंत्रण करना चाहता हूँ।
धन्यवाद कबीर कुदरों के लिए। और नेत्रावती फ्रेंड्स शांतिनगर की इस टूर्नामेंट की शुरुआती पर पहला मक्का मक्का वयर चोट दूर बिड़ी भाई वयर चोट मक्का चोट हेलो हेलो माइक चेक चेक हेलो हेलो माइक चेक। और जैसे कि चुनौती दूसरी मैच की पहला मैच की चुनौती हो चुकी है, यह दूसरी की शुरुआती अभी होने वाला इस मैदान पर या नंतुर चौकी से यह फ्रेंड्स शांतिनगर नेत्रावती ट्रॉफी 222 की सब शांतिनगर के ऑर्गेनाइजेशन को मैं शुभकामना दे रहा हूं और क्रिसमस की तरफ से 222 से आने वाला नया साल की तरफ से भी शुभकामना दे चुकी है। और अड्डियर का खिलाड़ी जहां भी वो इस वक्त ದಯವಿಟ್ಟು ಅನ್ಸಾಫ್ ರವರು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಡ್ಡಿಯರ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಆಯಾ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೂಡ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ರವರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನ್ಸಾಫ್ ರವರು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತನ್ನ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನ ನೀಡಿ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೀಗ ತಾನೇ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯ. हालात में हिंदी कमेंटेटर पर फिलहाल फिर से एक बार फिर आप ये शुभकामना दे रहा हूँ नया साल की ओर आने वाला और इस क्रिसमस को भी लगता है चुनौती का पहला मैच कल्लाकट्टा की तरफ से या शांतिनगर का बॉयज खिलाड़ी या इस वक्त हार चुकी है, पहला चुनौती भी कर चुकी है इस मैदान पर और कल्लाकट्टा के लिए शुभकामना दे सकी है या नया साल को और इस क्रिसमस तरफ से। और जैसे कि दूसरी मैच या इस वक्त शुरू होने वाले इस मैदान पर ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂಗ್ರೇಜಿ ಕಮೆಂಟೇಟರ್ ಸತೀಶ್ ರವರು ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೂಡ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
Welcome back once again. YFC Nantur takes on Challenge Adyar and YFC Bajal led preparation. So welcome back and what a fantastic first match. Well done Kalakate. Managed to win the match against New Boys Faisal Nagar. ಅಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು, ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ. ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಡ್ಯಾರ್ ಹಾಗೂ YFC ಬಜಾಲ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಅದೆಂದು ನಿನ್ನ ಸೀರ್ನಿ ಆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಲೋನ್ಲಿ ನೀನೆಂದು ಗೊಂತು ನಾಯಿ. The captain of Challenge Adyar won the toss and yet to make a decision here. Challenge Adyar. So Challenge Adyar captain won the toss. They elected to field first against YFC Bajal, and better see how YFC Bajal and one of the prestigious team, even Challenge Adyar also the very good team. That means the contest between two very good teams in the first round of this prestigious Nethravathi Trophy 2022, which is proudly organized by friends Shanthinagara in this most beautiful NGC cricket ground. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು 6 ಓವರ್ನ ಪಂದ್ಯಾಟ, 2 ಓವರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಆಗಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಆಟಗಾರರು ಮಾತ್ರ 20 ಗಜದ ಹೊರಗಡೆ ನಿಲ್ಲಲು ಅವಕಾಶ, ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸರ್ಕಲ್. ಅಂಡ್
So welcome back again. Challenge Adyar winning the toss, selected to field first, and they're going towards the field. And warm welcome for Nandan Kulshekar, one more most popular name in social media, as well as one of the biggest supporter of this cricket, supporter of underarm cricket. Challenge cricketers Adyar, they got a very good the players in the side, some experienced campaigner. Ashok is a very good wicket keeper batter. We have Imran, also one more very talented player, got experience of playing for Kadri cricketers, KCCR Kadri. Check. Hello. Hello. So opening batters slowly walking towards the middle, and we are waiting for the umpires to walk towards the middle. The very bright sunny afternoon. The time is exactly 12 o'clock, and we are in the second match, and request each and every team to make it past. They need to complete 7 matches in the day. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಬರಬಾರ್ದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. So Challenge Adyar winning the toss and elected to field first against YFC Bajal. So a lot of wishes which is coming from Gulf countries. Of course, the player of the former player of YFC Bajal, Sakil Bajal, as well as Aris Bajal, wishing all the best for YFC Bajal in this particular Nethravathi Trophy 2022. And at the same time, Challenge Adyar has got. I request everyone, please see that jersey which is compulsory as per the rules and regulation of the cricket is concerned. We are already mentioned that jersey which is very, very important, the uniform. It's a part of cricket discipline. Please note that each and every teams. We are already mentioned in this rules and regulation. In the 7th column, shoes, which and of course try to wear the shoes and wear the uniform, which is compulsory as far the rules and regulation of cricket is concerned. Please cooperate with the organizer and umpire. ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ತಂಡದವರು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. So of course, as for the request from the opposition, and even I request that fielder who are not wear the uniform need to wear your uniform within 1 hour. 1 hour, of course, the excuse which is given to that fielder to wear the his complete jersey, and 1 hour, within 1 hour you need to bring your jersey
So please cooperate with the organizers. So start of the match number 2 here, and everything is set. Two opening batters out there in the middle, and we have Asghar and Naushad, the two opening batsmen. Asghar will go in to take the strike, and bowler Suhail. This time fast ball, lofted, ball is in there, but safely landed down to deep long off region before the fielder from the straight long off region to run across his left to field the ball. Ample time for the batters to complete a couple of runs, and the good start here from Asghar, the positive start. The width is offered there by the bowler outside the line of off stump, and batsman just going after that ball. You know exactly the infield. The one fielder in the offside the circle is a straight long on in fact, and one fielder in the deep mid wicket. The two fielders out there in the deep for Asghar. Suhail again bowling away from us. Right arm over the wicket, passes umpire. Just across the line, swinging that one, defeats the infield ball, running down to deep score like boundary. The fielder from deep mid wicket to run across to his right to field the ball, and before you going to chase that one, fields that one, returns that one. Ample time for the batter to complete that couple of runs. With that couple of runs, scoreboard now moves on to 4 on the board, without loss of any wicket here in over number the first in progress. Position on the Jirgal. The 4 on the board, 4 without loss of any wicket here in over number first in progress. There is a back point, short mid off. The one fielder at score again, short mid wicket and short mid on. Now one fielder, extra fielder which is added to short cover point region. That means altogether 4 fielder in the offside region, 5 on the on, and deep fielder, 1 at the deep long on and deep in wicket. 5 fielders in the onside region. Suhail balls right over the wicket, swinging that one, missing the ball line completely. Look at the electrifying work here from Ashok behind the stump. Absolutely one of the best pair of hands behind the wicket. So experienced campaigner behind the stump, and he just completed the job in a fraction of a second. And but no damage done. The back foot of the batter Asghar is inside the line, so that no question of getting any result in the favor of wicketkeeper. No damage done. Good comeback here by bowler Suhail after he conceded a couple of runs in 2 deliveries, 4 runs which is scored in just 3 deliveries. Power play overs always going to be key for the batting team. They try to get as much as run as possible in that power play overs. Right arm over the wicket, wide of the crease is bowled outside the line of leg stump, going to be a wide. The first extra coming here for team YFC Bajal, and with that extra score now moves on to 5 on the board without loss of any wicket here in over number first in progress. Right arm over the wicket, he bowls. This time going for the big stroke again, not really getting that much of timing behind the stroke. Got an inside edge of the bat. One more addition to total addition of that single scoreboard now moves on to 5 on the board. 6 on the board, correction, now 6 without loss of any wicket in the over number first in progress. So good comeback as far as the bowler's point of view, and quickly Suhail realizing that line and length which is need to be bowled all around the middle end of stump. Protection is given in the deep in the onside region, so that he need to target that line, which is definitely going to be a little bit difficult one. Naushad will go into face this time, beautifully bowled around the legs. He tried to bring that one, wicketkeeper behind the stump. Ashok misses that one completely, but umpire Sheikh Malali is not missing the opportunity to signal the by here with that extra. Then the scoreboard moves on to 7 on the board without loss of any wicket. It's a bright sunny afternoon here in Shanthinagara. This time driven off stop by the fielder, and Ashraf the fieldsman. Then the Riyaz correction, one more very talented experienced campaigner down at in front of square. He fields the ball. The first over completed. After completion of first over, searching for the right track, and the scoreboard of team YFC Bajal is 8 on the board. 8 runs came from the first over of the power play. It's not a bad over, considering the fact that the bowler has got a restriction of just 3 fielders outside the circle, and considering all this fact, I think 8 runs in the first over might be satisfaction over for the bowler as well as for
challenge Adyar. Next match, the match number 3 will be played between Reliance Katipalla versus Red Wings Kunjat Bail. So that I request both the teams captain, please report immediately to sign the official chart as soon as possible. ದಯಮಾಡಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಟಿಪಲ್ಲ ಹಾಗೂ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆತರಬೇಕು. ಆಟಗಾರರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಹಾಗೂ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರನ್ನು ನಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬಾಯಲ್. Coming back to this match, Challenge Adyar versus YFC Bajal. After winning the toss, Challenge Adyar captain elected to field first, and so far it's 8 on the board without loss of any wicket. So thank you very much, Challenge Adyar, for your quick work. You responded very well. Thank you very much. So that is a lesson for each and every teams that you need to wear the complete jersey. The uniform is very important because it's a big tournament and a very prestigious Nethravathi Trophy 2022. The cash prize of 1 lakh and 77,777 for runner-off, and one of the most prestigious tournament which is organized by Friends Shanthinagara and in the name of Nethravathi Trophy 2022. So Imran, one more very experienced campaigner, is brought into attack. He's a very good bowler, the intelligent cricketer. He will go into ball second over to the right-hander batsman Akzar. Asghar, this time ball is in there. Fielder not really able to run back to take the catch. Ball landed safely between mid-off and long-off. And that's why the batsman just got life here. It's not a controlled stroke there from Naushad there. He wanted to get over the top of deep cow point, short cow point to get the boundary, but he's not really getting that much of timing enough to get past the fielder. Just a single for him. With that single, scoreboard numbers on to 9 on the board without loss of any wicket here in the over number first in progress. Imran calling the mid-wicket fielder to little bit fine towards deep square leg and mid-wicket. The one fielder at deep long on. It's two fielders outside the circle saving the boundaries. This time driven that one between the gap, between cover and extra cover. Ball running down to deep cover point, region boundary for 4 runs. Oh! So tried to stop the boundary. He's almost looks like he's out of control his speed, because that's all happening, isn't it? When you're trying for saving the boundary, it's very difficult for to control your speed, because you are just only looking to stopping the boundary. But fortunately nothing has happened here for the fielder. He's very safe in the location. I thought it might be a little bit difficult time for the fielder, but he's managed to control his speed at last moment, and boundary comes up here for Naushad there, and he's off the mark with the boundary. The lovely looking extra cover. That was an exquisite extra cover right there from Naushad. He's a tall man. Imran with his offer, little margin for error. When you're having only two fielders outside the circle, it's very difficult to prevent the boundary once it beats the infield. It's not a big ground. Once it beats the infield, the ball which is travels very quickly in this outfield. It's a quick outfield down at deep cover point and a little bit shortest part of the ground as well. With that, again scoreboard numbers on to 13 on the board. There's some tries that one again. Misfield by the fielder. Again it looks to be the boundary number 2 coming up here for Naushad. Once again Naushad hitting the ball beautifully in the offside region. This time a misfield by the fielder.
The jersey number 77 couldn't manage to react very quickly to that one, and two back-to-back boundaries. The boundary coming up here. With that boundary scoreboard numbers on to 17 on the board. Meanwhile, I request for the match number 4, KFC Kankanadi and Mazda Kannur to report here immediately. KFC Kankanadi ಹಾಗೂ ಮಜ್ದಾ ಕನ್ನೂರ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So back to back two boundaries. That means Imran a little bit under pressure situation for him. The how to restrict Naushad from the boundary. Two boundaries in a 2 deliveries. Imran bounce this time again, chip that one, but this time he got the fielder at extra cover. That is a wonderful catch taken there by the extra cover fielder. Naushad couldn't manage to keep it down. He wanted to get one more boundary, just hitting the ball, try to hit the ball over the head of that extra cover region, but not quite enough that height which he's looking for. But fielder at extra cover just got a beautiful catch. Suhail down at extra cover, just jumping in the right time, and the timing is so good in that occasion. Jump, and Imran at last managed to bounce back in this over by picking up the wicket of Naushad. So new batsman in. Tausif is walking towards the middle with the jersey number 11. Challenger Deer and YFC Bajal, two very good teams, balanced teams, clashing in the first round of this prestigious Nethravathi Trophy 2022, which is proudly organized by friends Shanthinagara under the great leadership of Mansoor and all organizing committee of friends Shanthinagara Nantur. Again, right arm over the wicket, balls outside the run of off stamp too much. That's why the wide call by umpire. So Imran bowling some expensive over, and the scoreboard is 18 already on the board. Imran right arm over the wicket. This time tries that one just over the top of that mid off fielder, but protection is given in the deep wideish long off region, so that batsman have to settle for the single. With that single, Tausif is off the mark, and the scoreboard is moves on to 19 on the board for the loss of 1 wicket. It's a good going here for team of YFC Bajal. They're really just exploiting the condition of the fielding restriction in the first 2 over of the power play. Imran bowling quite an expensive over. Again, appeal for leg before wicket. Ball just going down the leg stump. No signal coming from umpire. That means it's inside edge of the bat of the batsman. So expensive over comes in and there from Imran after completion of over number 2. And still YFC Bajal looking in good position, scored 20 valuable runs at the rate of exactly 10 runs per over, 12 runs which came from that previous over. And altogether 20 runs on the board in 2 overs. Power play looks like which is going in favor of the team YFC Bajal. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ಹಾಗೂ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ KFC ಕಂಕನಾಡಿ ಹಾಗೂ ಮಜ್ದಾ ಕನ್ನೂರ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. So change in bowling from the commentary box, and it's jersey number 7 is brought into attack. Suhail bowling his second over. He's bowled first over by conceding 8 runs in his first over, bowling second over. Right arm over the wicket, ball starts very well with the line which is outside the line of after one of the better line to ball. After that fielding restriction, the power play is after foul play, the fielding restriction is off, and you can see that so many bodies out there in the deep
one at deep backward score leg, one at deep mid wicket and deep long on. In the offside region, deep long off and deep cover point region. There is a backward point, short extra cover, short mid off and short mid wicket. The wicket keeper behind the stumps. Again, chip that ball straight to the hands of fielder. This time, jersey number 77 is not making the mistake. Javed, of course, he's got a little bit the blame in the previous over as he couldn't manage to field the ball very well. This time, he's just recovering very well from that mistakes, and he's taken a very good catch when ball is just traveling left of him, and he's just spreading his two hands to the direction of the ball and got the catch very well. There's a wicket number 2 which is back into pavilion of YFC Bajal. So slowly the challenge Adyar tried to tie for the batting teams, because after seeing the 5 fielders outside the circle, it's not so easy to get the boundaries, but you can get the distance right because of the dimension of this cricket ground. We can see that not a huge ground, but still need to have enough power and timing behind every strokes. Suhail, 2 new batsmen went for the reverse sweep. A ball just deflected from the leg of the batter, and it's going to be a leg by call by umpire. No connection with the leg, but the wicketkeeper behind the stump, Ashok. It's a difficult one because whenever the batsman going for the reverse sweep, it's not so easy for the wicketkeeper behind the stump to collect the ball. And leg by call by umpire. With that leg by scoreboard is 21 on the board for the loss of 2 wicket. Again, nicely place it down to deep wideish long on region. They're charging for the second. In comes the throw, but not quite enough to stop the couple of runs. Excellent running between the wicket, but it's not that much of a quick enough fielding there by the fielder in the wideish long on. Both the batters realizing that when the ball is went within the gap, they're charging for the first run very quickly. Once they complete the first run very quickly, it will make it so easy for both the batters to come back for the couple of runs. With that couple of runs, scoreboard moves on to 23 on the board for the loss of 2 wicket. Tausif is on strike. Irshad is on non-strikers, and again lovely placement, beautifully played that one. Look at the way that is making a little bit room to play the shot, because you know exactly that backward point and a short extra cover you need to send between that to fielder to get the single down to deep cover point region. With that single scoreboard moves on to 24 on the board for the loss of 2 wicket. Suhail again away from us, right above the wicket to Rishad. Slower one. Oh, Ashok, a little bit fumble opportunity which is created for the run out because the batsman striker is not interested, but already the Tausif who is running for the single there, but after that last Ashok couldn't manage to gather the ball. So over number 3 completed. After completion of over number 3, it's a good over, and challenge YFC Bajal managed to score 25 runs in 3 overs at the rate of exactly 8.33 runs per over. 8.33 runs per over after completion of over number 3. Now 3 overs remaining. Half of the job which is completed, half of the job which is remaining. So before the next 2 overs going to commence, the wait and see how many runs they will going to score in the remaining 3 overs. And for that remaining 3 overs, I would like to invite Kabir to take over the microphone in our national language, Hindi. Thank you. धन्यवाद इस वक्त सतीश जी को
अब मैच 3 ओवर समाप्त करने के बाद 3.1 और इस वक्त समाप्त करने के बाद 26 रन यहाँ पर बनते हुए फिर से गेंदबाजी पर गेंदबाज संतोष इस वक्त गेंदबाज करने के लिए तैयार, सेकंड के निशान पर बल्लेबाज इस बार गेंद को वहां पर ऑफसाइड के निशान पर खेला जरूर, वहां पर पीछे फील्डर मौजूद थे और गेंद को कलेक्ट किया, वहां पर दौड़कर प्राप्त करने के बाद 1 रन वहां पर प्राप्त कर चुका है। इस 1 रन के साथ वहां पर रन संख्या वहां पर जंप होते हुए 27 ऑन द बोर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 2 बॉल्स। तीसरी गेंद फ्रेंड्स शांतिनगर प्रस्तुत करते हुए नेत्रावती ट्रॉफी 2022 एनसीजी नेत्रावती क्रिकेट ग्राउंड इस वक्त नेत्रावती ट्रॉफी चलता है 2022। इस बार गेंद को ऑन साइड के निशान पर गेंद को खेला जरूर, 30 दायरे के अंदर जो फील्डर थे गेंद को कलेक्ट किया और सब्ट्रैक्शन करने के बाद थ्रो किया था 9 सेकंड के निशान पर, 1 रन वहां पर दौड़कर प्राप्त कर चुका है। इस 1 रन के साथ रन संख्या यहाँ पर बनते हुए 28 ऑन द बोर्ड। चौथी बार गेंदबाजी पर संतोष गेंदबाज करने के लिए तैयार, राइट आर्म और द विकेट इस बार गेंदबाज करते हुए इस बार गेंद थोड़ी सी पैरों पर टकराई और अंपायर का इशारा लेग बाइस का इशारा यहाँ पर देते हुए पैरों पर टकराने के बाद विकेट कीपर ने दौड़कर गेंद को कलेक्ट करने के लिए कोशिश किया था, लेकिन गेंदबाजी ने वहाँ पर दौड़कर गेंद को वहाँ पर कलेक्ट किया, 1 रन वहाँ पर मिलेगा जरूर। इस 1 रन के साथ रन संख्या यहाँ पर जंप होते हुए 29 ऑन द बोर्ड, 29 यहाँ पर बनते हैं रन संख्या पर। इस बार गेंद का रिवर्सिप खेलना चाहा, केवल दिशा दिया था कलात्मक शैली के साथ इस वक्त बल्लेबाज करते हुए बल्लेबाज इरशाद और इसी के साथ रिवर्सिप खेलने के बाद डिक्लेयर के निशान पर गेंद जाते हुए 1 रन वहां पर बल्लेबाज को वहां पर मिल चुका है। इस 1 रन के साथ रन संख्या यहाँ पर बनते हुए 30 ऑन द बोर्ड। अब संतोष फिर से तैयार, अंपायर शेख मलाली सर को यहाँ पर पार करते हुए रिटर्न और द विकेट इस वक्त गार्ड लेते हुए कमेंट्री एंड की ओर से इस बार गेंद को यहाँ पर यू मिस इट आई हिट इट यहाँ पर कहते हुए इस बार गेंद टिप्पा करने के बाद अंदर की ओर आने के बाद बेल्स यहाँ पर ऑफ हो चुका है और इसी के साथ बल्लेबाज तौसीफ की बार यहाँ पर खत्म हो चुका है। गेंद एक टिप्पा करने के बाद ऐसा लग रहा था कि गेंद ऑफिस स्टंप को छोड़कर बाहर जाए, लेकिन अंदर की ओर ऑफ कटर गेंद थी, गेंद अंदर की ओर आने के बाद सीधे वहां पर बेल्स पर टकरा चुके, स्टंप पर टकराने के बाद बेल्स यहाँ पर ऑफ हो हुए। इसी के साथ दूसरी विकेट यहाँ पर समाप्त होते हुए समाप्त तीसरी विकेट यहाँ पर गिर चुका है, रन संख्या पर रुकते हुए 30 रन पर तीसरी विकेट यहाँ पर गिर चुका है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 30 रन 30 रन के ऊपर 3 विकेट यहाँ पर गिरने के बाद और संतोष इस सफलता के साथ रन संख्या पर रुकते हुए 30 रन पर आखिरी एक बार समाप्त। यहाँ पर 4 ओवर समाप्त करने के बाद 30 रन यहाँ पर बनते हुए बच्चे हुए 12 गेंद बाकी है। देखना पड़ेगा कि इस 12 गेंद पर क्या बल्लेबाज उछलते हुए बल्लेबाजी करता है या गेंदबाजी अपने टीम के लिए ऐसा गेंदबाज किया था संतोष ने, इस तरफ की यहाँ पर लाइन और लेंथ के सारे इस वक्त गेंदबाज करे गए, हमें देखना पड़ेगा। एनसीजी नेत्रावती क्रिकेट ग्राउंड पर लहराते हुए झंडों के साथ हर भर पैर पूदे इस वक्त मैदान की चारों ओर दिखा दे रहा है। देखना पड़ेगा कि इस टूर्नामेंट का आज का दिन अतिरथी महारथियों के साथ रिबन कट करने के बाद पहला दिन के यहाँ पर उद्घाटन होने के बाद दूसरी मैच यहाँ पर खेलते हुए टीम वाईएफसी बजाल और चैलेंज अड्यार के बीच वाईएफसी चैलेंज अड्यार ने वहाँ पर इनकी खिलाड़ी कप्तान ने टॉस जीतने के बाद सब्ट्रैक्शन करने के लिए निर्णय यहाँ पर ले चुके थे। इस वक्त सब्ट्रैक्शन करने के लिए वहाँ पर निर्णय लेने के बाद 3 विकेट यहाँ पर समाप्त कर चुका है। इस बार गेंद को वहाँ पर ऑफसाइड के निशान पर कर चुकी थी, केवल दिशा दिया था, वहां पर कट करने के बाद गेंद वहां पर सब्ट्रैक्शन के हाथों पर गई गेंद और इसी के साथ 1 रन वहां पर बल्लेबाज के पास मौका मिल चुका है। इस 1 रन के साथ 31 रन वहां पर बनते हुए अब 18 नंबर जर्सी पहनते हुए गेंदबाजी पर वहां पर गेंदबाजी इनका शैली विभिन्न शैली के साथ इस वक्त गेंदबाज दौड़ते हुए गेंद को वहां पर अपने अंदर की ओर कट आने के बाद विकेट कीपर वहां पर गेंद को कलेक्ट किया और बल्लेबाज को वहां पर चकमका चुका है और इसी के साथ डॉटेड गेंद बिंदी गेंद यहाँ पर साबित होता है। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक का 2 गेंद वहाँ पर गेंदबाज किया था अच्छी तरफ से, वहाँ पर गेंदबाज करने के बाद केवल 1 ही रन वहाँ पर मिल चुका है बल्लेबाजी टीम के लिए। अब तीसरी गेंद और वाईएफसी बजाल इस वक्त सावधान बल्लेबाज यहाँ पर आते हुए नए बल्लेबाज की तरफ से इस वक्त बल्लेबाजी करने के लिए निज़ाम और इनकी वहाँ पर
साझेदारी देते हुए इरशाद सही कर और नॉन सही रन के निशान पर खेलते हुए सही रन के निशान पर नए बल्लेबाज निजाम इस वक्त बल्लेबाजी करने के लिए पहला गेंद डॉटेड गेंद के साथ यहाँ पर बल्लेबाज करते हुए नजर आए और धूप कड़ी संघर्ष इस वक्त जारी होते हुए समय इस वक्त 12:24 यहाँ पर समय होते हुए फिर से वहाँ पर कुछ टेक्निकली इशू करने के बाद फिर से वहाँ पर मैच पर लौटते हुए 18 नंबर जर्सी पहनते हुए संतोष समाप्त शरीफ इस बार गेंदबाज करते हुए इस बार गेंद बैक टू द बॉलर के सबर जाते हुए वहाँ पर रन आउट की खतरा वहाँ पर हो चुका है चौथी विकेट यहाँ पर गिर चुका है केवल 31 रन पर 31 ऑन द बोर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 3 बॉल्स 3 गेंद वहाँ पर समाप्त करने के बाद 31 रन पर चौथी विकेट विकेट यहाँ पर गिर चुका है थोड़ी सी वहाँ पर निराशादायक वहाँ पर पेविलियन पर दिखाई दे रहा है क्योंकि अच्छी तरफ से वहाँ पर रन बन रहा था बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाज आक्रामक बल्लेबाजी ने लेकिन इस ओवर की पहले वहाँ पर गेंदबाज किया था संतोष ने अपनी आखिरी गेंद पर वहाँ पर बॉल आउट करने के बाद बल्लेबाज को आउट होने के बाद तीसरी विकेट यहाँ पर गिर चुके थे लेकिन इस ओवर पर तीसरी गेंद पर चौथी विकेट यहाँ पर गिर चुका है इसी के साथ चौथी गेंद यहाँ पर गिर चुका है रन संख्या यहाँ पर 31 ऑन द बोर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 3 बॉल 3 गेंद यहाँ पर समाप्त करने के बाद 31 रन पर 4 विकेट यहाँ पर गिर चुका है और मैदान की तीन और स्पेक्टेटर यहाँ पर प्रेक्षकों के साथ इस वक्त मैच आनंद लेते हुए खामोशी के साथ पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ इस वक्त प्रेक्षकों ने इस मैच का यहाँ पर आनंद लेते हुए धूप कड़ी संघर्ष यहाँ पर मैदान पर जारी होते हुए शरीफ गेंदबाजी पर फिर से गेंदबाज करने के लिए राइट और द विकेट इस वक्त गढ़ लेते हुए बल्लेबाजी इस बार गेंद को वहां पर पर खेल चुके थे लेकिन फील्डिंग वहां पर 30-10 दायरे के अंदर जो फील्डर थे गेंद को वहां पर कैच आउट वहां पर ले चुका था इसी के साथ 5 विकेट यहाँ पर गिर चुका है इस ओवर पर 2 विकेट बैक टू बैक पिछली गेंद पर रन आउट की तरफ से और इस वक्त कैच आउट की तरफ से वहां पर विकेट गिर चुका है 5 विकेट यहाँ पर गिर चुका है केवल 31 रन पर 31 ऑन द बॉर्डर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 4.4 ओवर्स लॉस ऑफ 5 वैल्यूएबल विकेट्स 5 विकेट यहाँ पर गिर चुका है एक अंत पर रन संख्या यहाँ पर अच्छी तरफ से जा रहा था लेकिन इस ओवर के पहले विकेट के जाने के बाद बैक टू बैक इस कम से कम एक 6 गेंद के अंदर पर 3 विकेट यहाँ पर गिर चुका है इस 3 विकेट गिरने के बाद थोड़ी सी अंडर द प्रेशर अब दबाव के ऊपर दबाव यहाँ पर बढ़ते हुए बल्लेबाजी टीम के लिए क्योंकि इस दबाव को निभाना है तो इन दोनों बल्लेबाज अपने साझेदारी की तरफ से सेंसिबल क्रिकेट या बड़े बड़े स्ट्रोक या खेले जाए तो इस मैच को वहाँ पर फिर से वहाँ पर वापसी आ जाएगा देखना पड़ेगा कि बल्लेबाज इस वक्त भाई हाथ की खिलाड़ी सही रन के निशान पर खेलने के लिए तैयार नए बल्लेबाज शिवा इस वक्त बल्लेबाजी करने के लिए तैयार 9 रन के निशान पर अंसाफ गेंदबाजी पर फिर से वहाँ पर शरीफ 5वीं गेंद इस बार गेंद को के निशान पर खेलना चाहा लेकिन गेंद अंतिम ओवर पर बल्ले का पैरों पर टकराने के बाद समाप्त पैरों पर टकराने के बाद अंपायर का इशारा वहाँ पर लेग बाइस का इशारा वहाँ पर देते हुए गेंद 30 दायरे के अंदर वहाँ पर रुक चुकी थी और इसी के साथ 1 रन वहाँ पर दौड़कर प्राप्त कर चुका है इस 1 रन के साथ रन संख्या यहाँ पर आते हुए 32 ऑन द बोर्ड अब केवल आखिरी गेंद से शरीफ की पर तारीफ करनी चाहिए क्योंकि इन गेंदबाजी ने केवल 2 रन वहां पर दे चुकी थी 5 गेंद समाप्त करने के बाद 5 गेंद फेंकने के बाद आखिरी बार शरीफ इस बार स्लोअर वन गेंद स्लोअर वन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक दिमाग की बत्ती चलते हुए वहां पर गेंदबाज किया था स्लोअर वन बल्लेबाज वहां पर ठीक तरीके से गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए और इसी के साथ केवल एकमात्र रन मिलेगी बल्लेबाजी टीम के लिए और इसी 1 रन के साथ यहाँ पर रन संख्या आते हुए 33 on the board after completion of the 5th over loss of 5 valuable wickets 5 विकेट यहाँ पर गिरने के बाद यहाँ पर 33 रन यहाँ पर बनते हुए 5 ओवर समाप्त करने के बाद अब आखिरी ओवर से देखना पड़ेगा कि इन 6 गेंद पर क्या बल्लेबाजी टीम 7 या 8 रन बनकर 40 के ऊपर रन संख्या बन पाएगा या नहीं देना पड़ेगा 33 on the board
अब 6 गेंद बाकी है, देखना पड़ेगा कि इन 6 गेंद पर क्या बल्लेबाज उछलते हुए बल्लेबाजी करेगा या सेंसिबल क्रिकेट खेलेगा, देखना पड़ेगा। अपने जो विकेट वहाँ पर खो चुका है, इस विकेट को वहाँ पर बचा कर बल्लेबाजी करनी चाहिए, क्योंकि 5 विकेट एक भला बैटिंग लाइनअप इस वक्त 5 विकेट वहाँ पर खोल कर बल्लेबाजी करते हुए नजर हुआ, तो शायद थोड़ी सी बुरी नजर वहाँ पर आते हुए। देखना पड़ेगा कि इन दोनों बल्लेबाज क्या अपने टीम के लिए संभालते हुए बल्लेबाज करता है या नहीं, देखना पड़ेगा। और 07 जर्सी नंबर पहनते हुए गेंदबाजी पर इमरान गेंदबाज करने के लिए तैयार। कमेंट्री बॉक्स एंड की ओर से इस वक्त गेंदबाज करेगा इमरान इस टूर्नामेंट की इस इनिंग्स के आखिरी ओवर फेंकने के लिए। इस बार गेंद बैक टू द बॉलर के निशान पर जाते हुए रन आउट की कदर हो सकता था, लेकिन वहां पर थोड़ी सी मिस फील्डिंग किया था गेंदबाजी ने, और इसी के साथ वहां पर विकेट बचाकर वहां पर क्रीज पर बल्लेबाजी सुरक्षित पहुंचते हुए, और इसी के साथ विकेट डॉटेड गेंद बिंदी गेंद यहाँ पर साबित होते हुए। दूसरी गेंद इमरान फिर से तैयार गेंदबाज करने के लिए, सेकंड रन के निशान पर अंसाफ। इस बार गेंद को वहाँ पर स्ट्राइट डाउन द ग्राउंड गेंद को वाइडिश लॉन्ग ऑफ के निशान पर खेल चुकी थी, और इसी के साथ ड्राइव किया था वाइडिश लॉन्ग ऑफ के निशान पर। जो फील्डर थे वहाँ पर फील्ड करने के बाद गेंद को थ्रो किया था नॉन स्ट्राइक रन के निशान पर। 1 रन बल्लेबाज दौड़कर 1 रन वहाँ पर मिल चुका है। इस 1 रन के साथ रन संख्या पर होते हुए 34 ऑन द बोर्ड। दूसरी गेंद तीसरी गेंद इस वक्त गेंदबाजी पर इमरान गेंदबाज करते हुए। शिवा लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, बाई हाथ की खिलाड़ी कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड हिटर बल्लेबाज माने। इस बार गेंद अलॉन्ग द करपट, जैसे अंग्रेज में कहते, बिल्कुल जमीन के सारे गेंद को रख चुके थे। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, नो डाउट एट ऑल। और इसी के साथ इन वहां पर गेंद को सीधे से वहां पर खेल नहीं पाए, स्वीप करना चाहा लेकिन चुके, और विकेट वहां पर गिर चुका है। बाउल आउट होने के बाद शिवा इनकी बार यहां पर खत्म हो चुका है। शिवा की वहां पर पहले का वहां पर रास्ता दिखाते हुए सर इमरान ने, और इसी के साथ 6 विकेट यहां पर गिर चुका है। After completion of the 3 ball, 6 wickets has been falling down at the score of 34. वहां पर आखिरी 3 गेंद से देखना पड़ेगा कि कम से कम इन 3 गेंद पर शायद 3 या 4 रन बने, तो 6 वहाँ पर रन बने, तो एक 40 का आंकड़ी वहाँ पर खड़ा कर सकते थे स्कोर। देखना पड़ेगा कि 3 गेंद बाकी है। नॉन स्ट्राइक रन के निशान पर अंसाफ एक सेंसिबल क्रिकेट खेलने वाला माहिर है, और देखना पड़ेगा कि स्ट्राइक रन के निशान पर किस तरफ की वहाँ पर बल्लेबाजी करेगा बल्लेबाज, नए बल्लेबाज फ्रेशर बैट्समैन साउदर्न बल्लेबाज इस वक्त बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। और 1 मोर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, बाई हाथ की खिलाड़ी एक और इस वक्त बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। स्ट्राइक रन के निशान पर 07 जर्सी पहनते हुए समाप्त गेंदबाजी पर 07 जर्सी पहनते हुए इमरान इस वक्त गेंदबाज करने के लिए तैयार। चौथी गेंद तीसरी गेंद सफलता के साथ इस वक्त चौथी गेंद इस वक्त गेंद इस बार सेम रिजल्ट, 2 बैक टू बैक इस वक्त विकेट गिर चुका है। पिछली किस तरफ की गेंदबाज किया था, इस तरफ के वहां पर सेम लेंथ और लाइनर लेंथ के साथ इस वक्त गेंदबाज किया है गेंदबाज इमरान ने, और इसी के साथ फिर से वहां पर बोल्ड आउट होते हुए विकेट नंबर 7 यहां पर गिर चुका है। बल्लेबाज शिवा किस तरफ के वहां पर गलती किया था, इस तरफ की सेम गलती वहां पर किया है मिस्टर अश्वित, और इसी के साथ 2 बैक टू बैक वहां पर विकेट गिर चुका है। इन 2 विकेट वहां पर गिरने के बाद रन संख्या बढ़ चुका है 34 पर। अब केवल 2 गेंद वहां पर बाकी है। देखना पड़ेगा कि इन 2 गेंद पर क्या बल्लेबाज नए बल्लेबाज साउदर्न बल्लेबाज इस वक्त फ्रेशर बैट्समैन स्ट्राइक को रोटेट करते हुए नॉन स्ट्राइक रन के निशान पर खेलते हुए अंसाफ को वहां पर स्ट्राइक देगा या नहीं, देखना पड़ेगा। 2 गेंद से इस इनिंग्स को खत्म करने के लिए फिर से वहां पर फील्डिंग में जमावट करते हुए परिवर्तन के दौर पर इस वक्त फिर से राइट टर्म और द विकेट गेंदबाज करने के लिए शेख मलाली सर को वहां पर पार करने के लिए तैयार गेंदबाजी पर। इस बार गेंद को वहां पर स्ट्राइट ऑन द ग्राउंड गेंद को खेला, लेकिन वहां पर गेंद के नीचे फील्डर कैच आउट, और इसी के साथ हैट्रिक विकेट यहां पर लेते हुए नजर आ रहे इमरान। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, 2 बैक टू बैक बोल्ड आउट, और इसी के साथ तीसरी गेंद पर कैच आउट। हैट्रिक विकेट इस हैट्रिक के साथ पहला हैट्रिक इस टूर्नामेंट का नेत्रावती ट्रॉफी 2022 का पहला हैट्रिक माना जाता है। इस हैट्रिक के साथ एक एब्सोल्युटली फैंटास्टिक गेंदबाज यहां पर किया है इमरान ने। 2 ओवर वहां पर फेंकने के बाद पहला ओवर पर 1 विकेट और इस ओवर पर 3 विकेट, और
टोटल 4 विकेट इन्होंने ले चुके हैं इस इनिंग्स के साथ और इसी के साथ 8 विकेट यहाँ पर गिर चुका है बल्लेबाजी टीम के लिए। देखना पड़ेगा कि आखिरी एक गेंद शेष है, इस आखिरी गेंद के पर क्या बल्लेबाज सेंसिबल क्रिकेट खेलेगा या उछलते हुए बल्लेबाज करेगा। देखना पड़ेगा कि एक अच्छी तरफ से गेंदबाज किया है इमरान ने, तारीफ करनी चाहिए। और इसी के साथ आखिरी एक गेंद शेष है इनिंग्स खत्म होने के लिए। लास्ट बॉल इज रिमाइनिंग, आखिरी गेंद शेष। 7 नंबर जर्सी पहनते हुए आखिरी बार, इस बार गेंद ऑफ साइड में निशा पर गया जाता है, गेंद को वहां पर ठीक तरीके से विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए और 22 की तरफ से एक्स्ट्रा की तरफ से वहां पर 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ 35 ऑन द बोर्ड, 35 रन यहां पर बनते हुए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दी
यस वेलकम बैक। अब फिर से वहाँ पर मैच को शुरुआत करते हुए दूसरी इनिंग्स के 35 रन वहाँ पर बन चुके थे। 36 इज अ टारगेट। अब दोनों बल्लेबाज सलामी बल्लेबाज इस वक्त तैयार स्ट्राइकर नॉन स्ट्राइकर के निशान पर खेलने के लिए और फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए थोड़ी सी सजावट करते हुए फील्डिंग में इस फ्रांस शांतिनगर प्रस्तुत करते हुए नेत्रवती ट्रॉफी 2022 एक शानदार तरीके से वहाँ पर आयोजन किया है और अभिनंदन करना चाहता हूँ इस आयोजन के लिए। और इसी के साथ इस एनसीजी नेत्रवती क्रिकेट ग्राउंड लहराते हुए झंडों की साथ साथ इस वक्त धूप कड़ी संघर्ष यहाँ पर जारी होते हुए दूसरी मैच की दूसरी इनिंग्स और ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಶ್ರಫ್ ಬಜಾಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್। ಈ ಒಂದು ಏರಿಯಾದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ। ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟು ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ। और इस टूर्नामेंट का दूसरी मैच का दूसरी इनिंग्स यहाँ पर शुरुआत करते हुए और अभिनंदन करना चाहता हूँ जो कि इस टूर्नामेंट को यहाँ पर आते हुए अशरफ जी को इस एरिया के कॉर्पोरेटर है और इस मैच का यहाँ पर देखते हुए आनंद लेते हुए और गेंदबाजी पर गेंदबाज करने के लिए और सही करने के निशान पर बल्लेबाज करने के लिए संतोष और रियाज। संतोष एक एक्सपीरियंस कैंपेनर माना जाता है और गेंदबाजी पर गेंदबाज करने के लिए निज़ाम इस वक्त गेंदबाज करने के लिए तैयार। दूसरी इनिंग्स की पहला गेंद एवरीगो द फर्स्ट बॉल ऑफ सेकंड इनिंग्स। निजाम गेंदबाजी पर पहला गेंद पावर पे इस वक्त जारी हो चुका। इस बार गेंद उछल गया ऑफ साइड की निशान पर 30 दशहरे के अंदर जो फील्डर थे और पॉइंट की निशान पर जो फील्डर थे वहां पर गेंद को देखते हुए कैच आउट वहां पर हो चुका है। संतोष की बारी खत्म हो चुका है। दिस इज बैडली इस वक्त गेंद वहां पर खेलना चाहा आउटसाइड के निशान पर गेंद टॉपर होने के बाद 30 दशहरे के अंदर पॉइंट के निशान पर गेंद वहां पर कैच होते हुए और इसी के साथ संतोष की बारी यहां पर खत्म हो चुका है। द बैड स्टार्ट फॉर टीम चैलेंज अड्यार और इसी के साथ बल्लेबाज बजाल वाईएफसी बजाल को वहाँ पर शुरुआत करनी चाहिए था। किस तरफ के वहाँ पर शुरुआत करनी चाहिए था, इस तरफ की वहाँ पर शुरुआत करते हुए दुवेदार शुरुआत करने के बाद एक संतोष की विकेट वहाँ पर ले चुका है टीम निज़ाम ने और इसी के साथ एक पहला गेंद पर सफलता के साथ इस वक्त गेंदबाज करते हुए नजर आ रहा है और दूसरी बार गेंदबाज करने के लिए तैयार राइट और द विकेट गार्ड लेते हुए कमेंट्री बॉक्स एन की ओर से और बल्लेबाजी करने के लिए तैयार नए बल्लेबाज सुहेल इस वक्त ऑनलाइन की तरफ से यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए उतार चुका है और बल्लेबाज इस बार गेंद को सर के निशान पर खेला गेंद वहां पर जाते हुए डीप स्क्वायर के निशान पर सीमा रेखा से करीब जो फील्डर ने गेंद को छलांग लगाते हुए गेंद को रोक चुका था और इसी के साथ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक और इसी के साथ केवल 2 मात्र रन मिलेगा बल्लेबाजी टीम के लिए और अंपायर कुछ लाइन नंबर के साथ वहाँ पर पूछते हुए और कंफर्म किया कि ये 2 रन वहाँ पर मिलेगा। केवल 2 मात्र रन वहाँ पर मिल चुका है और जो वाइडी से लॉन्ग ऑन के निशान पर जो फील्डर थे दौड़कर गेंद को वहाँ पर रुक चुका है एब्सोल्युटली फैंटास्टिक और इसके साथ 2 रन वहाँ पर केवल मिलेगा। ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕಂಕನಾಡ್ ಸಮಾಪ್ತ। ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಚತ್ಬೈಲ್ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಗಮನಿಸುತ್ತೇನೆ। ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಚತ್ಬೈಲ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು ಗಮನಿಸುತ್ತೇನೆ और गेंदबाजी पर निज़ाम तीसरी गेंद पर गेंदबाज करते हैं इस बार स्लोअर वन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक नो स्लोअर वन इस वक्त गेंदबाज करने के बाद अंतिम ओवर पर गेंद को वहाँ पर देखने के बाद बल्लेबाज केवल दिशा दिया था ऑन साइड के निशान पर खेल चुका था और ड्राइव किया था केवल 1 मात्र रन मिलेगा और इसी के साथ 1 रन आगे बढ़कर रन संख्या पर जंप होते हुए 3 रन यहाँ पर बन चुका है। अब चौथी गेंद गेंदबाजी पर निज़ाम गेंदबाज करते हुए जो सेंसिबल क्रिकेट खेलने में माहिर है और खिलाड़ी सुहेल इस वक्त सेंसिबल क्रिकेट खेलते हुए 1 रन दौड़कर प्राप्त कर चुका है। वहाँ पर रोटेटिंग द स्ट्राइक्स इज वेरी गुड सुहेल वहाँ पर इस काम को यहाँ पर करते हुए इस बार चौथी गेंद इस बार स्ट्राइक ऑफ द ग्राउंड खेल रहा है लेकिन गेंद के नीचे वहाँ पर फील्डर मौजूद है और इसी के साथ फील करने के बाद तुरंत वहाँ पर गेंद को थ्रो किया है नॉन स्ट्राइक रन के निशान पर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक गेंद को जिस तरफ के वहाँ पर क्षेत्ररक्षण किया था इसी तरफ के इसी तेजी के साथ गेंद को थ्रो किया है नॉन
स्ट्राइक रन के निशान पर केवल बल्लेबाजी टीम के लिए एकमात्र रन वहां पर मिलेगा। जो 4 रन मिल रहा था इसको वहां पर रोकते हुए 3 रन को वहां पर बचाते हुए अपने टीम के लिए, और इसी के साथ अच्छी तरफ से वहां पर क्षेत्ररक्षण किया था लॉन्ग ऑन के निशान पर जो फील्डर थे इन फील्डर ने। 5वीं बार गेंदबाजी, इस बार गेंद को ऑफसाइड के निशान पर खेला जरूर, गेंद जाता है डीप गली के निशान पर, वहां पर फील्डर ने वहां पर दौड़ कर फिर वहां पर गेंद को रोक चुका है, और इसी के साथ गेंद को फिर से बैक टू द रिटर्न वहां पर थ्रो करने के बाद केवल बल्लेबाजी टीम को एक ही मात्र रन मिलेगा इन 1 रन के साथ। ऐसा लग रहा था कि 2 बैक टू बैक शॉट लगा था बाउंड्री लाइन को बाहर जाए, लेकिन अंदर की ओर फील्डर ने रोकने के बाद अपने टीम के लिए 3-3 रन वहां पर रुक चुका है। इसी के साथ रन संख्या यहाँ पर जंप होते हुए 5 गेंद समाप्त करने के बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 5th बॉल स्कोर कार्ड इज मूविंग ऑन द बोर्ड। 5 गेंद पर 5 रन यहाँ पर बनते हुए आखिरी बार निजाम गेंदबाज, इस बार गेंद को उछाला, गेंद जाते हुए डीप मिड ऑफ की ऊपर, और बल्लेबाज अंपायर को वहां पर इशारा देखना पड़ेगा कि ए छक्का, इट्स अ बिगे, और इसी के साथ इस छक्के के साथ धुएंधार शुरुआत यहाँ पर होते हुए बल्लेबाज रियाज के बल्ले से, और इस छक्के के साथ रन संख्या पर धीरे धीरे से वहां पर जंप होते हुए 11 ऑन द बोर्ड, 11 रन बन चुका है पहला ओवर समाप्त करने के बाद 1 विकेट के नुकसान पर। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट ओवर स्कोर कार्ड इज मूविंग ऑन 11 ऑन द बोर्ड आफ्टर लॉस ऑफ 1 वैल्यूएबल विकेट्स। पहला गेंद पर विकेट वहां पर ले चुकी थी निजाम ने, पर निराशादायक बल्लेबाज दिखाने के बाद आगे आते हुए 5 गेंद पर 11 रन बन चुका है, और इसी के साथ स्ट्राइक रोटेट वहां पर किया था सुहेल ने, और इस स्ट्राइक रोटेट करने के बाद इस फायदे को उठाते हुए पावर प्ले का आखिरी गेंद पर गेंद को उछाल दिया था डीप एक्स्ट्रा कवर के निशान पर 6 रन के लिए, और इस छक्के के साथ रन संख्या पर धीरे से जंप होते हुए 11 रन पर वहां पर रुक चुका है। अब 30 गेंद बचे हुए, और 30 गेंद पर 25 रन चाहिए, 25 इज रिक्वायर्ड वहां पर 30 गेंद पर 30 बॉल्स रिमाइनिंग, एग्जैक्ट रन रेट 5.00 5.00 पर रन रेट यहाँ पर चाहिए बल्लेबाजी टीम के लिए, और गेंदबाज करने के लिए 02 जर्सी नंबर पहनते हुए नए गेंदबाज मारूफ गेंदबाज करने के लिए तैयार, राइट एम और द विकेट इस वक्त राइट एम ऑन द विकेट गेंदबाज करने के लिए तैयार। इस बार गेंद ऑनसेट के काफी दूर, और इस वाइड को वहां पर रुक कर गेंदबाज करनी चाहिए, क्योंकि इस तरफ को वहां पर वाइड दिया तो शायद बल्लेबाजी टीम के लिए आसान जीत हो सकता है। इस तरफ के वहां पर गेंदबाज को रुका गया तो शायद 1 ओवर पर 2 या 1 और 2 रन वहां पर दिया तो शायद इस तरफ की गेंदबाज वहां पर किया तो वहां पर नुकसान हो जाएगा। इस बार गेंद ऑफिसर काफी अंदर की ओर आने के बाद अंपायर का कोई इशारा नहीं, डॉटेड गेंद, बिंदी गेंद, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक कमबैक यहाँ पर गेंदबाज करते हुए, और इसी के साथ कमबैक होते हुए महरूफ के लिए, और इस कमबैक के साथ डॉटेड गेंद, बिंदी गेंद यहाँ पर साबित होते हुए दूसरी बार गेंदबाजी पर महरूफ रिटम रोन द विकेट गार्ड लेते हुए, इस बार रिवर्सिप वहाँ पर ऑन साइड के निशान पर काफ़ी दूर, और विकेट कीपर ने गेंद को छोड़ दिया था, लेकिन शॉट फाइन लेग के निशान पर जो फील्डर थे वहाँ पर इन फील्डर ने वहाँ पर छोड़ दिया, और इसको वहाँ पर फायदा उठाते हुए वहाँ पर बल्लेबाज दौड़कर प्राप्त 1 और रन वहाँ पर बन चुका है। इन 2 रन वहाँ पर एक्स्ट्रा की तरफ से मिलेगा, वाइट +1, इन 2 रन के साथ रन संख्या यहाँ पर आगे बढ़ते 14 ऑन द बोर्ड। दूसरी गेंद इस वक्त गेंदबाजी पर फिर से महरूफ गेंदबाज करने के लिए तैयार, सही रन के निशान पर रियाज इस बार गेंद को चलना चाहा लेकिन चुके, और इसी के साथ अलॉन्ग द कारपेट बिल्कुल जमीन के सारे गेंद को रख चुके थे। परिवर्तन के दौर पर धीमी गति के साथ इस वक्त गेंदबाज वहां पर किया था, इन गेंद पर डॉटेड गेंद वहां पर साबित होते हुए कोई रन वहां पर बल्लेबाजी का नहीं मिलेगा, मौका नहीं रन लेने के लिए। इसी के साथ कमबैक शायद थोड़ी से होता है गेंदबाजी टीम के लिए। गेंदबाजी पर मैरो फिर से तैयार, इस बार ऑन साइड के निशान पर जाते हुए, और कुछ अंत तक यहाँ पर एंटरटेनमेंट हो रहा है इस गेंदबाजी पर, क्योंकि पहला गेंद वाइड वहाँ पर फेंक चुकी थी, और फिर से डॉटेड गेंद, फिर से वाइड, फिर से डॉटेड गेंद, फिर से वाइड, और देखना पड़ेगा कि क्या इस गेंद पर डॉटेड होता है या नहीं, देखना पड़ेगा। अब इस ओवर पर 1 2 3 4 4 रन यहाँ पर बनते हुए बल्लेबाजी टीम के लिए 4 रन यहाँ पर बन चुका है। फिर से वहां पर जोरदार अपील, अंपायर का कोई इशारा नहीं, बल्ले का अंतिम ओवर पर समाप्त, लेग बाइस का इशारा यहाँ पर देते हुए
और गेंदबाजी ने अंपायर को वहाँ पर डेंजर रन के निशान पर गेंदबाज प्रवेश किया था। अंपायर को वहाँ पर ठीक तरीके से दिखा नहीं पाए और इसी के साथ लेग बाइस का इशारा यहाँ पर देते हुए गेंदबाज करने के बाद डेंजर रन के निशान पर आ चुकी थी और अंपायर वहाँ पर वार्निंग देते हुए गेंदबाजी के लिए और इसी के साथ बल्लेबाज की पास एक रन दौड़ने के मौका वहाँ पर मिल चुका है। इस एक रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ते हुए 16 ऑन द बोर्ड। अब फिर से गेंदबाजी पर मारूफ गेंदबाज करने के लिए तैयार रहा। इस बार राउंड साइड के निशान पर गेंद को खेल चुकी थी, ड्राइव किया था और 30 दायरे के अंदर जो फील्डर थे इन्होंने फील्ड करने के बाद गेंद को थ्रो किया है। एक रन प्राप्त कर चुका है बल्लेबाजी टीम। इस एक रन के साथ रन से तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए 17 ऑन द बोर्ड। 4 गेंद समाप्त करने के बाद 17 रन बनते हुए बल्लेबाज टीम अब तक कुछ हद तक सफलता के साथ इस वक्त ऑन साइड के काफी दूर बल्लेबाज रिवर्सिप खेल चुके थे, लेकिन गेंद फिर से इनको फिर से वहां पर बाहर जाने के बाद अंपायर का इशारा वाइड करार देते हुए काफी लंबे वाइड वहां पर फेंक चुकी थी इन गेंदबाज ने और इसी के साथ मैरफ की इस गेंद पर वहां पर एक्स्ट्रा की तरफ से फिर से वहां पर एक रन मिलेगा जरूर। 18 रन 18 ऑन द बोर्ड। अब वहां पर आध सैकड़ा इस वक्त पूरा करने के बाद फिर से वहां पर गेंदबाज वहां पर इस बार गेंद को वहां पर थ्रो किया था, वाइड थ्रो थी, लेकिन बैकअप फील्डर ने गेंद को कलेक्ट करने के बाद फिर से स्ट्राइक रन के निशान पर थ्रो किया था। विकेट कीपर ने विद इन द फ्रैक्चर्स ऑफ सेकंड वहां पर स्टंप आउट करने के लिए रन आउट करने के लिए कोशिश किया था, लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर सुरक्षित जाने के बाद 1+1 समाप्त वहां पर बल्लेबाज क्रीज पर सुरक्षित नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि बल्लेबाज सुरक्षित है, लेकिन अंतिम ओवर पर बल्ले का वहां पर नहीं लगाने के बाद बल्लेबाज वहां पर आउट होने के बाद अंपायर का उंगली वहां पर उठ चुका है। इसी के साथ 1+1 रन आउट वहां पर मिल चुका है। इस गेंद पर रन संख्या जंप होते हुए 19 ऑन द बोर्ड। अब तक यहाँ पर रन संख्या बन चुका है। अब नए बल्लेबाज करने के लिए तैयार इमरान बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। इमरान ने गेंदबाजी पर अच्छी तरफ से गेंदबाज किया था। इस टूर्नामेंट का पहला हैट्रिक वहां पर ले चुकी थी और इसी के साथ इस हैट्रिक लेने के बाद भी बल्लेबाजी करने के लिए इमरान यहां पर आते हुए सही रन के निशान पर खेलने के लिए तैयार। 2 नंबर जर्सी पहनते हुए महरूफ आखिरी 3 गेंद पर सफलता वहां पर अच्छी तरफ से गेंदबाज किया था और देखना पड़ेगा कि आखिरी गेंद इस बार रिवर्स स्वीप खेला और स्वीप करने के बाद गेंद जाते हुए डिक्लेयर एरिया के निशान पर की करीब जो फील्डर थे फील्डर के हाथों पर गई गेंद और एक रन बल्लेबाजी के पास मौका था प्राप्त करने का। इस एक रन के साथ रन संख्या यहाँ पर बनते हुए 20 ऑन द बोर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सेकंड ओवर। वहाँ पर लंबी गेंदबाज करने के बाद मैरफ की केवल 9 रन दे चुके थे। इन्होंने बल्ले पर केवल 3 या 2 वहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन वाइड की तरफ से 6 या 7 वहाँ पर रन इनकी बल्लेबाजी टीम को मिल चुका है। इन 2 ओवर समाप्त करने के बाद 20 रन 20 ऑन द बोर्ड। अब बचे हुए 24 गेंद पर 16 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। एग्जैक्ट रन रेट इज 4.00 4.00 पर रन रेट यहाँ पर चलते हुए बचे हुए 24 गेंद पर रन संख्या चाहिए 16। अब देखना पड़ेगा कि किस तरफ के वहां पर गेंदबाजी वहां पर चुनाएगा। बल्लेबाजी इस तरफ के बल्लेबाजियों को रोकने के लिए गेंदबाजी पर अब माइक्रोफोन पर आमंत्रण करना चाहता हूँ मेरे साथी कमेंटेटर सतीश सर को। आइए सतीश सर। So thank you very much, Kabir, and looks like the team challenger, they are really looking in a commanding position, and they're chasing 35 to win this match. So far they control this match, just losing 2 wickets there. Looks like just a 15 more runs required for the victory in the remaining 3 overs. Right arm round the wicket balls. This time a lovely delivery indeed. Rizwan is back in the pavilion in the legation. Little bit correction. Riaz is the batsman looking for the mighty stroke. Of course, he's a very good striker of the ball.
He got one sixer down to deep extra coverage, but this time he wanted to play that one a little bit across the line of delivery. No need to panic in the relegation. No need of going for the big shot whenever settled down in the middle, and but just he wanted to clear the fence, but not really able to read that slowness of the delivery. It is just a change of pace, which is bowled by the bowler. Suhez bowled that Shiva bowls that beautiful slow delivery and is picked up a wicket. Needed such kind of breakthrough if they wanted to back in this game. This time nicely driven right in the gap towards deep extra coverage, but not more than a single in the relegation, and with that single scoreboard Namuzan to 22 on the board and chasing 36 to win this match. That means another 14 more runs required for the victory, and Shreyas is in non-striker, and Imran, this is the one area that need to be very careful, isn't it? That's considering a lot of extra runs, extra deliveries will going to contribute for the victory for the team. One more addition to total addition of that single scoreboard Namuzan to 22, and runout taken place in the non-strikers end. Unfortunately, we thought it might be a declared area, but it's the wicket number 3 which is back into pavilion. There's no proper understanding between the wicket, and that's what the runout taken place here, and quite unfortunately the batsman Shreyas is back into pavilion. Is in the beginning Santosh when is out for Golden Duck. Looks like the team challenge Adyar will go into, definitely they're facing a pressure when they lost the wicket of Santosh, but afterwards they back very well with Riaz and Suhail. They built a partnership in the middle, and some extras which is considered by the opposition team YFC Bajal, so that they managed to get back this match because of that extra, and still it's a match in the hands of challenge Adyar, unless the YFC Bajal need to bowl some good overs and some economical overs. Just the third over is in progress, and scoreboard is still, it's a 22 on the board. 14 more runs required for the victory. Reverse sweep comes into play to pick the single there. With that single, scoreboard moves on to 23 on the board. Just 13 more runs required for the victory, and they got a plenty of deliveries to spare. And again, right arm around the wicket. Bowler bowls to Imran. Imran, what a delivery, magnificent. That was a peach of the delivery there from the bowler Shiva. This is what we're talking about. Of course, you need to try, isn't it? Losing the match is not a big loss, but when you're losing your confidence, self-confidence, it's the biggest loss for any team. And even YFC Bajal looks like they are almost out of this match, but they need to try, need to work hard for each and every one for the opposition team. This is a beautiful delivery there from Imran in the relegation to receive the wicket of a well-settled batsman. Imran is back into pavilion. Imran scored a valuable 5 runs for his team and is back into pavilion. Another scoreboard is 24, 12 more runs required for the victory. 12 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಓವರಿನ ನಂತರ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 3 ಓವರ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ KFC ಕಂಕನಾಡಿ ಹಾಗೂ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಲ ಹಾಗೂ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್. ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ತಂಡದೆಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್, ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ತಂಡದೆಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಕ್ರಾಶಿಂಗ್ ಕವರ್ ಡ್ರೈವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅ ಡೀಪ್ ಕವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೀಜನ್ ಫಾರ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್. ವಿತ್ ದಟ್ ಸಿಂಗಲ್ scoreboard moves on to 25 on the board. That means another 11 runs required from 18 balls. 11 required from 18 balls. Looks like the match is still in the hands of challenge Adyar, unless
any magical bowling performance which is badly required from the bowlers of team YFC Bajal. So highlight of the innings is the bowler Imran of team Challenge Adyar, who picked up a hat-trick, the first hat-trick of this tournament. Then all bowlers picked up 1 wicket each. Santosh picked up 1 wicket. Suhail picked up 1. And Sharif picked up 1 wicket. So altogether the contribution from the bowling side of team Challenge Adyar to put against him into preventing the against him into for the low total of 35. 36 the target. Still they have to get another 11 runs to win this match in 3 overs. Change in bowling. The bowler Ishad is back into attack to bowl that 4th over. It's a very important over for YFC Bajal. I request the team, fielding team, make it fast. I already mentioned that 28 minutes need to complete your 6 overs quota. Please cooperate with the organizers and umpires. Irshad. Fine leg, short mid wicket, deep backward square leg, deep mid wicket, deep long on. There is a deep extra cover. This time try to make a little bit room to play the shot, but this time misjudgment by the fielder, and what could be a certain single because of that misjudgment. Both the batter completed that couple of runs. With that couple of runs, scoreboard numbers on to 26-7 on the board. That means 9 more runs required for the victory. The leg spinner. He's on a deck, lofted, and he got the distance. Oh my goodness, once it looks like the long off and long off fielder will go into clash each other to try to take the catch. Fortunately, just an whisker, they're missing each other. Otherwise, definitely it's going to be a big clash between these two fielders. Outstanding cricketing stroke there from the bat of Safwan. Picking that line and length so quickly and dispatching that one to deep straight long on boundary for a youth 6. Just 3 runs required and going for the single, sacrificing the wicket. Just a suicider, isn't it? No need to run for that. Why should you run when you are very close to the target and it's not a good cricket? Just 3 little runs required for the victory, but the batter Shakir is charging for the run, but rightly so his partner is not interested. Safwan, after hitting a 6, might be thinking about finishing the match in a style with the big shots. Ali matome ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ ಬೈಲ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ. ಆಗಿದೆಯಾ? ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ KFC ಕಂಕನಾಡಿ ಮತ್ತು ಮಸ್ದಕ್ ಕನ್ನೂರು ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಸಜ್ಜಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Sharif is in non-striker and Safwan is a striker, stopping the ball on his legs. This time Safwan in a hurry. The appeal for caught, but ball just came along the ground. And a very good stop there by the bowler in the negation, putting his right leg into the line of that stroke which is played by Safwan. Just a Safwan inside out, but again a loose stroke. Pays the penalty for that. That's just throwing the wicket when they're going very near to the target. And when this is a really irresponsible stroke there from Safwan, but he takes his team very close to the target. Even he lost the wicket, but everybody knows the cricket is game of glorious uncertainty. You can't say anything in cricket, and in a quick times if the bowler is able to get another 2-3 wickets, and then match will go into be a more interesting. And of course cricket is an unpredictable game, and that's what the team YFC Bajal is looking for, because they knows that they can win the match only by picking up wickets. Only by picking up wickets they can back in this game. Otherwise the team challenge will go into win this match
They will going to win the challenge against YFC Bajal. Three runs required for the victory. 3 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಟೀಮ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಡ್ಡಿಯ ತಂಡಕ್ಕೆ YFC Bajal ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. Irshad not given up so far. Again lovely delivery, but ball going down the leg stump outside the line of leg stump. Good over, good comeback here by the bowler after he conceded 8 runs in 2 balls. Then he bowled fantastic 4 deliveries, and now 2 overs remaining. In that 2 overs, they need to get another 3 runs to win this match. Three runs required for the victory. Seven wickets back into pavilion. The needed wicket here for YFC Bajal if they wanted to back in this game. 3 wickets they wanted, but 3 runs which is wanted for challenge Adyar to register the victory. And wait and see, can he do the magic here? Shiva. Can Shiva will going to do the magic here? 3 wickets required for YFC, 3 runs required for challenge. This time bowler's back dry, and there's a fielder very close to the batsman, silly mid on, and there's no chance at all for an 11 balls, 3 runs required for the victory. Shiva is not given up yet, trying for everything. Right arm down the wicket he bowls. Outside line of off stump, beautifully plays it down to deep cover point region for a single. That means just a couple of runs required for challenge Adyar to win this match. But I'm just thinking about that 6 which just came in the previous over. Otherwise, definitely this match is going to be more interesting. And Safwan is the batsman hitting that 6 in the previous over. This time reaching for the delivery, it cuts that one, and he picked up a single for that. Scores are levelled. The scores are level, just a single run required for the victory. This time nicely bowled and missed it completely. Still 1 more run is required for the victory here. 1 more run required for the victory. Shiva balls, and that's it. The winning run coming here for Challenge Adyar in the form of extra, and the congratulations Challenge Adyar, the winning this match against YFC Bajal by 3 wickets. And YFC Bajal, I think they managed very well. They fight very well for that 36 runs. They able to pick 7 wickets of their opposition, but still it's not quite enough for them to win the match, but they won the heart of cricket lovers. So it's a time for announcing the man of the match. Is a man of the match which goes to the man who picked up 4 valuable wickets with 1 hat-trick, Imran, and scored 5 runs. So I request Imran of Challenge Adyar to come and collect your man of the match, and I request our respected Ashraf, the corporator, to come to please report here, sir. Warm welcome for Ashraf to present this the man of the match award medal for Imran. ದಯಮಾಡಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಅಶ್ರಫ್ ಇವರು ನಮ್ಮ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕೊಠಡಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಡ್ಯಾರ್ ತಂಡದ ಇಮ್ರಾನ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಅಶ್ರಫ್ ಲೇಟ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ನಾಸೀರ್ ಇವರೀಗ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಈ ಮೆಡಲನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಇಮ್ರಾನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ we are back into this match. We take a short break here. After a short break, we are coming to the match number 3. Reliance Katipalla versus Red Wings Kunjat Bail. Afterwards, KFC Kankanadi takes on Mazda Kannur. Here is an announcement. Ever Shine Adyar Padav organizing Underarm Cricket Knockout Tournament 2023, the full ground knockout cricket tournament for selected 16 plus 12, the 28 teams in coming New Year, 8th of January, Sunday, and 9th of January, Monday at Adyar Padav Cricket Stadium. Ever Shine Trophy 2023 Season 7. And the winners will go to get cash prize of 25,000 with the Ever Shine Trophy. Second prize 12,000 and Ever Shine Trophy with the attractive trophies and individual prizes. The interested team can enroll their name by paying 2,005 rupees as the entry fees. And day 1, which belongs to leg spin deliveries for 16 teams. Day 2 belongs to any kind of bowling, any action in that second day. 12 teams will go into participate in that day. And knockout cricket tournament, 4 hours tournament, 4 hours tie side to be played for every matches. And lots will be taken and before the commencement, 1 week before the commencement of the tournament. Please support for this tournament. Ever Shine Adyar Padav organizing Ever Shine Trophy 2023 Season 7.
Halo.
I request two teams captain. Please be reported for the toss. The captain of KFC Kankanadi as well as Mazda Kannuru.
Mazda Kannur. Abubakar won the toss. So after winning the toss, we elected to field first Mazda Kannur. And good afternoon, cricket lovers. Once again, welcome back for the day number 1 of the prestigious Nethravathi Trophy 2022, which is proudly organized by friends Shanthinagara in this most beautiful NGC ground here in Faisal Nagar. Everything is set now for the match. It's a very good match between KFC Kankanadi versus Mazda Kannur. And Mazda Kannur, everybody knows that one of the oldest team, one of the top performer of South Kenda district. And in in both format, it means it's masters, even the youngsters. And of course, Riaz Gori, who is home team, who represents. He started his career by playing for Mazda Kannur. And under the leadership of Abubakar, the captaincy of Abubakar, wait and see how well they're going to start their journey in this particular Nethravathi Trophy 2022. At the same time, KFC Kankanadi, they're also the very good teams. They got good gangsters in the side, and they can give the big fight for Mazda Kannur. And just waiting for some good contest between these two teams. The bright sunny afternoon out here, and umpire walking towards the middle, Nasir Bajal, and umpire Sheikh Malali, slowly walking towards the middle for this the very good match. And now two opening batters are walking towards the middle, jersey number 111 and 01. Prajwal is just walking towards striker's end, and Nitin is in non-striker's end. Two opening batters, they came into middle. 6 overs game, please note. 6 overs game, 2 overs going to be a power play. In that power play, mandatory power play, the fielding team need to keep 2 fielders outside the circle, not more than a 2. And wait and see how well the opening batters of KFC Kankanadi will going to exploit the condition of fielding restriction. Coming back to the condition of this cricket ground, some wind is passing, strong wind compared to the morning to afternoon. There's not that much of big wind in the ground, but in the afternoon it looks like we can see that the flags are flying around, and that shows the behind the wicket there is a wind direction, not in front of wicket, and even the square of the wicket we can get the wind direction. Sheikh Malali signaled for the beginning of this match.
Faisal as a scorer is ready here, and bowler will going to start the proceedings. Nasir, experienced campaigner for the side of Mazda Kannur. Nasir, right arm over the wicket balls. This time a straight away loose stroke, checking the stroke in the last moment, and he just pays the penalty for that. And a shackling start here for KFC Kankanadi, but what a dream start here for Nasir. Just look at that one in a replay. The way the batsman checking the stroke. Of course, he just going for the drive. For the last moment, he is seeing that ball is just coming into him. He is checking the stroke for the last moment, and that ball went straight to the hands of bowler. And bowler on his follow throw, not making any mistake at all. So first wicket is back into pavilion. It's a 0 for 1. KFC Kankanadi. This is the last match of the first round, so that you're watching the last match of the first round, and after this second round match will going to begin. And well done Kalakatte will going to take challenge Adyar after this match, so that I request both the teams captain and the players complete the formalities of signatures as soon as possible. Ali well done Kalakatte ಹಾಗೂ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಡ್ಡಿಯರ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ round the wicket again. The wicket number 2 is back into pavilion of KFC Kankanadi. They are in a deep trouble, but bowler Nasir is on hat trick. The first ball itself, Shakir again not really able to keep it down. Sharat, little bit correction, is a man who really chips the ball, but not enough power behind the stroke. Half-hearted stroke, pays the penalty for that, and short back point fielder, cow point fielder in fact takes the catch. And shackling start here for KFC Kankanadi. They lost their wicket number 2 at 0. But what a fantastic start here by Nasir. 2 balls and 2 wickets. That means it straight away is on hat-trick. Already there is one hat-trick which is taken by Imran of Challenge Adyar in the previous match against YFC Bajal. And it's a golden opportunity for Nasir to register his name as a second bowler to take the hat-trick. Wait and see. The new batsman Pritesh will going to face the hat-trick delivery. Oh, that ball is a little bit outside the line of leg stump. Not too far away from that leg stump. This close to that leg stump, and there is no chance at all for any run. Wicket-keeper behind the stump, Abu Bakar, and just removes the bails. And no damage done. Umpire Nasir Bajal back to his position at square leg, and Nasir again bounced this time, tries, and wicket number 3 which is missed out by the mid-on fielder. The fielder down at short mid-on. The Munir, the experienced campaigner down at mid-on, is of course is in a good good position to take the catch, but unfortunately bowler is hitting his farm and slipped out of his hand, and batsman got a life. Again beautifully bowled, perfect delivery, perfect line there from Nasir. What a good start from him. Again the dotted delivery. KFC Kankanadi searching for the right track. They lost 2 wickets for just a single run. It's not a good start for KFC, but a very good start there from us. Appeal for leg before wicket. Umpire says ball is just going down the leg stump, and a fantastic over which is completed by Nasir. 2 wickets, almost 3 wicket in that over. The dropped catches in that mid-on region. Otherwise it's a fantastic start which is given by Nasir in the first over. The good over, just a single run, and he picked up 2 valuable wickets. The outstanding bowling figure for any opening bowler. When you're bowling the power play overs, it's not so easy. Usually the batsmen are dominating the first over, but here is a bowler dominating that first over by picking up 2 valuable wickets. KFC Kankanadi need to come back. Sadiq, one more
some master class bowler. The master who is represented for Mazda Kannur in Legend Trophy as well. Sadiq, the most of the legend player here in this Mazda Kannur. They played for Reliance cricketers. This is the ball him, clean him up. Wicket number 3 is back into pavilion of KFC Kankanadi. They are in a really deep trouble. Absolutely fantastic beginning here for Mazda Kannur through opening bowler. Right on the money, right on the target. It's not so easy when you're bowling your first delivery. It's not so easy to get the ball right on the target. And beaten by the pace of the delivery, KFC Kankanadi, they lost their wicket number 3. And the batsman is back into pavilion. Is Sharath as new batsman walking towards the middle. Is Pritesh is out, and Arun came into middle. Arun left-hand batter, so that the bowler changing the angle. Sadiq is coming round the wicket. Change in field as well. There's a square leg. There's a short mid wicket. Behind the square and in front of square. On at mid wicket. Deep long on. That means 2 fielders actually, mid wicket and deep wideish long on. Sadiq just firing from the commentary box and right arm around the wicket he bowls. And that ball far outside the run of stump. That's a really problem when it's a left-handed combination and the bowler couldn't manage to control that line and length properly. The gifted run coming up here for the team. 2 on the board, and again that ball is in there for a while but is out of the reach of that infielder out there in the short cover point region. Has tried his level best to take the catch. Still the ball is just missing his trying hands, and before the fielder from extra cover to run back to field that one. Ample time for the team, ample time for Arun to pick the couple of runs. Looking for the sweep shot but not really getting the ball into the bat. Ball is hitting his body, but the wicketkeeper Abu Bakar is so quick in the negation to react to that one, and there is no question of any run at all. Score remains on 4 on the board for the loss of 3 wicket. Again that ball is well within the reach of the batter. Look at the electrifying work there from Abu Bakar. He's been outstanding, perfect example for the youngsters. The way he collects the ball in a fraction, just in a blink of eyes, he completes the job, and that shows his accuracy even in this age. It's not so easy because your body's movement will go into little bit problem. You have to react too quickly, but Abu Bakar has been outstanding because he's the one is engaged in cricket for a long time. He's not really missed the cricket at any time in his career, regularly playing the cricket. That's why he's in touch and no problem for him. Drives that one again like a placement. Ball went towards a short mid wicket division. They're looking for the second misfield by the fielder. Good running bit the wicket, just grabbing the opportunity of that misfield, and couple of runs taken there. With that couple of runs, Kobar Namuzan to 6 on the board in the over number 2nd in progress. Final time in this over. Arun is batting on 4 out of 4 deliveries. Facing next delivery and is clean him up, beautifully bowled. Again beaten by the face of the delivery. That is a very much quicker delivery indeed. The batsman across the line tried to swing that one, and he's just choosing the wrong delivery for swinging his bat. Beaten by the pace, and ball is just missing his bat, hitting the stumps. Wicket number 4, which is back into pavilion of KFC Kankanadi, are really looking in a tremendous pressure. What a good start here for Mazda Kannur. The opening bowlers are doing a lot of damages. After that, Nasir is bowled a magnificent over of 1 run and 3 wickets, and then getting the inspiration from that bowler. Sadiq is also bowled very well so far, and the wicket as well in this over, in that over. So 2 overs completed. Struggle time continues here for KFC.
and scoreboard is still remains on 6 on the board for the loss of 4 wicket. No change in bowling. Nasir to continue, and quite understandable. Abu Bakar knows that he is the one who picked up 3 valuable wickets in the first over. Why can't ask him to continue and bowl the second overs? Because 2 bowlers has got opportunity to bowl 2 overs, and 4 bowlers can bowl 1 over each. Nasir bowling with a short run up. After that power play, spread out field, left arm around the wicket. He bowls this time straight to the answer field. A chance of run out, but the throw is not up to the mark, and that's why the batsman completed that quick single. And with that single, he's off the mark after a long time. Nitin is out of the strike. He came as an opener for the side, but unfortunately, just watching the wickets are tumbling in front of him. Again, reverse sweep comes into play. Intelligent cricket there from the new batsman Manish, and with that single scoreboard Namuzan to 8 on the board. 8 for the loss of 3 wicket, 4 wicket in fact, in the over number 3 in progress, with the jersey number 33. Left arm bowls this time, chips that one, but out of the reach of the fielder at cow point region. Cow point fielder, and run across his left to field that one again. The batter has got ample time to complete that couple of runs, and with that couple of runs, scoreboard Namuzan to double figure, 10 on the board for the loss of 4 wickets. Slowly and steadily, these 2 batsmen try to get some runs in this particular over. This time again, chip that one. It was intelligent cricket. Again, they're running hard. Again, they're coming back for the second. Abu Bakar trying for the run out, but not quite enough. Excellent running between the wicket. Intelligent cricket there from the batsman Nitin in the relegation, chipping the ball right in the gap, and not really allow the fielder to come close to that one, and because of that they got a couple of runs. With that couple of runs, scoreboard moves on to 12 on the board. 12 for the loss of 4 wicket. So Mazda-Kannur, we are talking about the history of Mazda-Kannur. They got a fantastic record in lots of Underarm cricket, Urva cricket ground, winning the Masters U Sharma Memorial Trophy, UFC Trophy. This time ball is in there, and again the drops that one by the long off fielder, and one more wicket is back into pavilion. Wicket number 5, which is back into pavilion of KFC. Hadimoru 13. Sunil is a new batsman in. Nitin. Right arm, left arm, round the wicket he balls, beautifully bowled. That ball just passing that leg stump. One more dotted delivery. And after completion of over number 3, searching for the right track, and KFC Kankanade still struggling in the middle, able to score just 13 runs by losing 5 wickets, and wait and see how well they were going to come back, bounce back in remaining 3 overs. I think a lot of hard work which is required from the batters of KFC Kankanade, and but Mazda-Kannur definitely they're winning that first 3 overs by bowling some good overs. Wait and see the kind of batting and strategy from that team KFC Kankanade, and wait and see how much the Kannur will going to continue that performance in the remaining 3 overs. For that remaining 3 overs, I would like to invite once again my friend Mr. Kabir to take over the microphone in our national language, Hindi. Thank you.
धन्यवाद इस वक्त सतीश जी को। और फिर से यहाँ पर मैच को आरंभ होते हुए 3 ओवर समाप्त करने के बाद रन संख्या पर रुक चुका है 15 रन पर समाप्त। 14 रन पर इस वक्त रुक चुकी थी 13 रन पर। अब इस ओवर पर 2 रन बन चुका है एक विकेट के साथ। पहला गेंद समाप्त करने के बाद इस वक्त गेंदबाजी करते हुए सादी का इस नेत्रवती चैंपियंस ट्रॉफी 2022 चलते हुए मैच नंबर 4 पहला इनिंग्स यहाँ पर शुरुआत होने के बाद 3 ओवर 3.1 ओवर इस वक्त समाप्त करने के बाद रन संख्या यहाँ पर 15 रन बन चुका है 5 विकेट के नुकसान पर। अब गेंदबाजी पर सादी गेंदबाज करने के लिए स्ट्राइक रन के निशान पर खिलाड़ी नितिन और नॉन स्ट्राइक रन के निशान पर सुनील। नितिन आरंभिक खिलाड़ी थे, अब तक रुककर बल्लेबाजी कर रहा है। देखना पड़ेगा कि बचे हुए गेंद पर किस तरफ की ओर रन बनता है। रन इस वक्त चाहिए, वो किस तरफ बने वो नहीं चाहिए, लेकिन रन बननी चाहिए। वो विपक्षी टीम पर एक बलाढ्य बैटिंग लाइनअप है, इसको मद्देनजर रखते हुए रन यहाँ पर बननी चाहिए। अब कुछ हद तक वहाँ पर टेक्निकल इशू करने के बाद फ्रांस शांतिनगर प्रस्तुत करते हुए नेत्रवती ट्रॉफी 2022 शानदार तरीके से यहाँ पर आयोजन करते हुए इस टूर्नामेंट का तीसरी मैच यहाँ पर चलते हुए आज का दिन अतिरथी महारथियों के साथ रिबन कट करने के बाद एक NCG नेत्रवती क्रिकेट ग्राउंड की एक लहराते हुए झंडे के साथ इस टूर्नामेंट का यहाँ पर उत्साह बढ़ती जा रही है। तीसरी मैच इस वक्त शुरुआत, चौथी मैच इस वक्त KFC कंकनाडी मजदा कन्नूर के बीच यहाँ पर चलते हुए 3.1 ओवर समाप्त करने के बाद 15 रन बनते हुए 5 विकेट के नुकसान पर। अब दबाव कुछ हद तक बल्लेबाजी के पास वहाँ पर रखते हैं। इस बार गेंद को चलने की जल्दबाजी थी, लेकिन जोरदार अपील थी और अंपायर का कोई इशारा नहीं और बल्ले का अंतिम क्षण पर बल्ले का लगाने के बाद और समाप्त वहाँ पर 22 का इशारा दे चुका है अंपायर ने। और इसी के साथ 16 रन 16 ऑन द बोर्ड। बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं थे, वहां पर विकेट कीपर ने तो गेंद को मिस किया था। इसी के साथ 1 रन दौड़ कर प्राप्त कर इस बार गेंद को ड्राइव किया ऑन साइड के निशान पर गेंद जाते हुए और ठीक तरीके से शायद फील्डर गेंद को कलेक्ट किया था, शायद ठीक तरीके से वहां पर थ्रो किया था गेंद। वहां पर नॉन स्ट्राइक रन के निशान पर जो खिलाड़ी थे, इन खिलाड़ियों को खतरा मान सकते हैं, लेकिन अब इस वक्त सुरक्षित बल्लेबाज क्रीज पर पहुंचते हुए चौथी बार गेंदबाज इस बार गेंद को ऑन साइड ऑफ साइड के निशान पर खेले। वहां पर फील्डर मौजूद है, 1 रन वहां पर मिलेगा, दूसरा रन वहां पर दूसरी रन मिलेगा जरूर। कुछ हद तक ऐसा लग रहा था कि बल्लेबाज दोनों 1 रन में संतुष्ट होगा, लेकिन थोड़ी सी मिसफील्ड करने के वजह इसका फायदा उठाते हुए दूसरे रन के ओर भागते हुए 2 रन वहां पर प्राप्त कर चुका है। इन 2 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ते हुए 19 रन इस बार गेंद लॉन्ग द कारपेट है। परिवर्तन के दौर पर वहां पर स्लोअर वन गेंद रख चुके थे इन गेंदबाजी ने और इसी के साथ बैट्समैन यहाँ पर बीट होते हुए डॉटर बॉल बिंदी गेंद यहाँ पर साबित होते हुए आखिरी बार गेंदबाजी पर सादिक इस बार गेंद को आउटसाइड के पर उछाला, लेकिन 30 गज एरिया के अंदर जो फील्डर थे वहां पर कैच को ले चुके हैं और इसी के साथ 6 विकेट्स हैज बीन फॉलिंग डाउन हियर। इसी के साथ 6 विकेट यहाँ पर गिर चुका है KFC कंकनाडी के लिए और इसी के साथ रन संख्या यहाँ पर रुकते हुए 19 रन पर 19 ऑन द बोर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 4 ओवर लॉस ऑफ 6 वैल्यूएबल विकेट्स। 4 ओवर समाप्त करने के बाद 19 रन पर 6 विकेट यहाँ पर खोलते हुए एक नुकसान के साथ यहाँ पर बल्लेबाज दिखाई दे रहे हैं, दबाव के साथ अंडर द प्रेशर इस वक्त बल्लेबाजी दिखाई दे रहे हैं KFC को निकल के, क्योंकि पहला ओवर पर 2 अनमूल्य विकेट वहाँ पर प्राप्त हो चुकी थी और इसके बाद दूसरी ओवर पर 2 विकेट और ऐसा लग रहा था कि विकेटों पर विकेट वहाँ पर लगने के बाद दबाव को वहाँ पर ऊपर आने के लिए पूरी तरह से वहाँ पर कोशिश करने के बाद अब तक रन बने 19 रन पर 6 विकेट खोलने के बाद। देखना पड़ेगा कि बचा हुए 12 गेंद पर कितना रन जुड़ पाएंगे विपक्षी टीम के कड़ी स्कोर रखने के लिए। अब गेंदबाजी पर नए गेंदबाज 45 जर्सी नंबर पहनते हुए राइट टर्म और द विकेट इस वक्त गार्ड लेते हुए अंपायर शेख मलाली सर को यहाँ पर पार करने के लिए तैयार। कमेंट्री बॉक्स एंड की ओर से इस वक्त गेंदबाज करने के लिए तैयार
आशु इस बार गेंद अलोंग द कारपेट बिल्कुल जमीन के सारे गेंद को रख चुके थे, केवल कट किया था ऑफसाइड के निशान पर जो फील्डर वहां पर फील करने के से पहले एक रन दौड़कर प्राप्त कर चुका है। इस एक रन के साथ रन संख्या यहाँ पर आगे बढ़ता है 20 ऑन द बोर्ड। दूसरी बार आशु इस बार गेंद को फिर से वहां पर कट किया है, लॉन्ग ऑन वहां पर डीप सीमा रेखे करीब जो फील्डर थे वहां पर दौड़कर गेंद को कलेक्ट किया और इसी के साथ थ्रो किया था स्ट्राइक रन के निशान पर एक रन प्राप्त कर चुका है। तीसरी बार गेंदबाजी पर आसिफ इस बार गेंद को ऑनसाइड के निशान पर खेला, ड्राइव किया, लेकिन वहां पर 30-10 दायरे के अंदर गेंद को वहां पर रुक चुका है। 3 गेंद पर 3 रन वहां पर मिल चुका है और इसी के साथ रन संख्या पर जंप होते हुए 22 ऑन द बोर्ड 22 रन यहां पर बन चुका है। चौथी बार गेंदबाजी पर आसिफ इस बार रिवर्सिप खेला, लेकिन चूंकि वहां पर बल्लेबाज पूरा का पूरा चकमकाता विकेट कीपर ने गेंद का कलेक्ट किया और इसी के साथ डॉटेड गेंद बिंदी गेंद के साथ वहां पर साबित हो रहा है। 4 गेंद खेलने के बाद रन संख्या पर रुक चुका है केवल 22 पर 22 ऑन द बोर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 4 बॉल्स। अब केवल 2 गेंद से देखना पड़ेगा कि इन 2 गेंद पर क्या छक्के या चौके इन बल्लेबाजी की बल्ले पर आएगा ना देखना पड़ेगा। 5वीं बार आसिफ गेंदबाजी पर इस बार गेंद को ड्राइव करने के लिए कोशिश किया था, लेकिन ठीक तरीके से गेंद का कनेक्ट नहीं कर पाए, वहां पर केवल 1 रन मिलेगा जरूर। इस 1 रन के साथ रन संख्या यहाँ पर आगे बढ़ता है 23 ऑन द बोर्ड। अब आखिरी गेंद से आसिफ की इस गेंदबाजी पर केवल 4 रन वहां पर दे चुके थे, आखिरी गेंद बाकी। इस बार गेंद को स्वीप किया, वहां पर फील्डर मौजूद, 1 रन वहां पर दौड़कर प्राप्त कर चुका है। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक लाइन और लेंथ के सारे इस वक्त आसिफ ने गेंदबाज किया था, केवल 5 रन दिए थे और तारीफ करनी चाहिए इस तरफ की वहाँ पर सिचुएशन पर भी वहाँ पर संभलते हुए गेंदबाज किया था अपने लाइन और लेंथ के साथ। 5 रन केवल देने के बाद रन संख्या यहाँ पर जंप होते हुए 24 रन बन चुका है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 5 ओवर। स्कोर कार्ड इज मूविंग ऑन 24 ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ 6 वैल्यूएबल विकेट्स से 5 ओवर समाप्त करने के बाद रन संख्या यहाँ पर रुकते हुए 24 रन पर 6 अनमूल्य विकेट होने के बाद अब केवल 6 गेंद बाकी। देखना पड़ेगा कि अंतिम ओवर को किस गेंदबाजी को यहाँ पर चुनाएगा कप्तान गेंदबाज करने के लिए। अबू बकर फिर से यहाँ पर गेंदबाज करने के लिए तैयार, अपने अनुभवी के साथ वन ऑफ द टॉप मोस्ट एक्सपीरियंस कैंपेनर माना जाता है इन टीम की। अबू का पहला गेंद, इस बार गेंद को ड्राइव किया, ऑन साइड के निशान पर गेंद जाता है, ऑफ साइड के निशान पर गेंद को कलेक्ट किया विद इन द फ्रैक्चर्स ऑफ सेकंड्स। वहां पर रन आउट करने के बाद नॉन स्ट्राइक रन के निशान पर जो खिलाड़ी भाग रहा था इनका यहाँ पर खतरा वहां पर हो चुका है। इस विकेट खोने के बाद 7th विकेट हैज बीन फॉलिंग डाउन, 7 विकेट वहां पर गिर चुका है। केवल रन संख्या वहां पर 24 रन पर रुकते हुए आफ्टर स्कोर ऑफ 24 लॉसिंग द 7th विकेट हैज बीन फॉलिंग डाउन हियर। 7 विकेट यहाँ पर गिर चुका है 24 रन पर। पहला गेंद वहां पर ड्राइव किया था ऑफसाइड के निशान पर, जो फील्डर थे उन्होंने गेंद को तुरंत फील्ड करने के बाद थ्रो किया था गेंदबाजी के वहां पर हाथों पर। गेंदबाजी ने विद इन द फ्रैक्चर्स ऑफ सेकंड वहां पर स्टंप को बेल्स ऑफ ऑन करने के बाद रन आउट करने के बाद वहां पर नॉन स्ट्राइक रन के निशान पर फील्डर थे। इस बार गेंद को साइड के निशान पर उछाला, गेंद टिप्पा करने के बाद जो शतक हाथों पर गई गेंद और फील्ड करने के बाद सीधे थ्रो किया था नॉन स्ट्राइक रन के निशान पर। इसी के पहले 2 रन दौड़कर प्राप्त कर चुका है। इन 2 रन के साथ रन संख्या यहाँ पर आगे बढ़ते हुए 26 ऑन द बोर्ड। नाउ इज अ 4 बॉल इज रिमाइनिंग, 4 गेंद बाकी है। देखना पड़ेगी, इस बार रिवर्सिप किया लेकिन गेंद डिक्लेयर के निशान पर जाते हुए और अंपायर का इशारा 1 रन वहां पर मिलेगा, केवल एकमात्र रन वहां पर मिलते हुए। ऑन द बोर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 5.3 ओवर्स। अब 3 गेंद बाकी है और देखना पड़ेगा कि इन 3 गेंद पर किस तरीके से वहां पर रन बनाएगा अपनी टीम के लिए और विपक्षी टीम के कड़ी संघर्ष स्कोर करने के लिए वहां पर
बचे हुए 3 गेंद पर कई मैचेस हम देखे थे बच्चों अंतिम 3 गेंद पर उछाल कर बल्लेबाजी कर रहा था। आजकल वर्तमान क्रिकेट पर 9-10 नंबर आने वाले खिलाड़ी भी वहां पर उछाल कर बल्लेबाजी करने पर माहिर है और इस बार गेंद को ड्राइव किया था ऑनसाइड के निशान पर, शॉट मिड ऑन के निशान पर जो फील्डर थे गेंद को कलेक्ट किया था वहां पर बल्लेबाज क्रीज पर सुरक्षित पहुंचते हुए और इसी के साथ 1 रन वहां पर लेने के बाद रन संख्या पर रुकते हुए 28 ऑन द बोर्ड। अब 3 गेंदबाज इस बार गेंद को उछालना चाहा लेकिन चुके और विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया। इस बार रनआउट यहाँ पर होते हुए 9 स्ट्राइक रन के निशान पर और सुसाइड अटेम्प्ट इस वक्त करने के बाद अब केवल 2 गेंद बाकी। देखना पड़ेगा कि इन 2 गेंद पर समाप्त। अब अंतिम 1 गेंद मात्र बाकी। स्ट्राइक रन के निशान पर बल्लेबाज हम इस बार गेंद को वहां पर उछालना चाहा लेकिन चुके और इसी के साथ इनिंग्स यहां पर खत्म होते हुए एट द स्कोर ऑफ 28, लॉस ऑफ 8 विकेट्स, 9 विकेट्स और 29 इज अ टारगेट फॉर मस्द कन्नूर। ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಡ್ಡಿಯಾರ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಐ ಲೈಕ್ ಟು ಕಾಲ್ ಟೀಮ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಡ್ಡಿಯಾರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ವೆಲ್ಡನ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದೇನೆ. ವೆಲ್ಡನ್ ಹಾಗೂ ಚಾಲೆಂಜ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೋಂದಾಯಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. और फिर से यहाँ पर आरंभ होता है वह दूसरे इनिंग्स के 29 रन की वहां पर लक्ष्य रखते हैं वह ऐसा। अब इस वक्त ग्रीन सिग्नल मिलते हुए अंपायर के साथ अंपायर शेख मलाली वन ऑफ द टॉप मोस्ट एक्सपीरियंस अंपायर और नज़ीर बजाल इस टूर्नामेंट का यहाँ पर अंपायरिंग का कार्यभार करते हुए अमीन स्कोरर के साथ हमारे साथ जुड़ते हुए लाइव टेलीकास्टिंग पर इरफान बेद्रा के बेद्रा मीडिया के साथ इस बार ड्राइव किया गेंद कौन साइड के निशान पर जाते हुए डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए। जिस तरीके से वहां पर शुरुआत करनी चाहिए था उस तरीके यहाँ पर शुरुआत होते हुए धुएंधार शुरुआत यहाँ पर बल्लेबाज अबूका के साथ
इस अब्बुका के बल्ले के साथ। और इसी के साथ पहला गेंद पर बाउंड्री लगाने के बाद एक धुआंधार शुरुआत यहाँ पर हो चुका है बल्लेबाजी टीम के लिए। 29 रन के लक्ष्य यहाँ पर रख चुकी थी 6 ओवर पर। अब पहला गेंद पर बाउंड्री लगने के बाद थोड़ी सी डिस्ट्रैक्टिव ओपनर्स अब इस वक्त मैदान की बीच यहाँ पर आगे बढ़ता है। वैसे ही नॉन स्ट्राइक रन के निशान पर अब्बुका और नॉन स्ट्राइक रन के निशान पर इरफान गेंदबाजी पर मनीष इस वक्त गेंदबाज करने के लिए तैयार। दूसरी गेंद मनीष गेंदबाजी पर सामना करने के लिए तैयार अबू बकर। पावर प्ले इस वक्त जारी हो चुका है। 2 फील्डर आउटसाइड द सर्कल, एक मेगा श्रृंखला इस वक्त जाने के बाद इस बार सेंसिबल क्रिकेट, एब्सोल्युटली परफेक्ट सेंसिबल इस वक्त क्रिकेट खेलने के बाद पहला गेंद पर उछाल दिया था ऑनसाइड के निशान पर 4 रन के लिए। और इसी के बाद वहां पर इंटेलिजेंट ऑफ क्रिकेट यहाँ पर इस वक्त खेलते हुए अबू का सेंसिबल क्रिकेट यहाँ पर खेल चुका है। और इसी के साथ 5 रन यहाँ पर बनते हुए 2 गेंद सामना करने के बाद तीसरी बार मनीष गेंदबाज करने के लिए तैयार। इरफान इस बार गेंद को कट किया है, ऑफसाइड के निशान पर गेंद जाते हुए और थर्ड मैन के निशान पर गेंद जा चुकी थी और वहां पर फील्डर ने गेंद को कलेक्ट किया और इसी के साथ 1 रन मिलेगा जरूर। इस 1 रन के साथ रन संख्या यहाँ पर आगे बढ़ता है। 6 ऑन द बोर्ड, वाइडिश लॉन्ग ऑन के निशान पर एक फील्डर वहाँ पर मौजूद और डीप स्क्वायर के निशान पर एक फील्डर इस बार गेंद को उछालना चाहा लेकिन चुके और गेंद यॉर्कर लेंथ गेंद वहाँ पर डालने के बाद गेंद को ठीक तरीके से गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए और इसी के साथ बिंदी गेंद साबित होते हुए इस इनिंग्स का पहला बिंदी गेंद डॉटेड गेंद यहाँ पर। इसी के साथ 5वीं गेंद इस वक्त मनीष गेंदबाजी पर बल्लेबाज अबू का के लिए वन ऑफ द टॉप मोस्ट एक्सपीरियंस कैंपनर माना जाता है अबू का। इस बार गेंद को उछाला लेकिन गेंद वहाँ पर गेंद के नीचे वहाँ पर फील्डर थे और प्रोटेक्शन इज देयर, फील्डर मौजूद थे और गेंद को कलेक्ट किया। इसी के पहले बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। इन 2 रन के साथ यहाँ पर रन संख्या आगे बढ़ते हुए 8 ऑन द बोर्ड, 8 रन यहाँ पर बनते हुए पहला ओवर की आखिरी गेंद। इस बार गेंद को उछाला, गेंद जाते हुए स्ट्राइट ऑन द ग्राउंड ऑन बॉस ऑन द टॉप, गेंद को लॉन्ग ऑफ के निशान पर लॉन्ग ऑन के निशान पर उछाला और गेंद जाते हुए 4 रन के लिए। इस चौके के साथ पहला ओवर यहाँ पर समाप्त हो चुका है। रन संख्या यहाँ पर बनते हुए 12 ऑन द बोर्ड, एग्जैक्ट 12.00 12.00 पर इस वक्त रन रेट के साथ बल्लेबाज करते हुए पहला ओवर समाप्त करने के बाद 12 रन यहाँ पर बन चुके हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट ओवर स्कोर कार्ड इज मूविंग ऑन 12 ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ नो लॉस विकेट। और इसी के साथ दूसरी ओवर गेंदबाज करने के लिए तैयार। पहला 2 ओवर पावर प्ले माना जाता है। इन पावर प्ले का यहाँ पर पूरा का पूरा फायदा उठाते हुए अबू का 2 चौके के साथ इस वक्त नॉन स्ट्राइक रन के निशान पर बल्लेबाज कर रहे हैं। और देखना पड़ेगा कि नए गेंदबाज 111 जर्सी नंबर पहनते हुए नितिन इस वक्त बल्लेबाज करने के लिए तैयार। स्ट्राइक रन के निशान पर इरफान, स्ट्राइक रन के निशान पर इस बार गेंद को चला, गेंद जाते हुए डीप मिड विकेट के बाहर 4 रन के लिए ऑन बाउंस ओवर द टॉप। और इसी के साथ 4 रन यहाँ पर बन चुका है। पिछली ओवर पर अबू का 2 चौके यहाँ पर इनके बल्ले से आ चुका था और इस वक्त इरफान बल्लेबाज यहाँ पर करते हुए उछाल कर बल्लेबाजी करने के लिए यहाँ पर तैयार होते हुए और दूसरी गेंद नितिन गेंदबाजी पर इस बार गेंद को स्वीप किया, गेंद के नीचे वहाँ पर फील्डर थे लेकिन थोड़ी सी मिस फील्डिंग और इस गेंद को वहाँ पर ठीक तरीके से कलेक्ट नहीं कर पाए और इसी के साथ बल्लेबाज ने दौड़कर 1 रन प्राप्त कर चुका है। इन 1 रन के साथ रन संख्या यहाँ पर जंप होते हुए 17 यहाँ पर हो चुका है। अब 2 गेंद समाप्त होने के बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सेकंड बॉल 17 ऑन द बोर्ड, इस बार गेंद को उछालना चाहा लेकिन चूंकि मिड ऑफ द बैट कनेक्ट नहीं और इसी के साथ गेंद सीधे वहां पर 30-10 दायरे के अंदर मिड ऑफ की शॉर्ट मिड ऑफ की निशान पर गेंद जा चुकी थी और इसी के साथ कैच आउट होने के बाद अबूका की बार यहाँ पर खत्म होते हुए और इसी के साथ पहला विकेट यहाँ पर प्राप्त किया है गेंदबाज KFC के अंकनाड़ी की गेंदबाजी के साथ और इसी के साथ पहला विकेट यहाँ पर गिर चुका है। रन संख्या यहाँ पर रुकते हुए 17 रन पर 17 ऑन द बोर्ड आफ्टर लॉस ऑफ 1 वैल्यूएबल विकेट्स। अब 17 रन पर 1 विकेट यहाँ पर गिरने के बाद गेंदबाजी की टीम पर
अब गेंदबाजी करते हुए नितिन चौथी गेंद इस वक्त गेंदबाज करने के लिए इस बार गेंद को ड्राइव किया लेकिन वहां पर शॉर्ट मिड ऑन के निशान पर जो फील्डर थे वहां पर गेंदबाज और गेंद वहां पर जाकर इनकी हाथों पर रुक चुका है। अब पांचवी बार नितिन कमबैक एब्सोल्युटली फैंटास्टिक कमबैक यहां पर होते हुए नितिन के लिए पांचवी गेंद इस वक्त गेंदबाज करते हुए इस बार गेंद को ड्राइव किया वहां पर स्वीप किया था लेकिन वहां पर फील्डर थे गेंद डायरेक्ट जाते हुए इनका हाथों पर गई गेंद वहां पर विकेट कीपर की दस्तान पर गेंद को थ्रो किया था। विकेट कीपर ने वहां पर रनआउट की खतरा के लिए वहां पर कोशिश करा था लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर सुरक्षित थे लेकिन नॉन स्ट्राइक रन के निशान पर जो फील्डर वहां पर बल्लेबाजी थे उन्होंने दौड़ लग चुकी थी लेकिन स्ट्राइक रन के निशान पर वहां पर नहीं कॉल दिया था। इस बार ऑन साइड के निशान पर गेंद जाता हुए और इसी के साथ स्टंप आउट गेंद ऑन साइड के निशान पर जाते हुए वहां पर इतना तेजी के साथ विकेट कीपर ने गेंद को वहां पर स्टंप आउट किया है और इसी के साथ दूसरी विकेट यहां पर गिर चुका है। इस ओवर पर दूसरी सफलता के साथ नितिन गेंदबाजी पर पहला गेंद वहां पर पहला विकेट वहां पर मिल चुकी थी कैच आउट की तरफ से अब दूसरी विकेट स्टंप आउट की तरफ से यहां पर मिलते हुए इन दो विकेट गिरने के बाद रन संख्या पर रुकते हुए केवल 17 रन पर 17 ऑन द बॉल लॉस ऑफ 2 वैल्यूएबल विकेट्स बैक टू बैक दो विकेट यहां पर गिरने के बाद अब इस वक्त कमबैक थोड़ी सी यहां पर होते हुए आसान का सांस भी यहां पर मिल रहा है गेंदबाजी टीम की कप्तान के लिए और इसी के साथ दो विकेट यहां पर गिरने के बाद ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಕೆಯಾಗಿ ವೆಲ್ಡನ್ ಹಾಗೂ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಡ್ಡಿಯರ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ನಾಯಕರು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ। ವೆಲ್ಡನ್ ಹಾಗೂ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಡ್ಡಿಯರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಕೆಯಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ। अब 2 विकेट यहाँ पर लेने के बाद थोड़ी से मैच पर यहाँ पर ऑप्सी आते हुए अब देखना पड़ेगा कि किस तरफ के वहाँ पर फिर से विकेट टू विकेट गेंदबाज किया तो शायद वहाँ पर विकेट वहाँ पर मिल गया तो फिर से मैच पर आ सकता है अब संभावना है। और देखना पड़ेगा कि तीसरी ओवर गेंदबाजी करने के लिए अरुण नए गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज करने के लिए तैयार रहा। लेग स्पिन गेंदबाज इस बार और इसी के साथ यू मिस इट हिट इट गेंद टिप्पा करने के बाद सीधा जाकर पैरों के अंदर लगाने के बाद वहां पर सीधे विकेट के वहां पर स्टंप के पास गेंद को टकरा चुकी थी और इसी के साथ बेल्स ऑफ होते हुए विकेट नंबर 3 यहाँ पर गिर चुका है। इन 3 विकेट गिरने के बाद केवल रन संख्या यहाँ पर रुकते हुए 17 रन पर 3 विकेट यहाँ पर गिर चुका है। 17 for 1, 17 for 2, 17 for 3 इस वक्त विकेट वहाँ पर गिर चुका है। अब विकेट लेनी चाहिए था गेंदबाजी टीम को अब तक वहाँ पर सही सफलता के साथ गेंदबाज कर रहा है। इज्जू इस वक्त बल्लेबाज करने के लिए नए बल्लेबाज स्ट्राइक रन के निशान पर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार 17 नंबर जर्सी पहनते हुए टीम की स्कोर यहाँ पर रुक चुका है 17 पर। देखना पड़ेगा कि इज्जू क्या 17 पर कतरा मान सकता है या नहीं देखना पड़ेगा। अब 10 नंबर जर्सी पहनते हुए अरुण दूसरी गेंद इस बार फुल टॉस गेंद और इसी के साथ नो बॉल। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अ बॉलिंग टीम। इस तरह की यहाँ पर गलती को वहां पर रुकना ही चाहिए था। अब इस टूर्नामेंट का पहला नो बॉल माना जाता है और इसी के साथ फ्री हिट भी मिलेगा बल्लेबाजी टीम के लिए। अब देखना पड़ेगा कि इस फ्री हिट पर क्या जो जोरदार स्ट्रोक लगाएगा या नहीं देखना पड़ेगा। अब फ्रंट फुट लेकर वहां पर गेंद को उछालना चाहा लेकिन गेंद शॉर्ट मिड ऑन की निशान पर गेंद जा चुकी थी लेकिन इनकी हाथों पर जाने के बाद गेंद को वहां पर मिसफील किया था। वहां पर इस मिसफील को वहां पर फायदा उठाते हुए 1 रन दौड़कर प्राप्त कर चुका है। इस 1 रन के साथ वहां पर रन संख्या जाते हुए 19 ऑन द बोर्ड। अब बल्लेबाजी पर अच्छी तरफ से गेंदबाज किया था नासिर ने। अब इस वक्त बल्लेबाजी करने के लिए तैयार बाया हाथ की खिलाड़ी नासिर फील्डिंग में परिवर्तन यहाँ पर करते हुए क्योंकि बाया हाथ और देना हाथ को वहाँ पर संभालना है तो थोड़ी सी वहाँ पर फील्डिंग को परिवर्तन करना ही चाहिए। अब परिवर्तन के दौर पर इस बार गेंद को चला गेंद जाते हुए इट्स अ बिग गेंद मिड ऑफ द बैट कनेक्ट किया और गेंद को उछाल दिया था डीप मिड
विकेट के ऊपर 6 रन के लिए इस छक्के के साथ वहां पर फिर से कम बैक होते हुए मजदा कन्नौर के लिए इट्स स्ट्रांगली कम बैक। इस बार गेंद को चला, गेंद जाते हुए लॉन्ग ऑन की निशा, लॉन्ग ऑफ की निशा पर एक टप्पा करने के बाद गेंद वहां पर फील्डर थे, इन फील्डर के हाथों पर गई गेंद और इसी के साथ रन आउट वहां पर होते हुए कुछ हद तक स्ट्राइकर और नॉन स्ट्राइकर की निशा पर जो खिलाड़ी है इनके तालमेल कुछ हद तक नहीं लगाने के बाद मिसकम्युनिकेशन के साथ इस वक्त रन आउट यहाँ पर होते हुए नॉन स्ट्राइकर की निशा पर खेलने वाले खिलाड़ी थे, लेकिन वहाँ पर रन आउट होते हुए रिटर्न बैक टू द पेविलियन। अब इस वक्त इस पिछली छक्के के साथ इट्स स्ट्रांगली बैकअप फॉर द टीम। ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುವಿಕೆಗಾಗಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಡ್ಯಾರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ವೆಲ್ಡನ್ ಕಲಗಟ್ಟೆ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ವೇದಿಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕೆಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುವಿಕೆಗಾಗಿ ವೆಲ್ಡನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ನಾಯಕರು ವೇದಿಕೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದೇನೆ. This is the last call for Weldon and Challenge Adyar. Please come into the commentary as soon as possible. This is the last call. और इस विकेट के साथ यहाँ पर विकेट गिर चुका है, 4 विकेट यहाँ पर गिर चुका है 26 रन पर। अब केवल 3 रन की दूरी देखना पड़ेगा कि इन 3 रन कौन बने, किस खिलाड़ी बने। इस बार गेंद थोड़ी सी हवा में लगाने के बाद वहाँ पर क्या चोट हो चुका है और इसी के साथ विकेट नंबर 5 यहाँ पर गिरते हुए 5th विकेट हैज बीन फॉलिंग डाउन हियर और इसी के साथ रन संख्या यहाँ पर रुकते हुए केवल 26 रन पर 3 रन और चाहिए। शायद पिछली गेंद पर वो छक्के नहीं मिला तो गेंदबाजी टीम पर फिर भी मैच को वहाँ पर ऑप्शन आ सकते थे, लेकिन क्रिकेट हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि अंतिम 1 रन पर अंतिम 1 क्षण पर भी क्रिकेट बदला हो सकता है। अब देखना पड़ेगा कि नए गेंदबाज शेरू इस वक्त नए बल्लेबाज शेरू इस वक्त बल्लेबाजी करने के लिए तैयार रहा। अब इस वक्त इन ओवर पर 2 विकेट यहाँ पर प्राप्त किया है इन गेंदबाजी ने और अंतिम गेंद को सामना करने के लिए शेरू इस वक्त राइट हैंड बैट्समैन इस बार गेंद को ड्राइव किया ऑन साइड की निशा पर 1 रन वहां पर मिलेगा जरूर। इस 1 रन के साथ रन संख्या यहाँ पर जाते हुए अब केवल 2 रन चाहिए जीत को हासिल करने के लिए। बचे हुए 18 गेंद पर 18 बॉल रिमाइनिंग टू विन दिस मैच। अपने अगले हंत को प्रवेश करने के लिए मस्जिद कन्नौर के लिए 18 गेंद बाकी है, 2 रन चाहिए मैच को जीत कर अपने अगले हंत को प्रवेश करने के लिए। देखना पड़ेगा कि इन 2 रन किन बाजी ने करेगा और सही रन की निशा पर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार रहा शेरू और नॉन सही रन की निशा पर बल्लेबाजी करते हुए इस छक्के के साथ नसीर इस वक्त बल्लेबाज करते हुए नॉन सही रन की निशा पर इस बार पहला गेंद को स्वीप किया डिक्लेयर की निशा पर गेंद जाते हुए 1 रन वहां पर मिलेगा सर। अब मैच रन बराबर होते हुए स्कोर हैज बीन टाइड हियर। स्कोर लेवल 1 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। बचे हुए 17 गेंद पर 17 बॉल इज रिमाइनिंग, 1 नीड टू विन दिस मैच। और इस बार फिर से वहां पर स्वीप किया, गेंद वहां पर जाते हुए गेंद के नीचे कोई फील्डर नहीं था और इसी के यहाँ पर 1 रन दौड़कर प्राप्त कर चुका है। इस 1 रन के साथ मस्जिद कन्नौर हैव वॉन द मैच एंड एंटरिंग टू द नेक्स्ट लेवल। इस 1 रन के साथ वहाँ पर मस्जिद कन्नौर ने मैच को जीतकर अपने अगले हंत को यहाँ पर प्रवेश कर चुका है। ऑल द बेस्ट, कंग्रेचुलेशन टीम मस्जिद कन्नौर एंड ऑल द बेस्ट टीम KFC Kankanadi for your future games and thank you. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪುರಸ್ಕಾರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಸ್ಜಿದ್ ಕನ್ನೂರು ತಂಡದ ನಾಸೀರ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ವೇದಿಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ವೆಲ್ಡನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಡ್ಯಾರ್ ಈ ತಂಡದ ನಡುವೆ 2 ತಂಡದ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಾಸೀರ್ ಅವರ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಅಶ್ರಫ್ ಈ ಊರಿನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಶ್ರಫ್ ರವರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಎಸ್, ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ದಾಂಡಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ನಾಸೀರ್. ಅದೇ ರೀತಿ अब
माइक्रोफोन पर आमंत्रण करना चाहता हूँ जो कि आगे का मैच वन मोर हाई वोल्टेज मैच चैलेंज टेकिंग अगेंस्ट वेल्डन कलगट्टे। इसका मैच को एक बलाढ्य बैटिंग और बॉलिंग डिपार्टमेंट के बीच यहाँ पर मैच होना बाकी है और देखना पड़ेगा कि किस और माइक्रोफोन पर आमंत्रण करना चाहता हूँ जो कि मेरे साथी कमेंटेटर सतीश सर को। हाय सतीश सर। I request the captain of challenge to report here. Ali challenge. ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ 5 ಓವರ್ನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. 1 ಓವರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. 4 ಬೌಲರ್, ಒಬ್ಬ ಬೌಲರಿಗೆ 2 ಓವರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. 1 ಓವರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ. So please note both the teams captain that the second round match will be of 5 overs. The 1 over which is deducted as far as the shortage of time is concerned, and our organizer decided to deduct 1 over, and we have very respected Ashraf is a corporator of is a local corporator. So on behalf of all organizers and on behalf of all cricket lovers, we would like to welcome him for this prestigious Nethravathi Trophy 2022, which is proudly organized by Friends Shanthinagara. So just like my friend Kabir is mentioning about, this is a match is between a very good batting department versus a very good bowling department. Coming back to these two teams, as well done Kalkate, they got a very good bowling department because in the first match they defeated New Boys Faisal Nagar in the opening match, the inaugural match, and then Challenge Adyar, they defeated the very strong opponent YFC Bajal. And because of that, these two teams, I think, is definitely going to be a very good battle between these two teams to get the place in the semi-final of this prestigious cricket tournament. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಅಶ್ರಫ್ ಇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ಮಸ್ದಾಕ್ ಕನ್ನೂರು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಒಂದು ಬೈಕ್ನ ಕೀ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದವರು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ತಂದು ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪಲ್ಸರ್ ಬೈಕಿನ ಒಂದು ಕೀ ಬಿಸಡಿ ಹೋಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದವರು ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ತಂದು ತಲುಪಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So 5 hours match and everything is ready for the big match, and this is the first quarter-final match of this prestigious Nethravathi Trophy 2022, and which is proudly organized by Friends Shanthinagara in this most beautiful Nethravathi cricket ground here in Faisal Nagar. And hot afternoon out here, and but still we're having a very good condition and a strong breeze which is passing in the middle of the ground, which is giving a lot of the relaxation for the players as well as for the umpires. After winning the toss, captain of Challenge Adyar elected to field first so that the opening batters of Weldon Kalakata came into middle here, and wait to see how well these two opening batters will go into laid the foundation. The previous match,
In the previous match, Anif, who played a magnificent innings for his team, and because of his very good innings, he's got a Man of the Match award. And wait and see how we're going to continue his form in this match. The Anif certainly is a man who is looking forward in this particular match against Team Challenge Adyar. Team Challenge Adyar, they got some experienced campaigner, especially Santosh, who is behind the stumps, a very experienced campaigner. And Imran at square leg is the man of the match in the previous match, who picked up a hat-trick wicket. We have Riaz down at short mid-on. One more very, very talented and experienced campaigner. So that means this is a battle between experienced cricketer versus the youngster cricketers of team well done Calcutta. Here is the first ball. Right arm over wicket, drives that one, but not really having that much of timing behind that stroke. Before that, Riaz, who is running towards his back, to fields the ball, ample time for the batter to complete the single. So they're open the account with that single. And Ifaz is off the mark with a single. That brings Hanif into strike now. Hanif takes a fresh guard from umpire Sheikh Malali. And at square leg, Nasir Bajal, the two very good umpires for this wonderful tournament, Nethravathi Trophy 2022. Suhail bowling away from us. Right above the wicket, swings that one and swings that one powerfully. One bounce over the rope for 4 runs. Just like I mentioned about Anif, is the kind of batsman who loves to play in this power play over. You know exactly where the fielder is. The fielder is there in the deep long on. There's a vacant area. There is no fielder at the deep backward square leg and deep mid wicket, and he's just picking that gap so beautifully. You can't bowl that line to the caliber of their batsman like Anif, who is very strong off his legs. Beautifully chips that one down to deep mid wicket boundary for 4 runs. And welcome boundary coming up here for team well done Kalakate. Suhail. Right, I'm over the wicket. Again that wrong line. The punishment which is came from umpire Sheikh Malali, not from the bat, because of that ball is going outside the line of leg stump further away. And with that single scoreboard, Namuzan to 6 on the board. 6 without loss of any wicket. What a match is going between these two teams. Suhail, right arm over the wicket, bows beautifully bowled. Appeal for leg before he get very confident appeal. But umpire Sheikh Malali is not interested to raise his finger, but he's very much interested to lift his legs to give the leg bite decision for our scorer. And one more addition to total with that addition of that single scoreboard. Namazan to 7 on the board. Might be the ball little bit going down the leg stump in that occasion. Again swings that one beautifully down to square leg region, and we got fielded by Imran. He's a very good fielder, the experienced campaigner in the side of team Challenge Adyar. He fields the ball and ample time for batsman Ifaz to complete the single. So with that single scoreboard, Namozan to 8 on the board. A very good score in the first over itself, and quite understandable because of that power play overs. The man who batted brilliantly in the previous match, Anif, has got a very good start in this match as well. He's batting on 4. Now he's back on strike. Suhail bowling away from us. Right arm over the wicket, bows again nicely bowled. This time ball is came along the carpet, and leg by call by umpire. Second leg by of this over with that extra scoreboard. Namuzan to 9 on the board without loss of any wicket. First over is in progress. So very good crowd here in this evening of Nethravathi Trophy 2022. The time is exactly 15, but still it's a fantastic weather condition. This time swings hard, but unfortunately we're going to get just a couple of runs for that. Before the fielder, Imran running back and fields the ball down a deep backward square leg. Again, that not a good line to ball, and batsman taking a full advantage of that bad delivery. So first over completed. After completion of first over, the very good start given there by the opening batters of Weldon Kalakate. They managed to get 10 runs, and that's only because of Anif. 11 runs is a little bit correction. 11 in the first over. And that was a good start here for Weldon Kalakate. So well done by these opening batters for the first over for Weldon Kalakate. For the next match, I once again remind the two teams which is going to play the second quarter final of this prestigious tournament. Red Wings
Kunjat Bail takes on Mazdak Kannur. So that I request both the teams, captain and the players, complete the formalities of signatures as soon as possible. ದಯಮಾಡಿ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲು ಹಾಗೂ ಮಸ್ದಕ್ ಕನ್ನೂರ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಮಯದ ಅಭಾವಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಇಮ್ರಾನ್ ಬ್ರಾಟ್ ಇನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ and Imran, I already mentioned, is the only one player who picked up a hat-trick in this tournament in the previous match, and he picked a hat-trick against YFC Bajal. Altogether he picked up 4 valuable wickets for his team in the previous match, and wait and see how he'll going to put some pressure onto the batsmen of Challenge Adia. Imran bowling away from us, right arm over the wicket, balls. Drives but not enough power. The fielder does a deep long on, just waiting for that one, charging to his front and takes a wonderful catch. It's a huge wicket for Challenge Adyar, and Imran continuing his bowling performance in this match as well. And it just a toss that delivery, inviting the batsman to go for the big shot. But in the evening, it's not that much of wind supports that stroke, which is well in front of the wicket, and that's why that ball is not really travels very quickly. And the hero of the previous match is back into pavilion. Hanif is back into pavilion, tried to hit the ball against the wind, but not really getting the distance right. Is caught at deep long on of the bowling of Imran, and is back into pavilion. Replacing him, Batish is one more very good striker of the ball. Batish played a very good acting role in the previous match when it's the partnership is progressing between him and Hanif. He batted very well, sensible knock from him, but once again forcing him to play one more good innings for his team. This condition of the game, they got a very good run on the board, but problem here is that they lost the big wicket of Hanif. Bashit takes a fresh cut from umpire Sheikh Malali. Imran will going to continue from the commentary box, and there is a short backward point, deep cover point, short extra cover, deep long off, and deep long on, deep mid wicket. One fielder at deep backward square leg, short mid wicket. Wicket keeper standing well behind the stump, Santosh. Again went for the reverse sweep, but not really getting that sweet part of the bat. And again Imran, look at the way he's putting some pressure onto the batsmen of the opposition team. Well done Kalakatte, as he bowls a very tidy line and length. Perfect delivery for the new batter as he bowled around midline leg stump, and no question of any run. Imran away from us, right above the wicket, drives that one powerfully. Again a lot of protection has been given in the deep after their power play, so that no question of second run. A good piece of fielding there by the fielder. The very good athletic work from the fielder in the deep in the mid wicket region, almost sprinting to his front, and collects the ball in the fraction. He removes the ball towards the hands of a wicket keeper, and there is no question of a second run. Score moves on to 12 on the board. Imran again bowls again, appeal for leg before wicket, but it's a half-hearted shouts. Santosh is just half-hearted. You know exactly if you're trying for the run out, if a ball misses the stumps, the batsman will going to get the opportunity to cross off for extra run, and rightly so, just using his mind in the occasion. So far it's so outstanding over here from Imran. What a fantastic stuff. And here is again Imran, right arm over the wicket, drives her and crashing extra cover drive, but protection has been given in the deep. Again the good piece of fielding there by the fielder. Ball is just changing the direction, but he managed to judge that one very well to collect that one, and just a single for the batter Bashit, and with that single scoreboard numbers on to 13 on the board. 13 for the loss of one wicket. Imran bowling with the short run up. Away from us, right arm over the wicket, he bowls. Drives that one straight to the hands of fielder, and they're looking for run out, pays the penalty for that. This is not a good thinking there by the fielder, and everyone is shouting to that fielder, why man, why you are throwing the ball? Your job is to stop the runs. We don't want any wicket here. That's all happening in cricket, but nothing wrong with that try from that fielder, isn't it? He wanted to get the wicket by making a run out, but it's not a good throw, actually a good collection, but not a good throw from the fielder. So fantastic over is comes in, and Imran bowled a very quiet over, the much required quiet over ball by Imran after completion of over number 2, searching for the right track, and well done Kalakatte managed to score exactly 14 runs on the board. 14 in the sense they're scoring exactly 7 runs per over.
And 5 overs match in the similar run rate. The projected score will going to be a 7 into 5. That means a 35 runs. The projected score of well done Calicut. And wait and see how well they will going to get that 35. If you're able to get the 35 plus runs on the board, then it's going to be a good score. 2 over na ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 14 run. 1 wicket ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. Santosh brought to the attack. One more very experienced campaigner, very good all-rounder, who got experience of playing for the Gori Young Boys, one of the most popular team, one of the fantastic performer of that team during last 3 years. He's represented for Gori Young Boys, done a great job. So Santosh, wait and see how he'll going to contribute from his bowling. 3rd over, right arm over the wicket to Bashid. Bashid drives that one. Batish picked up a single down deep point there, looking for second and but asking for trouble. The good piece of fielding there, but the fielder is a good return as well from that fielder, and there is no question of any run at all. Scoreboard was on to 15 on the board. Look at the way that the bowlers of Challenge Adyar, they bounce back. The first over is a costly one, 11 runs which is scored, and second over which is bowled by Imran, just 3 runs is conceded, and now Santosh brought into attack. In the first ball he considered just a single. Ifas is on strike. Santosh is on attack. Right arm over the wicket. Ball swings that one. Beautiful shot. But again the fielder is there in the deep backward square. They're coming back for second. Imran looking for the run out and good throw. Good throw coming from Imran. But I think you need to appreciate the effort of the fielder in the deep backward square leg region. Excellent throw coming from the fielder. Shreyas, the fieldsman there in the deep backward square leg, is really done a great job by returning the ball quickly to the hands of Imran, who is standing behind the stumps. But look at the way the Imran having a presence of mind. You know exactly Ifaz is running for the second run. Returns the ball quickly to the hands of Santosh, and Santosh completes the formalities of making that run out. For the next match, I requested 2 teams captain. Already I mentioned KFC, Mazda Kannur as well as Red Wings Kunjat Bail. ದಯಮಾಡಿ 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೀವಿ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿದರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಹಿ ಹಾಗೂ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. Stop that one very nicely towards the fine leg region for a single. So with that single scoreboard numbers on to 17 on the board. 2 very good teams clashing for the places in the semi-final of this prestigious Nethravathi Trophy 2022, which is proudly organized by French Shanthinagara in this most beautiful venue. And look at the crowd here. Absolutely, they're enjoying the game of cricket in this weekend, the Saturday, and hoping for some huge crowd tomorrow, because tomorrow is one of the special day of this cricket tournament. 6 top teams of South Kent district going to clash for the places in the final of this prestigious cricket tournament. Santosh now coming round the wicket. Balls beautifully ball. Away going delivery. Perfect delivery to ball to the new batter. Javed couldn't manage to just the turn of the delivery. Misses it completely. But Imran not missing the opportunity to gather the ball. And then gathered it neatly. Return that one to the hands of Santosh. This time Javed places the ball very nicely between bowler and mid-on. Down to deep long on region for an easy single. So with that single scoreboard numbers on to 18 on the board. 18 for the loss of 2 wicket. Final time in this over. Santosh just examining the field set. Deep long on deep cover point and deep backward square leg and mid wicket. The fielders are in the deep. Backward point, short extra cover, short mid wicket and short square leg are the fielder inside the ring. This time nice looking drive. Technically very sound play, sound cricketing stroke in dedication there from the batsman Batish. Will going to retain the strike for the next over. So after completion of over number 3 and challenge Adyar looks like they're just tighten up the screws in this last 2 overs because well done Calicut, they did a great job in the first over, and after completion of over number 3 it's 19 on the board. 3 over ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 19ಕ್ಕೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
Well done, Kalakate. So just like the name what well done Kalakate has got, need to done well in the remaining 2 overs if they wanted to get some good score. But so far, a challenger dear after that first expensive over the 11 runs. Then Imran bowled over of just 3 runs. Then Santosh is bowled over of 5 runs. Imran to continue. Imran with a short run up. Right arm over the wicket, balls to Bashir, this time well within the reach of the batter. Again the dotted delivery. So many dotted balls faced by Weldon Kalakate. Each and every dot ball will going to create the problem for Weldon to get some good score. But Imran has been outstanding in this tournament with his bowling. Started with a dotted delivery. Again outside the line of half time. This time too much outside the line of half time. So that wide call by umpire Sheikh Malali. So that scoreboard is moves on to 20 on the board for the loss of 2 wicket in the over number 4 in progress. Imran. Right arm over the wicket balls. This time ball is in there. Opportunity for the square leg fielder. He takes a catch. 1 more wicket is back into pavilion. This time Batish is the batsman. Tried to swing that one against the line, across the line. Pays the penalty for that. He just taken a top edge. And square leg fielder making no mistake at all. What a fantastic tournament Imran has got. He picked up his 2nd wicket in this match as well. He picked up 4 wickets in the previous match. Altogether he picked up 6 wickets so far. And this has been outstanding performance here from Imran. The picking up 6 wickets by any bowler, it's equal to the batter who is hitting 100. ಮಜ್ದಾ ಕನ್ನೂರು ಮತ್ತು ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬಯಲು ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಹಲವಾರು ಕರೆಯನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು. ಸಂಘಟಕರಿಗೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮಜ್ದಾ ಕನ್ನೂರು ತಂಡದ. This time single and pick up and throw, but if it is a direct hit, I think it's definitely going to be close call. And fact that ball is just misses the stump. Imran uprooted the stumps, but not quite able to get the result in the favor of fielding team. But the batsman completed a single. Rashid is the new batsman. Opened the account with a single. Scoreboard is 21 on the board. This is over number 4 in progress. Imran so far bowled a very good line in length in this particular match, in that previous match as well, and bowling round the wicket to the left-hand batter Javed. Javed tries batter, swings that one, but not really able to get the distance right. Nothing wrong with the stroke, but something wrong with the placement he made. And ball went straight to the hands of a deep mid-wicket. Swings that one, sweet sound coming from the bat, but not sweet enough to get past that fielder down at deep mid-wicket. Imran picked up 1 more wicket. Again he picked up 3 wickets in this match as well. 4 and 3. Altogether 7 wickets. And he got a habit of picking up wickets every time he is in action. Just dismantling the batting department of the opposition team. Well done Kalakate. That's all happening when you're having a small format of a games like a 5 overs game. No other option at all for the batters. They need to look for some big shot, and by doing that they're throwing the wicket very cheaply. But Imran is really bowling as per the condition required. Last 2 deliveries left in this over. Imran once again just checking the field set. He's bowling as for the field set. That's why he got a lot of success. And experienced campaigner Rahman came into middle. Rahman, the very good striker of the ball. Imran, very good bowler. Bowler's back drive. Again the dotted delivery. Absolutely magnificent. Imran has been outstanding. The perfect delivery for the new batter. Right on the money, right on the middle stump. Batsman just need to play that shot because of that line and length he bowled by Imran in that previous delivery.
Last time in this over is cleaning up. 8 wicket. Again, it's a 4 wickets in this match. What a fantastic performance here from Imran. He's got a dream tournament. The Nethravathi Trophy 2022 definitely is one of the best tournament for him. He will going to remember for a long time because he picked up a one more 4 wickets hold in this match as well. Altogether, he picked up 8 wickets in 2 matches. After completion of over number 4, scoreboard is 21 on the board. Still, well done. Calicut is struggling against excellent bowling department of Challenge Adyar. Now, last opportunity for well done Calicut to get some acceleration, at least 10 to 12 runs, which is badly required in the last over. Otherwise, it's very difficult for them to save the match against Challenge Adyar. I want to see the bowling figure of Imran. He bowled 2 overs, he conceded 5 runs and he picked up 4 valuable wickets. Just look at the economy, 2.5 runs per over, and it's been outstanding and match winning performance. But still 1 over to go, and wait and see how well these 2 batters, Shakil and Rashid, can they able to get the acceleration in the final over. Bowler Sharif brought into attack to bowl that final over. Got a run up with a different bowling action. Oh, that is not a good start. It's a bonus run for well done Calicut. They didn't got enough runs on the board. They will going to enjoy each and every extra conceded by Challenge Adyar. They got 2 valuable runs. The scoreboard moves on to 23 now for the loss of 5 wickets. Sharif bowls again, beautifully bowled. That was the line. That was the line he's trying for. Looks like it's an opportunity for Santosh behind the stump. Just looking the body language of wicketkeeper behind the stumps. Looks like it's going to be a chance for the wicketkeeper. Its ball has got a nick off the bat, but wicketkeeper fails to take the catch, and Sharif just missed the wicket. Second time in this over. Bowling away from us. Right arm over the wicket he bowls. This time tries that one again. Rizwan Riaz is playing some football here as he tried to stop the ball, but he succeeded to put some feet onto the ball, stopping the ball. And fortunately, the ball went straight to the hands of bowler. Otherwise, definitely the batsman got opportunity to come back for the second. But just a single in the negation. 24 on the board. 24 for the loss of 6 wickets. 5 wicket correction. Shakil is in non-striker and Rashid will go into face next ball. Again outside the run of stamp, going for the cut shot, but not really getting that much of timing enough to get that cut shot. The ball went straight to the hands of short mid off, but enough time for the batsman to complete the single. And with the single, scoreboard numbers on to 25. Quarter century. 25, the very hard fought quarter century for the batter. This time beautifully bowled. Umpire says, how can I give the leg before wicket? You are coming right in front of me. That's what the bowler's doing, sometimes mistakes here. And umpire says it's not a run because appeal is going on. That time umpire says it's bowler is coming right in front of me. It's a fantastic delivery again there from Sharif, and leg by. With that leg by, scoreboard numbers under 26 on the board. Sharif bowling away from us. Right arm over the wicket. Balls going for the big shot, misses the line completely. Cleaned him up by the beauty. Rashid looking for the drive and missing the line completely. And each and every batsman of well done Calicut, they're not looking for a rotation of strike. They're only looking for the big shot, throwing the wickets, because losing 7 wickets means you're losing 7 deliveries out of 30 deliveries. This means almost you lost 1 over, and that's very important in cricket. Throwing the wicket means you're throwing your match. And here is well done Calicut, not really getting that much of game plan in this match, and they're struggling in the middle. 26 on the board. Last over is in progress, and the last delivery of their innings which is remaining.
Challenge Adya. So far, giving lot of challenge for well done Kalakatte, but not that much of well done from Kalakatte batsman. Again the bonus run, but run out taken place in the non-strikers end. But they will going to get a single anyhow. With their single scope and moves on to 27. So new batsman is walking towards the middle is jersey number 18. Ansar. The number 9 batter for the side. He just want to have a word with his partner. Maybe he's telling that one ball remaining. If it's a one run is also very important, because cricket, everybody knows that the cricket is game of glorious uncertainty. You can't say anything in cricket. You can fight with some small total as well. And again, right arm over the wicket balls. That's time wicket keeper behind the stump. Opportunity of run out in the non-strikers and wide call by umpire. One more extra, but run out taken place. All out, I think so. No, one wicket remaining. Eight down. So in this particular over, I think Sharif is bowled well, but he bowled some wide deliveries. 3 wide deliveries he bowled. That means it's a bonus run always for the opposition team. It's a 28 on the board. ಮಜ್ದಕ್ಕನ್ನೂರು ಮತ್ತು ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬಯಲು ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡಲೇ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Last time in this over. Right over the wicket. Upishly played, but Imran is not trying for the catch. Understandable chance of run out. Overthrow. They will go and get one more run. It's not a good throw there from Imran. They're going for the third as well. Completed 2 valuable runs, but at last I think in the last over they got some runs. The well done Kalakatte, whether it's from the bat or extra, but they enjoyed each and every runs in the last over, and at last they managed to score 30 runs and set a target at 31 to win the match. Nine runs which just came from that last over, and definitely it's a good run for team well done Kalakatte because of that extra runs which is conceded in the last over. And I think the well done Kalakatte, they can fight with this total. If they bowls well, they fields well, then they can give a lot of challenge for challenge Adyar. And wait and see how challenge Adyar will going to take the challenge against well done Kalakatte. The time will tell you, but more than my friend Kabir will going to tell you about that innings of challenge Adyar will going to commence in a short while. We'll take a short break in the commentary box. It's over to Kabir. Thank you.
ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸತೀಶ್ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ಮಜ್ಜ ಕಣ್ಣೂರು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮಜ್ಜ ಕಣ್ಣೂರು ಅದೇ ರೀತಿ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕರೆಯೋಕ धन्यवाद इस वक्त सतीश सर को। और इस मैच को फिर से यहाँ पर शुरुआत करते हुए दूसरे इनिंग्स की 31 रन के लक्ष्य यहाँ पर रखते हुए गेंदबाजी पर तैयार पावर प्ले इस वक्त जारी हो चुका है। टू फील्ड आउटसाइड द सर्कल एक मक्का श्रृंखला नेत्रवती चैंपियंस ट्रॉफी 2022 यहाँ पर चलते हुए और दूसरे इनिंग्स का पहला गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया था, उछाल दिया था, लेकिन गेंद के नीचे वहां पर फील्डर मौजूद थे, गेंद को कलेक्ट किया और थ्रो किया। 9 रन के निशान पर 1 रन वहां पर दौड़कर प्राप्त कर चुका है। 1 रन के साथ इस वक्त टीम की खाता और अपनी खाता यहाँ पर खोलते हुए संतोष और रियाज इस वक्त 6 और 9 रन के निशान पर खेलते हुए संतोष एक एक्सपीरियंस कैंपेनर रहा और इसी के साथ गेंदबाजी पर जावेद गेंदबाज करने के लिए तैयार रहा। दूसरी गेंद जावेद लेफ्ट आर्म और इस बार गेंद को चला, गेंद के नीचे फील्डर वहां पर हवा पर गेंद को वहां पर रुकते हुए गेंद 1 और 2 टिप्पा करने के बाद वहां पर फील्डर ने गेंद को कलेक्ट किया, क्षेत्र रक्षक किया था, स्ट्राइकर के निशान पर गेंद को थ्रो किया और इसी के पहले वहां पर बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। इस 2 रन के साथ यहां पर रन संख्या आगे बढ़ते हुए 3 रन यहां पर बन चुका है 2 गेंद समाप्त करने के बाद। ऐसा लग रहा था कि गेंद के नीचे वहां पर फील्डर थे, वो अंतिम ओवर पर कैच आउट हो सकते थे, लेकिन अंतिम कुछ क्षण पर क्या वहां पर कैच को छोड़ने के बाद खिलाड़ी की थोड़ी सी दूर थी, वाइडिश थी गेंद और इसी के साथ कैच को वहां पर मिस करने के बाद वहां पर एक मौका मिल चुका है क्षेत्र रक्षण करने बल्लेबाजी के लिए और इसी के साथ 2 रन यहाँ पर दौड़कर प्राप्त करने के बाद 2 गेंद यहाँ पर समाप्त हो चुका है। पावर प्ले इस वक्त जारी हो चुका है। ओनली 2 फील्डर आउटसाइड द सर्कल एक मगा श्रृंखला यहाँ पर शुरुआत से अब तक कुछ हद तक सही से यहाँ पर चलते हुए इस मैच से यहाँ पर खेला जाते हुए चैलेंज कन्नूर और वेल्डन कल्लकट्टा के बीच इस वक्त चलते हुए मैच दूसरी इनिंग्स के यहाँ पर चैलेंज अड्डियार इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए। तीसरी गेंद जावेद लेफ्ट आर्म और इस बार गेंद को रिवर्स शिफ्ट खेलना चाहा, लेकिन जोरदार अपील वहां पर होते हुए अंपायर का इशारा, लेग बाइस का इशारा यहाँ पर मिल चुका है और इसी के साथ ऐसा लग रहा था कि गेंद अंतिम ओवर पर लेग स्टंप को छोड़कर जा रहा था। इसी के साथ अंपायर वहां पर लेग बाइस का इशारा दे चुका है। 1 रन वहां पर मिलेगा बल्लेबाजी टीम के लिए एक्स्ट्रा की तरफ से और इसी के साथ रन संख्या यहाँ पर आगे बढ़ते हुए 4 रन बन चुका है 3 गेंद समाप्त करने के बाद। एक अच्छी तरफ से यहाँ पर गेंदबाज करते हुए जावेद पिछले मैच पर इन्होंने अच्छी तरफ से गेंदबाज करने के बाद अब इस वक्त पहला ओवर फेंकने के लिए तैयार होते हुए इस बार चौथी गेंद ऑफ स्टंप से काफी दूर अंपायर को वहां पर इशारा वाइड करार देते हुए गेंद वहां पर बल्लेबाजी को चकमका चुकी थी, वहां पर ऑफ स्टंप्स के काफी दूर गेंद जा चुकी थी। विकेट कीपर ने गेंद को मिस किया था, इसका पूरा का पूरा फायदा उठाते हुए बल्लेबाजी दौड़कर प्राप्त कर चुका है। 2 रन वहां पर अतिरिक्त की तरफ से वहां पर मिल चुका है। इन 2 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ते हुए 6 ऑन द बोर्ड 6 ऑन द बोर्ड। जावेद फिर से तैयार, इस बार ड्राइव किया ऑनसाइड के निशान पर गेंद जाते हुए गेंद के नीचे फील्डर वहां पर 1 रन केवल मात्र मिलेगा। इस 1 रन के साथ रन संख्या यहाँ पर आगे बढ़ते हुए 7 ऑन द बोर्ड। अब 4 गेंद समाप्त करने के बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 4 बॉल 7 ऑन द बोर्ड
बिना कोई विकेट के नुकसान पर 5वीं बार इस बार गेंद को ऑन साइड के निशान पर उछालना चाहा लेकिन चूंकि बल्ले का शायद वहाँ पर बल्ले पर टकराने के बाद अंपायर का इशारा लेग बाइस का इशारा यहाँ पर देते हुए इन ओवर पर 2 बार वहाँ पर लेग बाइस का इशारा एक्स्ट्रा की तरफ से वहाँ पर मिल रहा है रन और इसी के साथ रन संख्या यहाँ पर आगे बढ़ता हुए 8 ऑन द बोर्ड। अब केवल अंतिम गेंद से पावर प्ले का वहाँ पर देखना पड़ेगा कि फायदा संतोष उठा पाएगा या नहीं देखना पड़ेगा। आखिरी एक गेंद शेष है। संतोष इस बार गेंद को उछालना चाहा लेकिन गेंद मिड ऑफ द बैट कनेक्ट नहीं और 30-10 दायरे के अंदर जो फील्डर थे गेंद के हाथों पर गए। गेंद वहाँ पर फील्ड करने के बाद सीधे से थ्रो किया था विकेट कीपर के साथ और इसी के साथ डॉटेड गेंद बिंदी गेंद के साथ एक ओवर यहाँ पर समाप्त हो चुका है। एक ओवर समाप्त करने के बाद 8 रन वहाँ पर बिना कोई विकेट के नुकसान। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट ओवर स्कोर कार्ड इज मूविंग ऑन 8 ऑन द बोर्ड। अब एक ओवर समाप्त करने के बाद 8 रन यहाँ पर बन चुका है। देखना पड़ेगा कि बचे हुए 24 गेंद बाकी है और किस तरफ के वहाँ पर गेंदबाजी को यहाँ पर बुला जाएगा देखना पड़ेगा। 5 ओवर का मैच यहाँ पर खेलते हुए दूसरी इनिंग्स शुरुआती पर पहला ओवर समाप्त करने के बाद पावर प्ले इस वक्त समाप्त होने के बाद 8 रन यहाँ पर बन चुका है बल्लेबाजी टीम ने रियाज और संतोष ने मिलकर और दूसरी यहाँ पर ओवर फेंकने के लिए तैयार राशिद। पिछली मैच पर भी अच्छी तरफ से इन्होंने गेंदबाज किया था। राशिद ने 2 ओवर फेंके थे। अब देखना पड़ेगा कि इस मैच पर किस तरह के यहाँ पर गेंदबाज करेगा और फील्डिंग में जमावट करते हुए सजावट यहाँ पर करते हुए लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ को यहाँ पर बाहर और मिड ऑन मिड ऑफ का अंदर बोला जा चुका है। और गेंदबाजी पर राशिद गेंदबाज करने के लिए तैयार। दूसरी ओवर की पहला गेंदबाज करते हुए इस बार गेंद को ड्राइव करने की कोशिश उछालने की जल्दबाजी थी लेकिन गेंद बल्लेबाजी को वहां पर चकमकाते हुए और वहां पर स्टंप पर लग चुकी थी जरूर लेकिन बेल्स वहां पर ऑफ नहीं होते और इसी के साथ बल्लेबाजी को वहां पर एक और मौका यहां पर मिलते हुए और ऐसा लग रहा था कि गेंद अंतिम ओवर पर बेल्स वहां पर ऑफ होना ही चाहिए था लेकिन दुर्भाग्यवश वहां पर बल्लेबाज को वहां पर मौका फिर से वहां पर मिलते हैं कि बाद और इसी के साथ 1 रन वहां पर मिल चुका है। इस 1 रन के साथ रन संख्या यहाँ पर आगे बढ़ते हुए 9 ऑन द बोर्ड। दूसरी बार राशिद इस बार गेंद को स्वीप करा और गेंद जाते हुए डिक्लेयर एरिया की करीब वहां पर फील्डर फील्ड करते हुए गेंद को 1 रन प्राप्त कर चुका है बल्लेबाजी ने दौड़ कर और इसी के साथ रन संख्या यहाँ पर आगे बढ़ते हुए 10 ऑन द बोर्ड। अब 2 गेंद समाप्त होने के बाद दूसरी ओवर गेंदबाजी पर राशिद गेंदबाज करते हुए लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाज करने के लिए तैयार। 6 रन के निशान पर खेलते हुए खिलाड़ी रियाज हार्ड हिटर बल्लेबाज माना जाता है। इस बार गेंद को उछालना चाहा लेकिन गेंद 30-10 दायरे के अंदर जो फील्डर थे उन्होंने गेंद को कलेक्ट किया था जरूर थोड़ी सी शायद स्ट्राइट वहाँ पर डायरेक्ट हिट हुआ तो नॉन स्ट्राइक रन के निशान पर जो विकेट को स्टंप को बल्लेबाज वहाँ पर खतरा मान सकते थे लेकिन बल्लेबाज अब इस वक्त सुरक्षित क्रीज पर मौजूद यहाँ पर और इसी के साथ 1 रन दौड़ कर प्राप्त कर चुका है। इस 1 रन के साथ रन संख्या यहाँ पर आगे बढ़ता है 11 ऑन द बोर्ड। अच्छी तरफ से वहाँ पर फील्डिंग किया था युवा खिलाड़ी ने 4 नंबर जर्सी पहनते हुए और इसी के साथ फील्ड करने के बाद गेंद को वहाँ पर डायरेक्ट हिट करने के लिए कोशिश किया था नॉन स्ट्राइक रन के निशान पर लेकिन गेंद वहाँ पर वाइडिश थ्रो होने की वजह वहाँ पर डायरेक्ट हिट नहीं हुए थे। इसी के साथ बल्लेबाज फिर से वहाँ पर एक और मौका यहाँ पर मिल चुका है और संतोष फिर से स्ट्राइक रन के निशान पर इस बार गेंद स्ट्राइट ऑन द ग्राउंड वहाँ पर खेल चुका है और बैक टू द बॉलर के निशान की बॉलर की सर के ऊपर वहाँ पर गेंद जाते हुए 1 रन बल्लेबाज को वहाँ पर मिलेगा जरूर। इस 1 रन के साथ रन संख्या यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ 12 ऑन द बोर्ड। इससे 4 गेंद पर 4 वहाँ पर रन मिल चुका है बल्लेबाजी टीम के लिए। इस तरफ की वहाँ पर योजना के साथ सेंसिबल क्रिकेट यहाँ पर इन दोनों बल्लेबाज खेलते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है। इस बार गेंद को चलना चाहा गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ी सी दूर वहाँ पर चलते हुए अंपायर का कोई इशारा नहीं डॉटेड गेंद बिंदी गेंद यहाँ पर साबित हो चुका है। अब दूसरी ओवर की आखिरी गेंद रशीद लास्ट 1 मोर टू गो। अब इस वक्त गेंदबाजी पर लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाज करते हुए
इस बार गेंद को चलना चाहा, गेंद वहां पर परिवर्तन के दौर पर धीमी गति के साथ गेंद को रख चुके थे अलोंग द कार्पेट, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं बिल्कुल जमीन के सारे गेंद को रख चुके थे। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, नो डाउट एट ऑल। और इसी के साथ 2 ओवर समाप्त करने के बाद 12 रन यहां पर बनते हुए, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। और इसी के साथ 2 ओवर समाप्त करने के बाद 12 रन बन चुका है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सेकंड ओवर स्कोर कार्ड इज मूविंग ऑन 12 ऑन द बोर्ड, बिना कोई विकेट के नुकसान पर। अब देखना पड़ेगा कि बचे हुए 18 गेंद बाकी है और 19 रन चाहिए, 19 रिक्वायर्ड, रिमाइनिंग 18 बॉल्स। एग्जैक्ट रन रेट 6.33 पर 6.33 एग्जैक्ट रन रेट यहाँ पर रिक्वायर्ड रन रेट है। अब चाहिए बल्लेबाजी टीम के लिए 4 नंबर जर्सी पहनते हुए युवा खिलाड़ी, पिछले मैच पर अच्छी तरफ से गेंदबाज किया था, इन खिलाड़ी ने 2 विकेट वहां पर ले चुकी थे। अब देखना पड़ेगा कि इस मैच पर इस तरफ के वहां पर पिछले मैच पर किस तरफ के वहां गेंदबाज किया था, इस तरफ की गेंदबाज इस मैच पर करेगा या नहीं, देखना पड़ेगा। और स्ट्राइक रन के निशा पर एक्सपीरियंस कैप्टन संतोष, आई थिंक संतोष इस वक्त बल्लेबाज करते हुए। और अजान के बाद शॉर्ट ब्रेक के बाद फिर से वहां पर शुरुआत करते हुए तीसरी ओवर फेंकने के लिए तैयार तमीम युवा खिलाड़ी इस वक्त गेंदबाज करने के लिए तैयार होते हुए। शेखरन के निशान पर संतोष और नौ शेखरन के निशान पर रियाज, दोनों आरंभिक बल्लेबाज इस तरह यहाँ पर अब तक रुककर बल्लेबाजी करते हुए सेंसिबल क्रिकेट यहाँ पर खेलते हुए नजर आ रही है। और स्कोर कार्ड इस वक्त 12 रन पर बिना कोई विकेट के नुकसान पर रन ना बचाइए, बचे हुए 18 गेंद पर 19 रन चाहिए। एग्जैक्ट रन रेट रिक्वायर्ड रन रेट है 6.33, 6.33 पर इस वक्त रन चाहिए। बचे हुए 18 गेंद पर 19 रन। गेंदबाजी पर फिर से गेंदबाज करते हुए तमीम राइट आर्म और द विकेट इस वक्त गेंदबाज करने के लिए तैयार। पहला गेंद, इस बार गेंद को
ऑफसेट के निशान पर खेला, वहां पर जरूर एक रन वहां पर मिलेगा। इस एक रन के साथ रन संख्या यहाँ पर आगे बढ़ते हुए 13 रन वहां पर बन चुका है। और गेंदबाजी पर फिर से तमीम गेंदबाज करते हुए, रियाज स्ट्राइक करने के निशान पर खेलते हुए और अंपायर का पार करने के लिए तैयार तमीम। दूसरी गेंद, इस बार गेंद को ऑनसाइड के निशान पर उछालना चाहा, गेंद बल्लेबाज को वहां पर चकमकाते हुए विकेट कीपर के पीछे वहां पर जा चुकी थी और अंतिम क्षण पर बल्ले का थोड़ी सी वहां पर संपर्क करने वजह इस वक्त ऑनसाइड के निशान पर गेंद जाता, विकेट कीपर की बैक पर गेंद जा चुका था और इसी के साथ एक रन वहां पर दौड़ कर प्राप्त कर चुका है। इस एक रन के साथ रन संख्या यहाँ पर बनते हुए 14 रन यहाँ पर बन चुका है। 14 ऑन द बोर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 2.2 ओवर्स। 2 और 2 गेंद समाप्त होने के बाद 14 रन यहाँ पर बन चुका है। तीसरी गेंद तमीम, अब बाउंस बैक करनी चाहिए तमीम की गेंद पर, देखना पड़ेगा कि किस तरफ के गेंदबाज यहाँ पर करते हुए बाउंस बैक करना पड़ेगा अपने टीम के लिए, करते हैं देखना पड़ेगा। तीसरी गेंद, इस बार गेंद को उछालना चाहा, गेंद अब शॉट मिड ऑन के निशान पर गेंद जा चुकी थी और 30 दायरे के अंदर जो फील्डर थे इन्होंने गेंद का कलेक्ट करने के बाद थ्रो किया था। नॉन स्ट्राइक रन के निशान पर एक रन दौड़कर प्राप्त कर चुका है। इस एक रन के साथ रन संख्या यहाँ पर आगे बढ़ते हुए 15 ऑन द बोर्ड। चौथी गेंद, फोर्थ बॉल, तमीम इस वक्त गेंदबाज करने के लिए तैयार। इस बार गेंद को उछालना चाहा लेकिन मिड ऑफ द बैट कनेक्ट नहीं, वहां पर एक रन वहां पर मिल चुका है। दूसरे रन भागने के लिए कोशिश नहीं, एक ही रन में संतुष्ट यहाँ पर होते हुए संतोष और रियाज इस एक रन के साथ रन संख्या पर आगे बढ़ते हुए 16 ऑन द बोर्ड। बिना कोई विकेट के नुकसान पर अच्छे वहां पर साझेदारी यहाँ पर होते हुए इन दोनों बल्लेबाज के बीच, रियाज और संतोष के बीच 16 रन की यहाँ पर साझेदारी इस वक्त बिना कोई विकेट के नुकसान पर आगे बढ़ते हुए टीम चैलेंजर अड्डियर के लिए। पांचवी गेंद, तमीम गेंदबाजी पर फिर से इस बार रिवर्सिप खेलना चाहा लेकिन वहां पर ठीक तरीके से गेंद को उछाल नहीं पाए और इसी के साथ केवल एकमात्र रन वहां पर मिलेगा बल्लेबाजी टीम के लिए। इस एक रन के साथ रन संख्या यहाँ पर आगे बढ़ते हुए 17 ऑन द बोर्ड। 17 कभी भी खतरा माना सकता है, देखना पड़ेगा किस तरफ के वहां पर खतरा हो जाएगा बल्लेबाजी टीम और गेंदबाजी टीम को। 17 इस वक्त होते हुए आखिरी एक गेंद से तीसरी ओवर की तमीम 5 गेंद पर केवल 5वां रन वहां पर दे चुकी थी। देखना पड़ेगा इस गेंद पर क्या विकेट लेता है या नहीं, देखना पड़ेगा। अपनी अंतिम क्षण बाकी है इस ओवर की, इस गेंद ओवर की आखिरी एक गेंद बाकी है। 6th बॉल आखिरी गेंद इस वक्त तमीम गेंदबाज करते हुए इस बार गेंद ऑन साइड के काफी दूर वहां पर जा चुकी थी। अंपायर का दोनों हाथ बुलंद होते हुए वाइट इशारा यहाँ पर दे चुका है। इन वाइट के साथ रन संख्या यहाँ पर आगे बढ़ते हुए 18 रन बन चुका है। अब स्लोली इस वक्त खेलने के बाद रियाज और संतोष ने अपने छोटा कदम आगे बढ़ते हुए यहाँ पर रन संख्या यहाँ पर बढ़ चुका है 18 रन पर। आखिरी गेंद, इस बार गेंद फुलटॉस, गेंद को यहाँ पर फायदा नहीं उठा पाएगा और इसी के साथ स्लोअर 1 फुलटर्स थे और इस गेंद पर अंतिम जो गेंद पर तमीम ने वहां पर विकेट के साथ सफलता यहाँ पर पा चुका है। और देखना पड़ेगा आखिरी एक चैलेंज थी और इस चैलेंज को यहाँ पर पूरा करते हुए चैलेंजर के विकेट यहाँ पर ले चुका है तमीम ने। इसी के साथ रियाज और संतोष की जो साझेदारी अब इस वक्त जुड़ चुका है और इस विकेट लेने के बाद रन संख्या यहाँ पर होते हुए 18 ऑन द बोर्ड। नाउ रिमाइनिंग रन इज 12 बॉल 13। 12 गेंद पर 13 रन चाहिए। एग्जैक्ट रिक्वायर्ड रन रेट 6.50, 6.50 पर समाप्त। 6.50 पर इस वक्त रन रेट चाहिए मैच को जीतने के लिए और संतोष अभी भी क्रीज पर खड़े हैं। देखना पड़ेगा कि क्या संतोष क्या अंतिम क्षण तक मैच को जीत कर अपना अगले हंत को प्रवेश करेगा या नहीं, देखना पड़ेगा। अब गेंदबाजी पर तब्दील करते हुए परिवर्तन करते हुए नए गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज करने के लिए तैयार। ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಕೆಯಾಗಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು
ಅಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಸ್ಜ ಕಣ್ಣೂರು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದೇನೆ. अगला मैच को यहाँ पर खेला जाएगा रेड विंग्स कुंजत बैल और मस्जिद कन्नूर के बीच. अब 12 गेंद बाकी है, रन चाहिए 13. 12 बॉल इज रिमाइनिंग, 13 नीड टू विन दिस मैच. क्या इस गेंद पर इस ओवर पर वेल्टन कल्लकट्टे कम बैक करेगा या नहीं देखना पड़ेगा. पहला गेंद, इस बार गेंद को ड्राइव करना चाहा लेकिन गेंद वहाँ पर विकेट कीपर ने गेंद को मिस किया और इस मिस करने वजह बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक रन की निशान पर वो बल्लेबाज थे, पहले वहां पर रन के लिए दौड़ पड़े और इस रन के दौड़ पड़ने के साथ एक रन वहां पर मिल चुका है. अंतिम क्षण पर बल्ले पर लगाने के बाद एक रन वहां पर मिलेगा बल्लेबाजी टीम के लिए. इस एक रन के साथ रन संख्या यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ 19 ऑन द बोर्ड. 12 रन चाहिए बच्चे पे 11 गेंद पर. क्या रशीद कम बैक करेगा या नहीं देखना पड़ेगा. और ऑनलाइन की तरफ से इस वक्त बल्लेबाजी करने के लिए तैयार इमरान इस वक्त बल्लेबाजी करने के लिए तैयार होते हुए. अब मैदान के अंदर कुछ और एक्स्ट्रा खिलाड़ी इस वक्त आते हुए और देखना पड़ेगा इस खिलाड़ी को बाहर करने के लिए. इस दायरे के अंदर एक और खिलाड़ी यहाँ पर फील्डिंग करने के लिए तैयार और देखना पड़ेगा कि इमरान बल्लेबाजी करने के लिए इस बार गेंद को कट करना चाहा लेकिन चूंकि इस वक्त जो फील्डर नए फील्डर आ चुके थे इस तरफ वहां पर गेंद को वहां पर मुड़ने के लिए कोशिश किया था लेकिन बल्लेबाज चुके विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया और डॉटेड गेंद बिंदी गेंद वहां पर साबित करते हुए एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. और तालियों की गड़गड़ाई सीटियों की आवाज इस वक्त बल्लेबाज गेंदबाजी टीम के लिए यहाँ पर फिर से शुरुआत होते हुए. बचे हुए गेंद 10 गेंद बाकी है और रन चाहिए 12. 10 बॉल रिमाइनिंग, 12 नीड टू विन दिस मैच. गेंदबाजी पर रशीद इस बार गेंद को ऑन साइड के निशान पर खेला जरूर. एक रन वहां पर मिलेगा, दूसरे रन भागने के लिए कोशिश वहां पर दूसरे रन नहीं मिलेगा, एक रन वहां पर मिल सकता है. इस एक रन के साथ रन संख्या पर आगे बढ़ता 20 ऑन द बोर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 3.3 ओवर्स. 3 गेंद समाप्त करने के बाद 20 रन यहां पर बनते हुए एक विकेट को नुकसान पर बचे हुए 9 गेंद बाकी है. 11 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए और संतोष एक ओवर पर खड़े होते हुए बल्लेबाजी कर रहा है. एक्सपीरियंस कैंपेनर माना जाता है इस टीम को. और एक ओवर पर रशीद इनके दूसरी यहाँ पर ओवर केवल 1.3 ओवर 9 गेंद फेंकने के बाद केवल 6 रन दिए थे. इन 3 गेंद बाकी है, देखना पड़ेगा कि इन 3 गेंद पर क्या इस टीम के लिए कमबैक हो सकता है या नहीं देखना पड़ेगा. रशीद अपनी टीम की एक्सपीरियंस कैंपर के साथ थोड़ी सी रहमान जी के साथ यहाँ पर बातचीत करने के बाद फिर से वहाँ पर गेंदबाज करने के लिए तैयार. चौथी गेंद रशीद की और स्ट्राइक रन के निशान पर खेलने वाले खिलाड़ी संतोष. रशीद फिर से तैयार और देखिए इस बार गेंद को चला चाहा जोरदार अपील वहां पर लेकिन अंपायर का इशारा लेग बाई का इशारा. थोड़ी सी वहां पर अंतिम क्षण पर गेंद लेग स्टंप्स के थोड़ी सी दूर थे और अंपायर का वहां पर इशारा दे चुका था केवल लेग बाइस का. एक रन अतिरिक्त की तरफ से वहां पर एक्स्ट्रा की तरफ से एक रन मिलेगा जरूर. इस एक रन के साथ अब रन चाहिए 8 गेंद पर 10 रन. बचे हुए 8 गेंद बाकी है, 10 रन चाहिए. 8 बॉल इज रिमाइनिंग, 10 नीड टू विन दिस मैच. स्ट्राइक रन के निशान पर इमरान 2 गेंद वहां पर सामना करते हुए 1 रन वहां पर बन चुकी थी. इस बाहर गेंद का कट करना चाहा, फिर से चुके जोरदार अपील. विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया था लेकिन स्ट्राइक रन के निशान पर नॉन स्ट्राइक रन के निशान पर जो गेंदबाजी थे उन्होंने मना किया था वहां पर थ्रो करने के लिए और इसी के वहां पर फायदा उठाते हुए बल्लेबाज दौड़कर 1 रन प्राप्त कर चुका है. इस 1 रन के साथ रन संख्या पर आगे बढ़ते हुए 22 ऑन द बोर्ड. एक विकेट के नुकसान पर रन चाहिए 7 गेंद पर 9 रन. 7 बॉल इज रिमाइनिंग, 9 नीड टू विन दिस मैच. देखना पड़ेगा कि फिर से वहां पर ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಚತ್ ಬೈಲ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಸ್ಜಿದ್ ಕಣ್ಣೂರು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ವೇದಿಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದೇನೆ. और 7 गेंद बाकी है, 9 रन चाहिए. लॉन्ग ऑफ का बाहर मिड ऑफ का अंदर यहाँ पर बुला जा चुका है.
7 गेंद 9 रन चाहिए। इस बार गेंद को चला चाहा, विकेट कीपर वहां पर गलती कर बैठे और इस गलती को वहां पर फायदा उठाता है। सही रन की निशान पर बल्लेबाजी थे और पर जल्दी से वहां पर दौड़कर 1 रन प्राप्त कर चुका है। इस 1 रन के साथ धीरे धीरे से वहां पर रन आगे बढ़ता है। अब रन चाहिए 6 गेंद पर 8 रन चाहिए। देखना पड़ेगा कि किस गेंदबाजी को यहाँ पर चुनाएगा। गेंदबाजी के टीम के कप्तान 6 गेंद बाकी है, 8 रन चाहिए। सही रन के निशान पर खेलने वाला खिलाड़ी संतोष, 9 सही रन के निशान पर खेलने वाला खिलाड़ी इमरान। गेंदबाजी पर किस गेंदबाजी को टीम का कप्तान चुनाएगा या नहीं देखना पड़ेगा। और ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಚತ್ ಬೈಲ್ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು फील्डिंग आयुधಗೊಂಡಿದೆ। द न्यूज़ फॉर द सेंटर रेड विंग्स कुंजत बैल ऑन द टॉस एंड एलेक्ट टू फील्ड फास्ट। और एक और हाई वोल्टेज मैच यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इस वक्त समय 4:02 यहाँ पर होते हुए धूप थोड़ी सी कम होते हुए नजर आ रहे हैं। केवल 30-10 दायरे के अंदर शायद धूप है और दर्शक इस वक्त पिन ऑफ साइलेंस के साथ, खामोशी के साथ मैच का यहाँ पर आनंद लेते हुए इस मैच का यहाँ पर मुकाबला होते हुए चैलेंज और वेल्डन के बीच देखना पड़ेगा कि अब आखिरी एक मौका बाकी है। 6 गेंद बाकी है, 8 रन चाहिए। 19 नंबर जर्सी पहनते हुए खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी इस वक्त गेंदबाज करने के लिए तैयार होते हुए देखना पड़ेगा कि इस ओवर पर क्या संतोष अपने ही स्टाइल पर मैच को जीत पाएगा या इस गेंदबाजी को युवा खिलाड़ियों को अपने टीम के लिए बाउंस बैक करेगा या नहीं देखना पड़ेगा। अब 6 गेंद बाकी है, 8 रन चाहिए। 6 बॉल इज रिमाइनिंग, 8 नीड टू विन दिस मैच। और लंगा ऑफ डीप मिड विकेट को यहाँ पर बाहर रखते हुए दीपक स्क्वायर के निशान पर स्क्वायर वाइडिस लॉन्ग ऑफ के निशान पर एक और फील्डर को यहाँ पर रखते हुए बल्लेबाज गेंदबाजी पर मुजम्मिल पहला गेंद इस बार रिवर्सिव खेलना चाहा, जोरदार फील वहाँ पर लेकिन अंपायर का इशारा, लेग बाइस का इशारा देते हुए अंतिम क्षण पर संतोष जी की पैरों पर टकरा चुकी थी। जोरदार अपील किया था जरूर लेकिन वहां पर कोई इशारा नहीं। इस 1 रन के साथ अब रन चाहिए, 5 गेंद बाकी है, 7 रन चाहिए। स्ट्राइक रन के निशान पर नए खिलाड़ी इमरान इस वक्त स्ट्राइक यहाँ पर रोटेट करने के बाद स्ट्राइक रन के निशान पर खेलने के लिए तैयार। रहमान थोड़ी सी यहाँ पर फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए गेंदबाजी पर मुजम्मिल इस बार गेंद को वहां पर रिवर्सिव खेला जरूर, वहां पर फील्डर नहीं और इसी के साथ चौके के साथ इट्स अ स्ट्रांगली कमबैक। गेंद को वहां पर अंतिम क्षण पर बल्ले को वहां पर रिवर्सिव खेलते हुए किस तरीके से वो गेंद तेजी के आ चुकी थी, इस तरीके से गेंद को रिवर्सिव खेलते हुए मिड ऑफ द बैट कनेक्ट करने के बाद 4 रन के लिए बाउंड्री के साथ धुवेधार यहाँ पर इमरान ने शुरुआत किया है। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, नो डाउट एट ऑल। इसी के साथ मैच शायद थोड़ी सी चैलेंज अड्डियर के बारे में यहाँ पर पास पक्ष पर यहाँ पर जाते हुए ऐसा लग रहा था कि मैच कभी इधर कभी उधर ऐसा देखना पड़ेगा कि अंतिम ओवर पर मैच जाएगा किधर। अब शायद 4 गेंद बाकी है, 3 रन और चाहिए मैच को जीतने के लिए। चार गेंद बाकी है, 3 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। और गेंदबाजी पर मुजम्मिल इमरान एक चौके के साथ इस बार गेंद को केवल दिशा दिया था, ऑन साइड के निशान पर गेंद जाते हुए 1 रन वहां पर मिलेगा, दूसरी रन नहीं मिलेगा, 1 रन वहां पर मिलते हुए अब बचे हुए 3 गेंद पर 2 रन चाहिए। एक्सपीरियंस कैंपेनर माना जाता है संतोष इस वक्त 6 रन के निशान पर खेलने के लिए तैयार। क्या इस गेंद पर मुजम्मिल टीम के लिए बाउंस बैक कम बैक कर पाएगा या नहीं देखना पड़ेगा। अंतिम 1 क्षण मात्र बाकी, 3 गेंद पर 2 रन चाहिए। इस बार गेंद कॉन्सेट के निशान पर खेल चुका है जरूर, डिक्लेयर एरिया के निशान पर गिर जाते हुए अब 1 रन वहां पर मिलेगा। इस 1 रन के साथ रन संख्या यहाँ पर स्कोर इज लेवल बराबर यहाँ पर होते हुए 2 गेंद बाकी है, 1 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। देखना पड़ेगा कि इन 2 गेंद पर क्या मुजम्मिल कम बैक करेगा या नहीं देखना पड़ेगा। बल्लेबाजी पर
इमरान इस बार गेंद को रिवर्स शिफ्ट करना चाहा, लेकिन अंतिम ओवर पर गेंद ऑन साइड की दिशा पर जाते हुए देखते हुए और गेंद को दिशा दिया, मुड़ा ऑन साइड की दिशा पर, गेंद वहां पर डिक्लेयर एरिया की दिशा पर जाते हुए एक रन वहां पर मिल चुका है। इस एक रन के साथ टीम चैलेंज अड्यार ने मैच को जीतकर अपने अगले अंक को यहां पर प्रवेश कर चुका है। कंग्रेचुलेशन टीम चैलेंजर अड्यार एंड ऑल द बेस्ट टीम, वेल डन कल फॉर योर फ्यूचर गेम्स। अब अगले मैच को यहां पर लेकर आ जाएगा वन मोर हाई होल्डेज मैच यहां पर खेला जाएगा रेड विंग्स कुंजत बैल और मस्जिद कन्नौर के बीच। कुंजत बैल टू मस्जिद कन्नौर इस वक्त मैच खेला जाएगा और इस मैच को पहले हम आमंत्रण करना चाहता हूँ माइक्रोफोन पर इस मैच का मैन ऑफ द मैच पुरस्कार दिया जाएगा इमरान। चैलेंज अड्यार की इमरान को यहाँ पर इस मैच का मैन ऑफ द मैच यहाँ पर बोला जाएगा। और मैदान की आसमान की तरफ से कबूतर यहाँ पर उड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इस कबूतर उड़ते हुए देखते हुए इमरान इरफान बेद्रा इस वक्त बेद्रा मीडिया की इरफान की सारथी के साथ इस वक्त लाइव टेलीकास्टिंग पर देखते हुए आसमान की तरफ से कबूतर यहाँ पर उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस टूर्नामेंट का यहाँ पर उत्साह बढ़ते जा रहे हैं और माइक्रोफोन पर आमंत्रण करना चाहता हूँ मेरी साथी कमेंटेटर सतीश सर। आइए सतीश सर। और वन मोर हाई वोल्टेज मैच यहाँ पर खेला जाएगा मस्जिद कन्नूर टेकिंग ऑन रेड विंग्स कुंजत बैल टू मस्जिद कन्नूर इस वक्त मैच को खेला जाएगा। So now it's a time for the man of the match. What a fantastic finish for this match. Outstanding performance. And Imran once again leading from the front, picking up 4 wickets and scoring a very important run. So that Imran of Challenge Adyar is judged as man of the match. I request Imran to come and collect your man of the match for our chief guest, respected Ashraf sir, the corporator. So thank you very much Imran for your wonderful performance. And is really outstanding throughout the tournament. So bowled brilliantly, picked up 4 wickets, and when a crucial moment he came into bat and played outstanding innings of 7 runs. And that 7 runs, I think 1 boundary which is he played in the last over. This is really changing the complexion of the game. Let's switch it. He got a boundary. Now one more big match is coming up. One more the free quarter final between Mazda Kannur versus Red Wings Kunjat Bail. After winning the toss, captain of Red Wings Kunjat Bail elected to field first, and opening batters of Mazda Kannur, they are into the middle to open the innings. Looks like captain himself Abu Bakar came to middle with the jersey number 63, which is my favorite number. Irfan is in non-striker end with jersey number 1. Ranjit will go into starts the proceedings of Red Wings. They got a walk over in their first match, so they're playing their the second match, a free quarter final against Mazda Kannur. Mazda Kannur, they defeated KFC Kankanadi comprehensively in their first match, and they are into the free quarter final. So altogether, the first match for Red Wings, second match for Mazda Kannur. And wait and see how well these two teams will go into fight for the victory. Everyone got an eye on this match. Of course, those are watching live telecast of this cricket tournament through Bedra Media YouTube channel. Definitely they will going to get a lot of enjoyment. The previous match also with a very good match, nail-biting finish, and we are expecting that this same kind of result in this match as well, because both the teams, they got fantastic players in their side. And now Ranjit is present, very good
all-rounder for the side, is now representing for Red Wings Kunjat Bail, bowling away from us past umpire Sheikh Malali. Right now over the wicket balls, right on the money, right on the target. Ball, first ball itself, Ranjit bowled a sharp incoming delivery. Abu Bakar is a very experienced campaigner, know exactly what Ranjit will going to do here. He tried to bring the ball from outside the line of off stump, coming into the batsman, and the Abu Bakar couldn't manage to take any kind of cricketing stroke for that beautiful delivery from Ranjit. Abu Bakar, the captain of the side, will going to face next delivery of Ranjit away from us. Right above the wicket, square driving that one, not really getting that much of timing, but he exactly knows that if he gets the timing, he can get the boundary for that. So Abu Bakar tried to drive that one down to a cow point region. There is no protection has been given in the deep cow point. There is a deep long on, there is a deep backward square leg, and deep backward square leg, the two fielders there in the deep in this power play. Short fine leg, short square leg, short mid wicket, short third man, short cover point, short extra cover, short mid off. The field set of the bowling of Ranjit. Full toss straight to the hands of fielder. He is not really able to get past that fielder. It might be that height which is not enough from the batter Irfan to get past that fielder. Ball went straight to the hands of fielder. It's absolutely the prize wicket for Ranjit, because that was a full toss delivery, and he can deliver that stroke over the head of that mid-off fielder, because there is no protection has been given in the deep in the long off region. Unfortunately, because I think Irfan is surprised with the full toss delivery. He's not expecting that the full toss from Ranjit there. That's why he couldn't manage to take the advantage of that delivery. But altogether, the cricket is just like that only. Sometimes you are not getting a wicket for good ball. Sometimes you will get a wicket for the punishable deliveries. So first wicket is back into pavilion of Mazdaka Noor. The new batsman walking towards the middle is Iju. One more very talented player, the number 3 batter for the side of Mazdaka Noor, will go into face the next delivery from Ranjit. Ranjit bowling with a short run up, bowling right arm over the wicket past umpire Sheikh Malali. Beautifully driven, lack of placement, chance of run out there, fielder at extra cover and couldn't manage to collect the ball neatly. Otherwise, definitely that opportunity which is created in that downstrikers and for the run out, but fielder couldn't manage to gather the ball. Just a single, with the single scope of Namuzan to 2 on the board for the loss of 1 wicket here in over number first in progress. 5 overs match, 1 over going to be a power play. 4 bowlers bowl 1 over each, and 1 bowler can bowl 2 over. As again Ranjit, the right arm over wicket bowls. Abu Bakar clean him up, beautifully bowled, exposing his leg stump. Abu Bakar trying for the big swing of the bat on the onside region. By doing that, he never knows that he was far across the line of the delivery, shuffled across the line of the delivery, exposing his leg stump, and Ranjit just hitting the leg stump of Abu Bakar. The wicket number 2 of Mazdaka Noor is back into pavilion. Now they are in trouble. 2 for the loss of 2 wicket. Abu Bakar back into pavilion. His captain is back, and replacing him is just number 3. I think Nasir is the ball batter walking towards the middle. One more fantastic all-rounder for the side of Mazdaka Noor. Nasir in the previous match is bowled well. He's contributed from little bit contributed from the bat as well, and is now slowly walking towards striker's end. So Nasir having some word with the square leg umpire. Ranjit is looking so confident in this over, and at square leg Abdullah is the umpire along with Sheikh Malali. The new batsman, left-hand batsman Nasir
will going to face. For him at square leg, one at deep backward square leg, between backward square leg and mid wicket, one at short mid wicket and deep long on mid off, short extra cover, short cover point and short backward point. Right arm over the wicket, this time he swept that one, but not really control that sweep shot, but still he managed to get the single before the mid-on fielder to collect that one. Good over completed by Ranjit. Fantastic over after completion of first over. Shackling start here for Mazdakanuru. They managed to score 3 by losing 2 valuable wickets. For the latecomers, you're watching this the free quarter final, second free quarter final match of this prestigious Nethravathi Trophy 2022, which is proudly organized by friends Shanthinagara and this most beautiful Nethravathi ground. And so far it's been an outstanding day for cricket. And these two teams are clashing here in the free quarter final to get the place in the quarter final. And already challenge Adyar, they got a place in the quarter final. And the winner of this match will go into clash for the place for the semi-final. Next. So, Vignesh, one more very talented young bowler for the side, the all-rounder in fact. The left-hand bowler, left arm around the wicket pass ball, went for the sweep shot, but a half-hearted shout for leg before wicket, and they're appealing here, and Ashwin behind the stump, but the intention what need to see that the batsman try to help the bowler. Of course, is not to do that, but sometime, of course, the spirit, true spirit of cricket is so important, and here is Vignesh balls this time beautifully bowled, and the ball is looks like might be going down as a leg by call by umpire. One more addition to total. Lovely delivery there from Vignesh, beautifully bowled in the negation, and the batsman Nasir completely missed out delivery, and leg by call by umpire. With that, extra scoreboard moves on to 4 on the board for the loss of 2 wickets. Vignesh now coming round the wicket, to the right under batter Iju. The spread out fields, after that power play overs, and the one fielder in the deep backward square leg, one at mid wicket and deep long on. Deep long off is there, deep cover point is there, short extra cover, short cover, short back point, and short fine leg and short mid wicket. Vignesh balls outside the run of off stump too much. There's no turn at all there for Vignesh. That's why the umpire rightly so called that wide. With that extra scoreboard moves on to 5 on the board. Vignesh might be initial precaution, tried to bring the ball from outside the line of off stump. Again, he balls beautifully bowled again. Oh, good piece of fielding there by the fielder. Chance of run out there, direct hit, but umpire says not out. Excellent effort there from the fielder. The very good effort, diving to his right, stopping the ball, hitting the stumps, but still not getting the result. But that will go into lift the spirit of the bowler Yagnesh and all the players. With that single score moves on to 6 on the board. Mazdakanur slowly and steadily. These two batters try to get the partnership going, and even it was a slower run, but they know exactly not to lose the wickets in a frequent intervals. Will put a lot of pressure if you're losing the wickets in a regular intervals. And here is Yagnesh again, left arm balls over the wicket, just tapping the ball down to short gully region for a single by Nasir, and with that single scoreboard numbers on to 7 on the board. Nasir is playing as per the condition required. You know exactly the kind of batting which is required in this situation. The losing a wicket means you're losing the deliveries as well. And Yagnesh again bows. This time went for the big swing of the bat, but not really getting that the connection what he's looking for. Of course, reverse stroke is looking for, but it's a so difficult stroke to play, but very popular stroke in a present cricket. Each and every batsman loves to play that reverse sweep. This time swept at one. That's nicely swept by Iju in the negation down to square leg region, not more than a single. And with that single scoreboard numbers on to 8 on the board. Both the batsers are dealing with a single.
Over number 2. 2 over completed after completion of over number 2. Two over completed, good over, one more good over is completed, and in that over 5 runs which is considered by Yadnesh, and altogether 8 runs on the board for Mazda Kannur. The run rate is exactly 4 runs per over. 4 runs per over run rate. So progressing for Mazda Kannur. Quite understandable why that much of a slow run rate. Only because of the opening bowlers Ranjit and Yadnesh bowled very well, especially the Ranjit who picked up a wicket in his first over. He picked up 2 valuable wickets in the first over, and that's why Mazda Kannur little bit onto the back foot, but they got an opportunity to bounce back in the remaining 3 overs. 18 possible deliveries remaining, excluding wides and no ball, and wait and see how many runs they will going to score in this remaining 3 overs. No change in bowling. Ranjit will going to continue. So tomorrow's match is a very good match. Team Elegant versus Goryang Boys. If they are able to win the match, they will straight away coming to the semi-final. And definitely is going to be one more the good match. The Elegant versus Goryang Boys high voltage match for the cricket lovers. And here is one more high voltage match is going on. The appeal for leg before wicket. Umpire says its ball is going down the leg stump. Leg by call by umpire. Loud appeal behind the stump there from Ashwin. And umpire not interested. With that single scoreboard numbers on to 9 on the board in the over number 2 in progress. So Ashok, the captain of Red Wings, having a lot of changes in the field as he coming down to short fine leg region. And that fielder is coming towards a mid-on region, almost in the wide of mid-on, between mid-wicket and mid-on. The square leg fielder coming fine leg region for the left hand. Correction, left hand batsman is on strike, so that fine leg is there. One deep backward square leg is there, short mid-wicket. Deep long on, deep long off is there, and deep cover point for Nasir. Ranjit again, right arm round the wicket, short pitch one, batsman nicely drives that one down to mid-wicket region. Of course, Nasir is half-hearted. He knows that the need to keep the wickets in hand. That's why just wrist work comes into play to pick the single down to backward square leg region, mid-wicket region in fact, and scoreboard moves on to double figure 10 on the board. Slow progress for Mazda Kannur, quite understandable. But Mazda Kannur knows that they got a very good bowling department. If you're able to get in 5 overs 30 to 35 runs, they can fight with that total. But Red Wings, they also got some good batting department in the side. That's why this match is definitely going to be a more interesting, and it was high voltage. This time appeal for leg before wicket. Umpire says again that not out. Went for the reverse sweep, and umpire says you are coming right in front of me. I can't see the ball, I can't see the line. Again the leg by call by umpire. With that leg by scoreboard now moves on to 11 on the board. 11 for the loss of 2 wicket. Now left hand batsman is on strike. Short third man, short extra cover, deep long off, long on is there. Backward score like mid wicket and short mid wicket. Ranjit bowls outside of leg stamp, but they're going for the extra run. This is a bonus run for the opposition, Mazda Kannur. And that with that couple of runs, the scoreboard now moves on to 13 on the board. Each and every run we're going to be very important for Mazda Kannur. They know exactly these all runs are bonus for them. If they're able to rotate the strike in the remaining deliveries, they're coming very close to that 30 plus runs.
And in this condition, when the time is exactly 4 past 30 in the evening, and looks like it's going to be a difficult task if it able to get 30 to 35 runs. This time Ashok there in the short fine leg region. I think the wheels are off, and will it going to be bowled out or not out? The umpire now saying that yes, he's gone. He's clean him up, and beautifully bowled. That is quicker one. Absolutely, I want to see it in a replay. What kind of deliveries, and ball is just got bowled out, and hitting the leg stump. The bails are off. Might be a little bit late when the bails are off, but I think it's a beautiful ball there from Ranjit to pick the wicket. So wicket number 3 is back into pavilion. The partnership is just broken there by Ranjit in this very good sharp incoming delivery. And the batsman Iju is back into pavilion. It's 13 for the loss of 3 wicket. So new batsman walking towards the middle with jersey number 10. Irfan. The left-hand batter. Irfan Yell. Yell in the sense lefty. Left-hand batter. R in the sense right-hand batter. Irfan, left-hand batter, will going to take the strike of the bowling of Ranjit. He is right on the money in the previous delivery. Bowling right arm round the wicket to the new batsman. Went for the reverse sweep, horizontal bat, but he couldn't manage to meet the ball because of he's not really bending down and to the ground level. His bat is always in the air. So ball misses the bat. Wicketkeeper behind the stump, Ashwin, did the rest back to bowler. Ranjit this time again swinging that one. Chance of run out. It was easily done. Just sacrificing the wicket. Irfan Yell as batsman Nasir charging for the run. And Irfan tried to swing that one towards the mid-wicket region. Ball missing his bat, hitting his leg. And on his follow-through, Ranjit making no mistake at all. Done a fantastic job to send one more wicket off Mazda Kannur to back into pavilion. It's a 13 for the loss of 4 wicket. Firoz. Sheru is a new batsman in. Over number 4 completed, 3 completed. The completion of over number 3, it's a 13 on the board. Just 4.33 runs per over, the run rate progressing here for the Mazda Kannur against Red Wings. Kiran brought into attack. So new batsman Sheru is on strike, not really having enough runs on the board for Mazda Kannur. Mazda Kannur knows that the last 2 overs is going to be very crucial for them to get some acceleration, get some partnership, which is more important. As again Kiran bowling away from us, right arm over the wicket bounce, swept that one very nicely. They're running hard, looking for a second, but the fielder is so quick in the deep, in the backward square leg region, charging to the ball and denying the second from the batter. With that single scoreboard moves on to 14 on the board in the over number 4 in progress. Last 11 possible deliveries remaining, excluding wides and no balls. And wait and see how many runs they will going to score in remaining 5 deliveries. Kiran bowls nicely, driven right in the gap towards the cover point region. Just a single here. Both the batsmen's rotating the strike in each and every ball. They knows Mazda Kannur not to play any dotted deliveries here onwards. At least a single which is required in each and every ball. 15. And in the middle of that, we required 1 or 2 big shots if they wanted to get some good score. Kiran so far bowled very good line. Bowls outside the line of leg stump and going to be a wide, 1 more bonus run. Altogether
some extras which is helping Mazda Kannur. This is the third wide of their innings, and altogether 7 extras, 1 by, 2 leg byes. Of course, there is excuse for the leg byes, but there is no excuse for byes, wides, and no ball. 16 on the board. This time, ball is in there, very loose stroke, absolutely. Shearu couldn't manage to control that sweep shot, control that tap shot, which is went straight to the hands of that fielder. The one more wicket is back into pavilion. Mazda Kannur in tremendous pressure now. 5th wicket is back into pavilion, and bowler Kiran has got one more valuable wicket. And so far, Red Wings winning the toss, selected to field first. And they did great job. All bowlers, which is really just justifying the decision of their captain by bowling some good line and length. So new batsman walking towards the middle with the jersey number 9, Dawood. Dawood facing his first delivery of Kiran. Bowled him, clean him up. Second consecutive wickets here for Kiran. Then he's right on the money, right on the target. First perfect delivery to ball to the fresh leg. Whenever the new batter coming into the middle, every bowler thought of that one delivery which is coming into the batsman and bowled beautiful delivery, unplayable one. Of course, a little bit late reaction coming from the new batsman Dawood, and he just pays the penalty for that. Let the gap between bat and pad, and ball hits the stumps. That means Kiran is on hat-trick. Mazda Kannur lost one more wicket. It's just lost the momentum so far. It never looks like they're going to bounce back against a formidable bowling department of Red Wings. 16 for the loss of 6 wickets back into pavilion. Kiran is on hat-trick. Sadiq is a new batter. Kiran bowled him, hat-trick! Number 2 of this prestigious Nethravathi Trophy 2022, and Kiran registering his name along with Imran of Challenge Adyar. What an outstanding performance there from Kiran there. 1 is caught, 2 is bowled out. And look at the delivery. I want to see that one in the replay again. The way that Kiran able to bring the ball from outside the line of off stump and batsman nowhere. Absolutely Sadiq not really seeing the line of the ball. Just tried to play against the line of the delivery. Late reaction, but quicker one. The wicket number 7 is back into pavilion. It's 16 for the loss of 7 wickets. Saif is a new batter walking towards the middle. Now tailenders have to bat well in remaining deliveries. Not too many deliveries remaining. And the last ball which is remaining in this over. That means altogether 7 deliveries remaining in their innings. Kiran. Right arm over the wicket. And is a flum. Absolutely flum. This is the 4th wicket. Absolutely. As an unbelievable bowling figure here for the bowler Kiran. Picking up 4 wickets in 4 deliveries. As a cricket language you can call that is a double hat-trick. What a fantastic performance. Just I want to see that 4 dismissal of Kiran. He picked up 4 wickets. First one I want to see. He picked up a wicket which is caught at backward point region. Easy catch for the fielder at backward point region. The second one which is bowled out. The Dawood is a batsman. He's never really understand what kind of delivery it has been. Just I want to see that's the 2nd wicket. 8th wicket is back into ball. This is a 3rd wicket. This is a hat-trick wicket. See that? Look at that one. Absolutely nowhere. Unplayable delivery. And this is the last one. I want to see it in a replay.
This is a fourth one and absolutely magnificent delivery. The batsman doesn't know anything about that delivery, isn't it? He doesn't know what kind of delivery is, and he missed it completely. The bowler hits the stump. Thank you very much, Bedra Media, for this outstanding technical work. It's not so easy immediately bringing that all 4 wickets in front of the viewers of Bedra Media. And what a fantastic bowling figure. It's 4 wickets in 4 deliveries, and which was a rare record from the bowlers. The last over remaining of Mazda Kannur. Arshit brought into attack. Again they're going for the big swing of the bat. Nasir doesn't want to take any kind of runs. Quite unfortunate. Look at the Nasir where he is. He's a number 4 batsman, and watching the wickets are tumbling in front of him. Now he's playing with the number 10 batsman. It's unbelievable and disaster. Again the dotted delivery. Nasir misjudging the line. Ashit bowling that good line. 2 dotted deliveries. 4 balls remaining of Mazda Kannur. Still they're searching for the right track. 16 for the loss of 8 wicket. 9th wicket is back in the pavilion. Now the last pair in the middle for Mazda Kannur. Highly disappointment performance there for Mazda Kannur. They're not really able to read the kind of deliveries bowled by the bowlers of Red Wings. Red Wings dismantling the batting department of Mazda Kannur. Now last 3 deliveries remaining, but the question raising here is, can they able to complete that 5 overs quota? Just number 45. Number 11 batter is coming to the middle. Asif. The first priority of these 2 batsmen in the middle. At least they managed to complete this 5 overs. At least a single run will take them into respected 19 runs. And but Arshit wanted to bundle out. He desperately wanted to bundle out. Right arm over the wicket balls. They went for the reverse sweep. Missed it completely. And now 2 balls remaining. So far there is no run which is conceded in these 4 deliveries. What a fantastic bowling here from Arshit in the last over as well. 5th time in this over. Right now over the wicket he bowls. This is a one which is well within the reach of the batsman. Misjudging the line. 1 more dotted delivery. Score still remains on 16. Last ball of their innings. Arshit, can he able to get the first maiden of this tournament? This time opportunity of run out. Direct hit required. Misses the stump. And they're going for the extra run. Maybe Arshit looking for a maiden, because if he hits the stumps, then the opportunity of making a maiden. But he misses the stump. So that Mazda Kannur, they got a very important couple of runs. So after that 5 overs, Mazda Kannur managed to get 18 runs and they set a target of 19 to win this match. And they scored at the rate of exactly 3 runs per over. It's not a kind of batting which is we are expecting from Mazda Kannur, because each and every the cricket spectators here in most beautiful cricket ground that might be there looking for some good competition between these 2. But Mazda Kannur highly disappointed with their performance, because they scored only 18 runs. And I think Red Wings captain must be pleased with the performance of their bowlers. The bowlers did a job, but now only the batter's job is to complete and justify the effort of their bowlers. But a long way to go for Mazda Kannur. Long way to go for the Mazda Kannur, because some miracle bowling which is required. Because cricket is, everybody knows the cricket is game of glorious uncertainty. You can't say anything in cricket. And the self-confidence is so important. Believing with the strength is very important for Mazda Kannur if they wanted to win the match. Meanwhile, I request Challenge Adyar, captain and the players, please come here to complete the formalities of signatures as soon as possible. Challenge Adyar ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಠಡಿಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು. They will go into play against the winner of this match. And before the innings will go into start off,
team Red Wings Kunjatbail. It's time to change in commentary box. It's over to again to Kabir Junior Gopi to have the mic in our national language. Thank you. धन्यवाद इस वक्त सतीश जी को। और मैच पर फिर से यहाँ पर आरंभ होते हुए रेड विंग्स कुंजतबैल और मजदा कन्नूर के बीच इस वक्त इस मैच को चलते हुए 19 रन की लक्ष्य यहाँ पर रख चुकी थी मजदा कन्नूर की बल्लेबाजी ने। और बल्लेबाजी पर थोड़ी सी दबाव में इस वक्त बल्लेबाज करने के बाद इस वक्त ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। पहला गेंदबाजी पर नासिर गेंदबाज करने के लिए तैयार। स्ट्राइक रन के निशान पर इस बार गेंद को उछालने के जल्दबाज वहां पर कैच आउट हो सकता था। शायद पहला गेंद पर विकेट मिल गया तो अच्छी तरह से शुरुआत यहाँ पर हो सकते थे, लेकिन थोड़ी सी हाथों पर जाने के बाद गेंद फिसल चुकी थी और इसी के साथ वहाँ पर जीवदान मिले बल्लेबाज अशोक के लिए। पहला गेंद पर 1 रन वहाँ पर बनते हुए तंजीम इस वक्त स्ट्राइक रन के निशान पर बल्लेबाज करने के लिए तैयार। इस बार ऑफसाइड के काफ़ी दूर वहाँ पर गेंद चल चुकी थी, लेकिन अंपायर का इशारा 22 का इशारा देते हुए विकेट कीपर ने गेंद को वहाँ पर कलेक्ट नहीं कर पाए। इसी के साथ बल्लेबाज 1 रन दौड़कर प्राप्त कर चुका है। 2 गेंद पर 2 रन आते हुए तीसरी गेंदबाजी पर इस बार गेंद कॉन्सर्ट के निशान पर खेला जरूर, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद। 1 रन केवल मात्र मिलेगी। वाइड थ्रो वहां पर लेकिन बैकअप फील्डर थे, वो फील्डर ने गेंद को वहां पर कलेक्ट किया और इसी के साथ 1 रन वहां पर मिलेगा। इस 1 रन के साथ रन संख्या यहाँ पर आगे बढ़ते हुए 3 रन यहाँ पर बन चुका है। चौथी गेंद इस वक्त गेंदबाजी पर नसीर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इस बार रॉन्सर के निशान पर गेंद जाते हुए और अंपायर का इशारा डॉटेड गेंद बिंदी गेंद यहाँ पर साबित हो चुका है। इस बिंदी गेंद के साथ 4 गेंद समाप्त होने के बाद 3 रन यहाँ पर बनते हुए रेड विंग्स कुंजतबैल की खिलाड़ियाँ। 5वीं गेंद इस बार गेंद वहाँ पर विकेट कीपर के हाथों पर गए थे, लेकिन विकेट कीपर ने थोड़ी सी मिसफील किया और इसका फायदा उठाते हुए बल्लेबाजी ने 1 रन प्राप्त कर चुका है दौड़कर। इस 1 रन के साथ रन संख्या यहाँ पर आगे बढ़ते हुए 4 ऑन द बोर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 5 बॉल्स। 5 गेंद समाप्त करने के बाद आखिरी एक मौका है पावर प्ले का यहाँ पर फायदा उठाने के लिए बल्लेबाजी के लिए। इस बार गेंद को उछालना चाहा, लेकिन विकेट कीपर ने फिर से वहां पर चुके और डायरेक्ट हिट किया था। इस तरह वो डायरेक्ट हिट किया था, लेकिन बल्लेबाज के रिस्ट पर सुरक्षित है। इस 1 रन के वहां पर दौड़कर पूरा कर चुका है। इस 1 रन के साथ रन संख्या यहाँ पर आगे बढ़ते हुए 5 रन यहाँ पर बन चुका है। 6 ओवर समाप्त करने के बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 6 बॉल्स 5 हैज बीन स्कोर्ड हियर। बिना कोई विकेट के नुकसान पर 1 ओवर समाप्त करने के बाद 5 रन यहाँ पर बन चुका है। अब 14 रन चाहिए बचे हुए 20 गेंद पर। 24 बॉल्स रिमाइनिंग, 14 नीड टू विन दिस मैच। एग्जैक्ट 3.50 पर 3.50 रिक्वायर्ड रन रेट यहाँ पर चलते हैं। दूसरी ओवर फेंकने के लिए तैयार अबू का इस वक्त कुछ जल्दी के साथ इस वक्त गेंदबाज करने के लिए तैयार होते हुए। पिछले मैच पर 5वीं ओवर इन्होंने फेंका था, लेकिन आज इस मैच पर दूसरी ओवर इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಅಡ್ಯಾರ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ। ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಡ್ಯಾರ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಅಡ್ಯಾರ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। और गेंदबाजी पर अबू का इस बार रॉन्ग साइड के निशान पर किया जाता है और 1+1 वहां पर मिलेगा। इस तरफ की वहां पर गलती को रोकना ही चाहिए गेंदबाजी टीम के लिए अपने कमबैक करने के लिए, क्योंकि स्कोर केवल 19 रन की लक्ष्य वहां पर रख चुकी थी। अब 1 ओवर समाप्त करने के बाद 7 रन यहां पर बनते हुए 12 रन चाहिए बचे हुए 24 गेंद पर। इस बार रॉन्ग साइड के काफी दूर फिर से वहां पर अंपायर का इशारा वाइड करार देते हुए 11 रन चाहिए। 11 इज रिक्वायर्ड रन रेट, 11 इज रिक्वायर्ड, 11 रन चाहिए।
अबू का फिर से वहां पर ऑन साइड के निशान पर गेंद को केवल दिशा दिया था बल्लेबाजी ने, वहां पर गेंद जाते हुए बैकवर्ड के निशान पर एक रन वहां पर मिलेगा जरूर। इस एक रन के साथ रन संख्या पर आगे बढ़ते हुए 9 ऑन द बोर्ड, 10 रन चाहिए। इस बार गेंद को रिवर्सिव खेलना चाहा, बाउल्ड आउट, यू मिस्ड अ हिट यहाँ पर कहते हुए अबू का। और इसी के साथ पहला आरंभिक बल्लेबाज अशोक की बारी यहाँ पर खत्म हो चुका है। इन अशोक की जगह बनने के लिए नए खिलाड़ी 22 नंबर जर्सी पहनते हुए हर्षित इस वक्त बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। 19 रन की यहाँ पर लक्ष्य पीछा करते हुए रेड विंग्स कुंजत बैल के बल्लेबाजियों अपने जल्दबाजी के साथ इस वक्त बल्लेबाज आउट हो चुका है बाउल्ड आउट की तरफ से। और इनकी जगह बनने के लिए नए बल्लेबाज सावधान खिलाड़ी इस वक्त हर्षित बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। बचे हुए 22 गेंद 10 रन चाहिए। एग्जैक्ट रिकॉर्ड रन रेट 2.73, इस वक्त 2.73 पर इस वक्त रन रेट चलते हुए। फिर से अबू का इस बार गेंद का वहाँ पर स्वीप किया था, गेंद सीधे डिक्लेयर एरिया के निशान पर जाते हुए 1 रन वहां पर मिलेगा। और 9 रन चाहिए बचे हुए 21 गेंद पर, 21 बॉल इज रिमाइनिंग और 9 रन चाहिए। अब थोड़ी से अंपायर की शरीर पर गेंद लगने के बाद वहाँ पर फिर से अंपायरिंग का कार्यभार निभाते हुए इस मैच का मैच ऑफिशियल मेन अंपायर शेख मलाली, वन ऑफ द एक्सपीरियंस कंपनर। और इस बार गेंद ऑन साइड के निशान पर जा चुकी है और गेंदबाजी ने गेंद को वहाँ पर लेकर विकेट को स्टंप्स को लगाने के पहले इनका पैरा वहाँ पर स्टंप्स को लग चुकी थी। और इसी के साथ अंपायर का कोई इशारा नहीं और वाइड प्लस 22 के हिसाब पर 1 रन वहां पर मिलेगा। इस 1 रन के साथ रन संख्या यहाँ पर आगे बढ़ता है 11 ऑन द बोर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 4 बॉल्स। 1 और 4 गेंद समाप्त करने के बाद 11 रन बन चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से अबू का इस वक्त गेंदबाज करने के लिए तैयार, राइट आर्म और द विकेट इस वक्त गेंदबाज करने के लिए तैयार अबू बकर। इस बार गेंद कॉन्सेट के निशान पर खेलना चाहा, लेकिन चूंकि विकेट कीपर ने गेंद का कलेक्ट किया और डॉटेड गेंद बिंदी गेंद यहाँ पर साबित हो चुका है। अब इस तरह की गिंदी गेंद कम से कम गेंदबाजी टीम के लिए चाहिए और स्लोअर वन डिलीवरी और इसी के साथ बिंदी गेंद के साथ इस वक्त ओवर की समाप्त हो चुका है। 2 ओवर समाप्त करने के बाद 11 रन बन चुका है। 11 ऑन द बोर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सेकंड ओवर। रन चाहिए 8 बचे हुए 18 गेंद पर। 18 बॉल इज रिमाइनिंग, 8 नीड टू विन दिस मैच। अब गेंदबाज करने के लिए नए गेंदबाज शेरू इस वक्त गेंदबाज करने के लिए तैयार। शेरू इस वक्त गेंदबाज करने के लिए तैयार और 1 रन वहां पर वाइड की तरफ से मिलेगा। 1 रन के साथ रन संख्या यहाँ पर आगे बढ़ते हुए 12 2 ओवर समाप्त करने के बाद। और इस बार गेंद को उछालना चाहा, लेकिन चूंकि और बल्लेबाज का कोई मौका नहीं। भिंदी गेंद तीसरी ओवर की दूसरी गेंद गेंदबाजी पर शेरू इस वक्त गेंदबाज करने के लिए इस बार गेंद फील्डर की और इसी के साथ स्ट्राइक रन के नीचे पर रन आउट यहाँ पर होते हुए ऐसा लग रहा था कि गेंद कैच आउट हो सकता है, लेकिन अंतिम ओवर पर गेंद फील्डर ने कलेक्ट करने के बाद टिप्पा करने के बाद गेंद का कलेक्ट किया था। स्ट्राइक रन के नीचे पर वहाँ पर थ्रो किया, विकेट कीपर ने विद इन द फैक्चर्स ऑफ सेकंड्स वहाँ पर स्टंप्स को नीचे लगाने के बाद गेंद को संपर्क करने के बाद रन आउट वहाँ पर हो चुका है स्ट्राइक रन के नीचे पर। इस रन आउट के साथ रन संख्या यहाँ पर रुक चुका है, केवल 12 रन पर 2 विकेट यहाँ पर सामना करना पड़ेगा। अब बचे हुए 16 गेंद पर 7 रन चाहिए। 16 बॉल इज रिमाइनिंग, 7 नीड टू विन दिस मैच। क्या रंजीत इनकी शैली पर मैच को जीत पाएगा या नहीं देखना पड़ेगा।
रंजीत एक हार्ड हिटर बल्लेबाज माना जाता है। देखना पड़ेगा कि 16 गेंद पर क्या 7 रन उन्होंने इस ओवर पर फिनिश करेगा या नहीं, देखना पड़ेगा। अब गेंदबाजी पर शेरू गेंदबाज करने के लिए 2 गेंद यहाँ पर फेंक चुके हैं। एक विकेट लेने के बाद फिर से इस बार गेंद को ऑन साइड के निशान पर स्वीप करना चाहा, लेकिन मिड ऑफ द बट कनेक्ट नहीं। अंतिम ओवर पर गेंद वहां पर बल्ले का संपर्क होने के बाद गेंद जाते हुए बैकवर्ड के निशान पर 1 रन वहां पर मिलेगा। 13 रन बन चुका है। 13 ऑन द बोर्ड आफ्टर लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 2 विकेट के नुकसान पर 13 रन यहाँ पर बन चुका है। इस बार गेंद को लेग स्पिन वहां पर गेंदबाज करते हुए 1 रन वहां पर मिलेगा। दूसरे रन मांगने के लिए कोशिश वहां पर दूसरी रन नहीं मिलेगा। 1 रन वहां पर संतुष्ट होते हुए 1 रन के साथ रन संख्या यहाँ पर आगे बढ़ते हुए 14 रन बन चुका है। 14 ऑन द बोर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 4 बॉल। फिर से गेंदबाजी पर शेरो, इस बार गेंद कॉर्नर के निशान पर खेला। गेंद वहां पर फील्डर के हाथों पर गई थी। गेंद को कलेक्ट करने के बाद तेजी से वहां पर विकेट कीपर के हाथों पर थ्रो किया था, लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर सुरक्षित मौजूद थे। 15 रन यहां पर बनते हुए 4 रन की दूरी मैच को जीतकर अगले अंक को प्रवेश करने के लिए, क्वार्टर फाइनल को प्रवेश करने के लिए इस बार हर्षित सेंसेबल क्रिकेट, एब्सोल्युटली सेंसेबल क्रिकेट के साथ 1 रन वहां पर ले चुका है। इस 1 रन के साथ रन संख्या पर आगे बढ़ते हुए 3 ओवर समाप्त करने के बाद 16 2 विकेट के नुकसान पर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 3rd ओवर स्कोर कार्ड इज मूविंग ऑन 16 ऑन द बॉल लॉस ऑफ 2 वैल्यूएबल विकेट्स। अब बच्चे वे 12 गेंद पर 3 रन चाहिए। देखना पड़ेगा कि इस ओवर पर क्या मस्जिद कन्नौर के गेंदबाज मैडन ओवर कर सकते हैं, और देखना पड़ेगा। और एक जादू और इस वक्त दिखानी चाहिए जादू गेंदबाजी। क्या 05 जर्सी नंबर पहनते हुए खिलाड़ी जादूगर गेंदबाज करेगा या नहीं, देखना पड़ेगा। और 6 रन के निशान पर हर्षित सेंसेबल क्रिकेट खेलने में माहिर है इन खिलाड़ी। और रंजीत ने गेंदबाजी पर 2 ओवर फेंकने के बाद 6 रन पर 3 विकेट। इन्होंने इस बार गेंद को चला, गेंद जाते हुए लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए। और इस चौके के साथ रेड विंग्स कुंजत बैल एंटर इनटू द क्वार्टर फाइनल। और अगले मैच को यहाँ पर खेला जाएगा। चैलेंज क्रिकेटर्स अड्डियर और रेड विंग्स कुंजत बैल के कप्तानों की आमंत्रण करना चाहता हूँ, जो कि टॉस के लिए वे वहां पर ಸ್ಟೇಜ್ ಕೋ ಸಂಪರ್ಕ ಕರೆ। ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಟಾಸಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿಗಾಗಿ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಡ್ಡಿಯರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಿರಣ್ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್, ಅದೇ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಸೇಮ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಡ್ಡಿಯರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಡ್ಡಿಯರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ, ಚಾಲೆಂಜರ್ ಅಡ್ಡಿಯರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಟಾಸಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸ್ವಾಮಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಡ್ಡಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೇನೆ. ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ನೋಂದಾಯಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಡ್ಡಿಯಾರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಲಗ್ಗಿಟ್ಟಂತಹ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅದೇ ರೀತಿ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಎರಡೂ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ. और फ्रेंड्स शांतिनगर प्रस्तुत करते हुए नेत्रावती ट्रॉफी 2022 एक शानदार आयोजन करने के बाद आज का दिन अतिरिक्त महारथियों के साथ रिबन कट करने के बाद अंतिम एक मैच बाकी है. फर्स्ट क्वार्टर फाइनल विल बी प्लेइंग हियर. आज का दिन का अंतिम मैच
फर्स्ट क्वार्टर फाइनल यहाँ पर खेला जाएगा। रेड विंग्स कुंजत बैल और चैलेंज अड्डियर की बीच। चैलेंज अड्डियर की कप्तान और रेड विंग्स की कप्तान प्लीज कमेंट टू द कमेंटेड एज सून एज पॉसिबल। अब इस वक्त टॉसिंग सेरेमनी वहाँ पर होते हुए रेड विंग्स कुंजत बैल ने इस वक्त टॉसिंग के लिए आ चुका है और चैलेंजर्स अड्डियर्स की कप्तान यहाँ पर टॉसिंग के लिए आ चुका है और दोनों और न्यूज फॉर द सेंटर रेड विंग्स कुंजत बैल ऑन द टॉस एंड एलेक्ट टू फील्ड फर्स्ट। अब आज का दिन का अंतिम मैच को यहाँ पर लेकर आते हुए रेड विंग्स कुंजत बैल टेकिंग ऑन चैलेंज क्रिकेटर्स अड्डियर्स के बीच इस वक्त मैच को खेला जाएगा और बल्लेबाजी करने के लिए दोनों बल्लेबाज यहाँ पर मैदान पर जल्द से जल्द प्रवेश करने के लिए आमंत्रण करना चाहता हूँ। और अंपायरिंग का कार्यभार इस वक्त करते हुए शेख मलाली, वन ऑफ द टॉप लीडिंग अंपायर ऑफ मैंगलोर डीके डिस्ट्रिक्ट एज वेल एज, और नज़ीर बजाल इस परिसर का एक शानदार अंपायर माना जाता है। हमारा साथ स्कोरर इस वक्त अमीन, फैसल, अदे रीति अब्दुल बजल, आज का दिन का एक और अंपायर, और लाइव टेलीकास्टिंग पर इरफान बेद्रा इनके सारथी के साथ इस वक्त लाइव टेलीकास्टिंग यहाँ पर होते हुए, और कमेंटेटर बॉक्स पर मेरे साथी कमेंटेटर हमारा गुरु इस वक्त सतीश सालियन सर और मैं सेल्फ कबीर कुदरोली, और इस वक्त हमारे साथ जुड़ते हुए कई सारे खिलाड़ियों और टीम के सदस्यों फ्रेंड्स शांतिनगर की अभिनंदन करना चाहता हूँ जो कि इस तरीके से वहाँ पर आयोजन किया है टूर्नामेंट को, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। और आज का दिन का फाइनल अंतिम मैच को यहाँ पर लेकर आते हुए ಎವರ್ಸೇನ್ ಅಡ್ಯಾರ್ ಪದವು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಫುಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಾಕೌಟ್ ಮಾದರಿಯ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಿಗದಿತ 16+12 ತಂಡಗಳ ನಾಕೌಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕೂಟ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಇದೇ ಬರುವ ತಾರೀಕು 8/1/2023 ಮತ್ತು 9/1/2023 ರಂದು ಅಡ್ಯಾರ್ ಪದವು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ। ಎವರ್ಸೇನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2023 ಸೀಸನ್ 7 ಸ್ಥಳ ಅಡ್ಯಾರ್ ಪದವು ಮೈದಾನ। ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ 2500, ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ 25,000 प्लस एवरसेन ट्रॉफी, सेकंड प्राइज 12,000 प्लस एवरसेन ट्रॉफी। डे 1 ಆದಿತ್ಯವಾರ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಎಸೆತಗಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ 16 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ। ಡೇ 2 ಸೋಮವಾರ ಥ್ರೋ ಎಸೆತಗಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 12 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ। ನಾಕೌಟ್ ಮಾದರಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ, 4 ಓವರ್ ಪಂದ್ಯಾಟ, ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಿರ್ಣಯ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ನಡುವೆ 1 ವಾರ ಮೊದಲು ಲಾಟ್ಸ್ ಎತ್ತಲಾಗುವುದು। ಲಾಟ್ಸ್ ಸಂದರ್ಭ ಮುಂಗಡ 1000 ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು।
ತಂಡದ ಸರ್ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ. ಎಸ್ स्टार्टिंग ऑफ द मैच हियर पहला गेंद रंजीत इस वक्त रंजीत एक ऐसा खिलाड़ी कभी कभी लेग कटर कभी कभी ऑफ कटर कभी कभी तेजी कभी कभी स्लो और एब्सोल्युटली फैंटास्टिक गेंदबाजी बाहर गेंद को यहाँ पर उछाला चाहा बल्लेबाज चुके और गेंद को यहाँ पर बैक टू द बॉलर के निशान पर गेंद जा चुके थे. वहाँ पर गेंद को विकेट कीपर की दस्ताना पर थ्रो किया था. विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया विद इन द फ्रैक्चर्स ऑफ सेकंड्स विकेट वहाँ पर फॉलन किया था लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर सुरक्षित है. एक रन वहाँ पर मिल चुका है. पहला गेंद पर एक रन मिल चुका है. रंजीत के बारे में हम फरमा रहे थे. रंजीत एक ऐसा खिलाड़ी कभी कभी लेग कटर कभी कभी ऑफ कटर कभी कभी तेजी कभी कभी स्लो रन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक नो डाउट एट ऑल. और इसी के साथ रंजीत के बारे में हम पिछले मैच को देखा जाए तो 2 और उन्होंने फेंक किया था. 6 रन पर 3 विकेट ले चुके थे और इसको इन खिलाड़ियों के सामना करना थोड़ी सी मुश्किल का बात वहाँ पर हो जाएगा संतोष और रियाज के लिए. संतोष टेकिंग ऑन स्ट्राइक इस वक्त गेंदबाज वहां पर रंजीत पे से राइट ओवर द विकेट. इस बार गेंद को चला गेंद को वहां पर डीप स्क्वायर लेग के निशान पर जाते हुए 4 रन के लिए. और इनकी अनुभवी के साथ संतोष ने बल्ले को वहां पर उछाल दिया था मिड ऑफ द बैट कनेक्ट करने के बाद 4 रन के लिए. इस चौके के साथ धुव्वेदार वहां पर शुरुआत हो चुकी है टीम चैलेंजर्स अड्यार के लिए. किस तरीके से वहां पर शुरुआत करनी चाहिए था इस तरीके से वहां पर शुरुआत वहां पर होते हुए अड्यार चैलेंजर्स अड्यार के लिए. संतोष पहला गेंद उन्होंने सामना किया था रंजीत की. पहला गेंद पर गेंद को स्क्वायर लेग के निशान पर उछालने के बाद 1 बॉल्स ओवर द टॉप 4 रन के लिए. इस चौके के साथ यहाँ पर रन्स धीरे से रन्स जंप होते हुए 5 रन बन चुका है 2 गेंद समाप्त करने के बाद. पावर प्ले इस वक्त जारी हो चुका है. 2 फील्डर आउटसाइड द सर्कल एक मेगा श्रृंखला इस वक्त आयोजन करने के बाद. तीसरी गेंद रंजीत गेंदबाजी पर. इस बार गेंद को चला गेंद जाते हुए हवा में गेंद के नीचे फील्डर वहां पर कैच आउट. पिछली गेंद पर सफलता वहां पर पा चुकी थी बल्लेबाजी ने. अब इस गेंद पर सफलता पा चुका है गेंदबाजी ने. और इस गेंद के साथ जिस तरीके से कमबैक वहां पर करनी चाहिए था उस तरीके से वहां पर कमबैक हो चुका है रंजीत के लिए. और इस रंजीत ने इस विकेट के साथ वहां पर खुशी के वहां पर माहौल दिखा दे रहे. तालियों की गड़गड़ा इस वक्त पवेलियन की ओर से वहां पर सुनाई दे रहा था क्योंकि संतोष इस टूर्नामेंट का 3 मैच पर उन्होंने खेला था एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. अच्छी तरह से उन्होंने साझेदारी भी किया था रियाज और संतोष ने 2 मैच पर. और इस 2 मैच पर वहां पर संतोष खेलने के बाद इनकी विकेट वहां पर लेने तो जरूरी थी रेड विंग्स कुंजत के के लिए. और इनकी विकेट वहां पर लेने के बाद जोरदार तालियां बजाते हुए सुनाई दे रहे हैं पवेलियन एन की ओर से रेड विंग्स की. और इनकी जगह बनने के लिए नए खिलाड़ी 7 नंबर जर्सी पहनते हुए यस संतोष की पाली जगह बनने के लिए सुहेल 1 मोर टैलेंटेड ऑलराउंडर फॉर द साइड इस वक्त बल्लेबाज करने के लिए तैयार. 7 नंबर जर्सी पहनते हुए 7 to 7 7 नंबर जर्सी पहनते हुए गेंदबाज 7 नंबर जर्सी पहनते हुए बल्लेबाज इस वक्त रंजीत टू सुहेल गेंदबाज करने के लिए तैयार. पावर प्ले इस वक्त जारी हो चुका है. फिर से वहां पर रंजीत गेंदबाज. इस बार गेंद को उछालना चाहा ड्राइव किया था ऑफसाइड के पर गेंद वहां पर ठीक तरीके से रंजीत शायद कलेक्ट किया था रन आउट के तरफ सकता था लेकिन वहां पर रंजीत ने वहां पर मिस किया था गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए और वाइड थ्रो थे. इसका फायदा उठाते हुए एक और रन वहां पर भाग चुके हैं. इन 2 रन के साथ रन संख्या यहाँ पर जंप होते हुए 7 ऑन द बोर्ड 7 ऑन द बोर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 4 बॉल्स. 4 गेंद समाप्त करने के बाद 7 रन यहाँ पर बन चुका है 1 विकेट के नुकसान पर. ऐसा लग रहा था कि 30-10 दायरे के अंदर जो क्षेत्ररक्षक वहां पर गेंद को रुका गया था और थ्रो किया था गेंदबाजी को. गेंदबाज वहां पर गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए. थोड़ी सी वाइड थ्रो थी और इस वाइड थ्रो को वहां पर फायदा उठाते हुए बल्लेबाज दूसरी रन वहां पर दौड़ चुकी थी. इस 2 रन के साथ रन संख्या वहां पर आगे बढ़ते हुए 7 ऑन द बोर्ड 7 रन यहाँ पर बन चुका है. अब केवल 2 गेंद से पावर प्ले के इस बात को यहाँ पर मद्देनजर रखते हुए गेंदबाज बल्लेबाज यहाँ पर बल्लेबाज करते हुए दिखाई दे रहा है. 5वीं गेंद रंजीत गेंदबाज करने के लिए तैयार. सुहेल इस वक्त बल्लेबाजी करने के लिए तैयार होते हुए. आखिरी 5वीं गेंद. इस बार गेंद को वहां पर ड्राइव किया ऑफसाइड के निशान पर रहा लेकिन वहां पर प्रोटेक्शन इज देयर. फील्डिंग वहां पर मौजूद थे और गेंद को वहां पर कलेक्ट किया था. स्ट्राइक रन के निशान पर गेंद को थ्रो किया. फील्डर अशरफ ने वहां पर फील्ड किया था इस गेंद को. इसी के साथ 1 रन वहां पर बल्लेबाजी को मिलेगा. इस 1 रन के साथ रन संख्या यहाँ पर आगे बढ़ता है 8 ऑन द बोर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 5 बॉल्स. 5 गेंद से समाप्त होने के बाद 8 रन बन चुका है 1 विकेट के नुकसान पर. फिर से रंजीत कमेंट्री एन की ओर से इस वक्त गेंदबाज. इस बार गेंद को चला गेंद के नीचे फील्डर और कैच आउट. जिस तरीके से संतोष ने खेला था
स्क्वायर ऑफ द विकेट और स्क्वायर लेग के निशान पर रहा, लेकिन इसकी शॉट पर थोड़ी सी दम थे, इस शॉट पर शायद दम नहीं थे और इसका फायदा उठाते हुए गेंद के नीचे फील्डर दौड़ते हुए आ चुके थे कुछ फील्डर ने और कैच को लपटा और इसी के साथ रियाज की बारी खत्म हो चुका है। पिछली 2 मैचेस पर रियाज और संतोष ने कई सारे साझेदारी करने के बाद भी अपने टीम को जिताया था। अब इस वक्त पहला ओवर पर 2 विकेट वहां पर गिर चुका है। क्यों सतीश जी, पहला ओवर पर 2 विकेट वहां पर गिर चुका है, कैसा लग रहा है आपको इस मैच पर? Well, they got a run, but they lost 2 very big wickets. That's a big difference, isn't it? 8 runs is not a big difference, but 2 wickets definitely going to be a big difference. The wicket of Santosh has got the ability of playing a long innings, and at the same time, Riaz is a very good striker of the ball, and that means Red Wings are strongly back into this game, and wait and see how well they will go and to tighten up the screws in the remaining overs. But totally, this match is definitely going to be more interesting because both the teams has got some good players, quality players in the side, and we are just looking forward for the good performance from both the teams. The good performance in the sense the battle between healthy battle between bat and ball. बिल्कुल सतीश जी, आपने सही फरमाया था। अब गेंदबाजी पर तब्दील होते हुए, परिवर्तन होते हुए नए गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज करने के लिए तैयार। यजनेश, वन मोर टैलेंटेड गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज करने के लिए तैयार। लेफ्ट आर्म और द विकेट, इस बार गेंद को चलना वहां पर केवल दिशा दिया था ऑनसाइड के निशान पर, गेंद वहां पर जा चुके थे, लेकिन फील्डर थोड़ी सी लेट आने के बाद बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। इस 1 रन के साथ वहां पर रन संख्या आगे बढ़ते हुए 9 ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ 2 वैल्यूएबल विकेट्स, 2 विकेट के नुकसान पर 9 रन यहाँ पर बनते हुए और यजनेश इस वक्त फिर से गेंदबाज करने के लिए तैयार। 6 रन के निशान पर बल्लेबाज इस बार गेंद को चलना चाहा, गेंद ऑप्शन काफी दूर और अंपायर का इशारा वाइड करार देते हुए एक्स्ट्रा की तरफ से फिर से वहां पर 1 रन मिलेगा और इससे एक्स्ट्रा का वहां पर फायदा उठाते हुए बल्लेबाजी टीम वहां पर आगे बढ़ रहा है और इस 10 रन के साथ फिर से यजनेश इस बार गेंद को उछालना चाहा, जोरदार अपील वहां पर, लेकिन अंपायर का कोई इशारा नहीं। डॉटेड गेंद, बिंदी गेंद यहाँ पर साबित होते हुए परिवर्तन के दौर पर धीमी गति के साथ इस वक्त गेंदबाज किया था एजनेस ने और इस गेंद को वहाँ पर बल्लेबाज कनेक्ट नहीं कर पाए, गेंद को वहाँ पर बल्ले का संपर्क नहीं कर पाए और इसी के साथ डॉटेड गेंद, बिंदी गेंद वहाँ पर साबित होते हुए 2 गेंद समाप्त करने के बाद 10 रन बनते हुए 2 विकेट के नुकसान पर लॉन्ग ऑफ का बाहर, मिड ऑफ का अंदर वहां पर रखते हैं। इस बार गेंद एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, गेंद ऐसा लग रहा था कि गेंद ऑफ स्टंप को छोड़कर जाए, लेकिन अंतिम ओवर पर गेंद कट होने के बाद और वहां पर अंदर की ओर आने के बाद विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया और इसी के साथ बिंदी गेंद फिर से वहां पर साबित होते हुए और इस डॉटेड गेंद के साथ रन संख्या पर रुक चुका है 10 रन पर 2 विकेट के नुकसान पर। फिर से एजनेस 2 बैक टू बैक बिंदी गेंद के साथ फिर से गेंदबाज करेंगे। इस बार गेंद को चलना चाहा, फिर से वहां पर चुके 3 बैक टू बैक डॉटेड गेंद, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। पिछली गेंद पर एक वाइड वहां पर गिर चुकी थी इनकी गेंदबाजी पर, लेकिन ये वाइड के साथ वाइड के बाद इन 3 गेंदबाज ने वहां पर किया था और 3 गेंद ने अलोंग द कारपेट, जैसे अंग्रेज में कहते हैं, बिल्कुल जमीन के साथ रख चुके थे, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। और इस बार गेंद को चलना चाहा, लेकिन गेंद को सीधे से कनेक्ट नहीं कर पाए। 30-10 दायरे के अंदर की वो फील्डर थे, इन्होंने गेंद को फील्ड करने के बाद थ्रो किया था विकेट कीपर की दस्तानों पर। इसके पहले वहां पर दौड़कर 1 रन प्राप्त कर चुका है। इस 1 रन के साथ वहां पर रन संख्या आगे बढ़ता है 11 ऑन द बोर्ड, 11 रन बन चुका है 2 विकेट के नुकसान पर। आखिरी बार 1 बॉल इज रिमाइनिंग। एजनेस इस वक्त आखिरी बार गेंदबाज करने के लिए तैयार, इस बार ऑफसाइड के काफी दूर और फिर से वहां पर गलती कर बैठे और वाइड के साथ एक्स्ट्रा की तरफ से वहां पर बल्लेबाजी टीम के लिए मिलेगा 1 और रन। इस 1 रन के साथ रन संख्या वहां पर आगे बढ़ते हुए 12 ऑन द बोर्ड। लास्ट बॉल, इस बार गेंद को चला, गेंद के नीचे फील्डर वहां पर कैच आउट। ऐसा लग रहा था कि अंतिम ओवर पर गेंद को वहां पर कैच फिसल चुके थे, लेकिन इनके हाथों पर टपक आने के बाद दूसरे हाथ पर इन्होंने कैच को लपटा और इसी के साथ विकेट नंबर 3 वहां पर गिर चुका है 2 ओवर की समाप्ति के बाद। और सतीश जी, मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जो कि पिछली 2 मैचेस पर इन्होंने चैलेंज एडियर ने संतोष और रियाज 2 मैच पर भी कम से कम 15 से ऊपर इन्होंने पार्टनरशिप किया था, लेकिन आज का इस मैच का अंतिम मैच क्वार्टर फाइनल मैच थे। पहला ओवर पर इनकी दोनों का विकेट गिरने के बाद थोड़ी सी मुश्किल का यहाँ पर दबाव का सामना करना पड़ेगा। क्यों सतीश?
Thank you, Kabir. And you rightly mentioned about that two batsmen's dismissal will going to make a big difference in this match. And because of Santosh, is everybody knows this caliber. He got the ability of playing a long innings. At the same time, Riaz is a hard hitter of the ball. Once they lost the wicket in the first over itself, then we can see that the challenge Adyar started to feel the pressure. But they can release the pressure because this man, the Imran, is a man who is really got that kind of potential and that got a ability of getting some runs for his team. Wait and see as Ranjit once again continuing away from us. Right arm over wicket balls outside the line of flag stem, but I think the ball is well within the reach of the batsman. Batsman just left the ball, thought it might be a wide, but umpire rightly unmoored, and there is no chance at all for any run. Score remains on 12 on the board. And over number 3 in progress. There is 6 runs per over run rate progressing because of that first over which is bowled by Ranjit is considered 8 runs, and but Yadnesh bowled fantastic second over where he bowled over for 4 runs. One more dotted delivery. Each and every dot ball will going to create a problem for Challenge Adyar. Of course, Challenge Adyar has got a very good bowling department as well, but less than 30 runs it's always going to be a difficult for any team to depend the match. This again driven nicely down to deep mid wicket region. There is a fieldsman there in the deep mid wicket will going to field the ball neatly and returns the ball quickly to the hands of wicketkeeper. Ample time for the batter to complete the single. With the single, scoreboard moves on to 13 on the board for the loss of 4 wicket as Ranjit once again back to his bowling mark. Imran and Tansir are the two batters. Slowly and steadily they wanted to consolidate because they lost 3 valuable wickets back into pavilion. They need to play some intelligent cricket if they wanted to get some runs here. Ranjit, right arm over wicket again. Intelligent cricket, this is what you call intelligent cricket. Imran just pushing the ball soft and comes into play to pick the single down to short cover point region, and Tansir responded very well for that risky single, but risk is a part of cricket. You can't win the match without taking a risk, and both the batsmen taking that risk ran very well. Scoreboard numbers on to 14 now on the board for the loss of 3 wicket. Ranjit again so far he's got a very good tournament from the ball, and he bowling away from us. Right arm over the wicket bowls to Tansir this time across the line of delivery, swinging that one, but in fact of the line is outside the line of off stump. That's why the half-hearted shot there from Ranjit. Confident appeal from behind the stump, but not that much of confident enough there from Ranjit. You know exactly where the ball is going to miss the stumps, and that's why he's not really appealing for leg before wicket. But there's a leg by call by umpire. It's a 15 on the board, and a short backward point, short extra cover coming very close to the batsman. Deep cover point, deep long off is there, deep mid wicket is there, long on is there, deep backward square legs, short fine leg, short mid wicket. The fielding set here for the right-hander batsman Imran. Ranjit, right arm over the wicket, nicely driven down to square leg region, but not more than a single. Ashid, one of the safest pair of hands. No chance for a second run whenever he is in the picture. One more good over is completed by Red Wings through Ranjit, and after completion of over number 3, searching for the right track. And team Challenge Adyar managed to get 16 runs in this 3 overs. Just I want to see the bowling figure of Ranjit. He bowled 2 good overs compared to previous over. This is a better over, and altogether he bowled 2 overs, conceded 12 runs, and picked up 2 valuable wickets. It's a good bowling figure for any bowler because he bowled 1 power play over. That's very important, isn't it? 8 runs which is came in that power play over, then 4 runs which is came after that power play over. So Kiran, the magician, as far as in this particular tournament is concerned, he picked up 4 wickets in 4 deliveries in the previous match against Mazdakanur. Is now back on attack with jersey number 777. He's a tall man, well-built personality, and starts with a beautiful delivery, just using his arm what he has got and getting some extra pace. Sometime he mixing up the delivery very well. It's a very difficult sometime to read the kind of delivery which is bowled by Kiran. Kiran right arm over the wicket bowls. This time went for the reverse sweep, and the ball went outside the declared area, and a single run for the batter. With that single, scoreboard numbers on to
17 on the board. 17 for the loss of 3 wickets. Back into pavilion. Imran back on strike. Kiran. This time appeal for leg before you get chance of run out as well. But again that ball might be little bit outside the line of off temp, the impact of line. That's why umpires the benefit of doubt is given to the batter. But a single is taken in the middle with that single scored. Namuzan to 18 on the board. Kiran, the 4 wickets all in his name in the previous match. But Imran is the one is the highest wicket getter so far in this tournament. 8 wickets hold so far for him. Kiran bowling away from us. Right arm over the wicket bounce. Tries it and powerfully down to deep long on region. There is a protection given in the deep. In comes the throw. Lovely piece of fielding there by the fielder. Denying Tamzeen is the fielder down at deep. Long on is always very quick in the deep. And denying the second from the batter. So with that single score, but Namuzan to 19 on the board for the loss of 3 wicket in the over number 4 in progress. Kiran back to his body mark. The battle is on for the place in the semi-final. Imran drives up hastily and Tanzeen is charging in from the deep long on region. Take the wonderful running catch. The Imran's big fish in the net now for Red Wings. Imran back to pavilion. Just he wanted to break the shackle, but he's not really choosing the right delivery to get that big shot. The placement is not good enough. Timing and power is not good enough. And he just pays the penalty for that. But outstanding catch taken in the end by Tanzeen by charging to his front and completed that wonderful catch down at deep long on. The wicket number 5, which is a 4 in fact, is back into pavilion. Just look at that one in replay. Lofted that one, but look at the fielder where he was running from the deep and completed the catch quite nicely by running to his friends. So now challenge Adyar are looking in trouble. So new batsman in is Safwan. Last ball remaining in this over as Kiran. So far it's a very good over. Not really given any opportunity for a batter to get any kind of big shots. Final time in this over. Kiran around the wicket, operated. We will go into ball to the left hand batsman Safwan. Balls. Someone tries beautiful stroke off the back foot and drives that one powerfully down to deep cover point region. Will go and retain the strike. Good over completed there by Kiran. He got a wicket in this over as well. Altogether 4 overs which is completed. After completion of 4 overs, challenge Adyar still they're searching for the right track. Still they're struggling in the middle. Scored 20 runs on the board at the rate of run rate of exactly 5 runs per over. The last over remaining in the innings, and wait and see how many runs they will go into score in this last and final over. Harshit, one more fantastic performer from the bat and ball. It's a very good all-rounder for the side. He's a very good fielder, in fact, and he will go into the final over. So final opportunity for challenge Adyar to get some runs. And just I mentioned about 30 plus runs, which is badly required in the conditions. Seeing that the batting department of Red Wings is formidable. So wait and see how well these two batters will going to get some runs here in the final over of their innings. Kiran around the wicket, bowls to Safwan. Safwan this time left the ball because he is almost standing well outside the line of leg stump. That's why he couldn't manage to reach that delivery, which is a good thinking bowling there from Ashit. Seeing the batsman is a little bit dancing in the pitch. His ball outside the line of off stump, and batsman completely missed that delivery. Coming down the track, charging that one, but not really getting that much of enough timing in that stroke. Just a single here. The fielding of Red Wings is outstanding, isn't it? No one fielder looks like he's going to give any extra runs. The neat collection, good throw, the very good body languages, we can see that.
It looks like all are the professionals as Red Wings are looking like they are the favorite of winning this match. But cricket, everybody knows even challenge Adyar as definitely they got a potential. They got every chances of winning this game, but they need to bat well the remaining 4 deliveries of their final over. Ashit, full toss, lofted, but not really having enough timing, and catch has been dropped there by the mid-wicket fielder. They're coming back for the second as well. Ranju from the deep mid-wicket region is charging to the ball, trying to take the catch. He not only drops the catch, but a couple of runs which is conceded for Adyar. And it is a lucky couple of runs, 23 on the board in the over number final is in progress. 4 time in this over. Ashit, right arm over the wicket bounce. This time again try to hit that one pretty hard. Vignesh not interested for the run out. You know exactly, just need to prevent the runs. Single, they will not going to bother about that single. They know exactly they need to prevent the boundaries and sixes. Very difficult to get the boundaries and sixes in the evening. Of course, in the morning there is some big shots we can witness, but after that it's a very difficult to get past this. Even this is a small ground, but very difficult to get big shots because of the direction of the wind is not really helping the big shots. 5th time minutes over. Safan coming down the track, driven. Kiran off stopped, just a single. One more addition to total. With the addition of that single, scoreboard moves on to 25 on the board. So far in this over, the 5 runs taken by both the batters. And last ball remaining in their innings. Last and final delivery. One big shot will going to take this match more interesting. But one dotted delivery makes little bit difficult for challenge Adyar to defend the total. Wait and see. Ashit wanted one good ball. The batter Tansir wanted one, at least the boundary he wanted to get for his team. Wait and see. Will it going to be Ashit or will it going to be a Tansir? This time Ashit ball, beautiful delivery, no chance at all. Ball just came along the carpet, just a single in the form of leg by. That's it. The 5 overs completed. After completion of 5 overs, challenge Adyar, they managed to score 26 valuable runs by losing 4 wickets, and they set a target of 27 for Red Wings Kunjat Bail to win this match. And we will see how well Red Wings Kunjat Bail will going to get this score, and we will see how challenge Adyar will going to give some challenge for Red Wings. It's going to be a more interesting game. I think even that 27 it might be a little bit less score to depend. But in this condition, if a challenge Adyar will going to get some wickets in the first 2 overs, if you are able to bowl 1 or 2 very good overs in the beginning, they can prevent the opposition from the victory. And what is the strategy, the game plan, the tactics from these 2 teams to qualify for the semi-final? And before the innings will going to start of Red Wings. 27 is the total score. 27 to get, little correction, yes, 27 to get 26, which is the total score. And we'll take a short break. It's not a short break here because Kabir just waiting for the mic because the match is more interesting here. And welcome Kabir here. It's the final time for the day number 1 of this most prestigious cricket tournament. And what do you think about this match? Is 27 will going to be enough for challenge Adyar? Because challenge Adyar, they got a fantastic bowling department, and nevertheless, even Red Wings, they also got some very good batting department, and so that I think the match is evenly balanced. It's going to be a definite opportunity for both the teams to qualify for the semi-final, and for that, both the teams have to put their 100% in this game if they wanted to get the best result in this particular quarter-final match. It's over to Kabir for the final time in this particular day number 1. Thank you. धन्यवाद सतीश जी, आपने सही फरमाया था।
एक बलाढ्य बैटिंग लाइनअप को इस वक्त सामना करना पड़ेगा बॉलिंग डिपार्टमेंट के लिए, चैलेंजर्स अडियर्स के लिए, क्योंकि एक बलिष्ठ बलाढ्य बैटिंग लाइनअप है रेड विंग्स कुंजत बेल की। इसको सामना करना है तो थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इनका बॉलिंग डिपार्टमेंट को हम कहा जाए तो इस अच्छी तरफ से गेंदबाजी है इनकी टीम पर। चैलेंजर अडियर्स के पिछली 2 मैच पर अच्छी तरफ से इन्होंने लाइन और लेंथ के साथ इस वक्त गेंदबाज किया था। इस तरीके से वो गेंदबाज करने चाहिए मैच को वहाँ पर जीतने के लिए। अब पहला गेंद इस वक्त गेंदबाज करने के लिए तैयार सुहेल गेंदबाजी पर, अशोक और इस वक्त हल हल और इस बार पहला गेंद को कट किया ऑफ साइड के निशान पर गेंद जाते हुए 1 रन वहां पर मिलेगा सर। इस वक्त इस तरीके से वहां पर इन दोनों बल्लेबाज शायद खेला गया तो सेंसिबल क्रिकेट खेला गया तो शायद मैच को आसान से जीत सकता है। देखना पड़ेगा कि किस तरीके से गेंद को वहां पर गेंदबाजी करते हुए मैच को कम बैक कर पाएगा। और दूसरी बार सुहेल गेंदबाजी पर तंजीम, इस बार स्ट्राइक, इस बार गेंद को चला लेकिन गेंद के नीचे वहां पर फील्डर मौजूद। 1 टिप्पा 2 टिप्पा करने के बाद भी वहां पर लॉन्ग ऑफ के निशान पर वो फील्डर थे, इन्होंने गेंद को कलेक्ट किया और थ्रो किया था 9 सेकंड के निशान पर। इसके पहले वहां पर 1 रन प्राप्त कर चुका है बल्लेबाज और इसी के साथ 2 रन 2 गेंद पर। तीसरी गेंद इस बार गेंदबाज करने के लिए तैयार सुहेल गेंदबाजी पर 6 रन के निशान पर। अशोक पावर प्ले इस वक्त जारी हो चुका है, 2 फील्डर आउटसाइड द सर्कल, एक मेगा श्रृंखला और तीसरी बार इस बार गेंद को चलना चाहा लेकिन मिड ऑफ द बैट कनेक्ट नहीं, रन की हो सकते थे। लेजी रनिंग वहां पर अंतिम ओवर पर, लेकिन गेंदबाज वहां पर गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए थे सही तरीके से और बेल्स ऑफ किया था जरूर, लेकिन इनके हाथों पर गेंद नहीं थे और इसी के साथ बल्लेबाज क्रीज पर सुरक्षित था। 3 गेंद 3 रन यहां पर बनते हुए चौथी गेंद सामने करने के लिए तैयार तंजीम 6 रन के निशान पर बल्लेबाजी करते हुए। इस बार गेंद को उछाला और ड्राइव किया था आउटसाइड के निशान पर गेंद जाते हुए 1 रन वहां पर मिलेगा। दूसरे रन मांगने के लिए वहां पर कोशिश, दूसरी रन नहीं मिलेगा। 1 रन में संतुष्ट यहाँ पर होते हुए स्ट्राइकर के निशान पर जो बल्लेबाजी थे इन्होंने अपने पूरा का पूरा जिम्मेदारी उठाते हुए इस वक्त मैच को वहां पर खेलते हुए नजर आ रही है। और इसी के साथ 4 गेंद समाप्त करने के बाद 4 रन यहाँ पर बन चुका है। सेंसिबल क्रिकेट, एब्सोल्युटली सेंसिबल। इस बार गेंद को चला, गेंद के नीचे फील्डर, लेकिन इट्स अ बिग, इस चक्के के साथ धुएंधार शुरुआत यहां पर होते हुए मिडल ऑफ द बैट कनेक्ट किया और गेंद को उछाला, गेंद जाते हुए डीप मिड विकेट की बाहर 6 रन के लिए। जिस तरीके से वहां पर शुरुआत करनी चाहिए था रेड विंग्स कुंजत बेल को, इस तरीके से वहां पर शुरुआत करते हुए पिछली गेंद पर 2 रन भागने के लिए कोशिश किया था तमजीन ने, लेकिन वहां पर 6 रन के निशान पर जो खिलाड़ी है अशोक ने, इन्होंने रुकाया था। किस लिए कि इस तरीके हम लास्ट 2 गेंद को वहां पर फायदा उठाने के लिए, अब इस वक्त 5वीं गेंद को फायदा उठाया और गेंद को बाहर रख दिया है। और आखिरी बार इस बार गेंद को उछाला जल्दबाजी, लेकिन ऑन साइड के निशान पर गेंद जाता है। अंपायर का इशारा 22 का इशारा, लेग 22 का इशारा यहां पर देते हुए और 1 रन वहां पर मिलेगा अद्रिक की तरफ से। इस 1 रन के साथ रन संख्या यहां पर भागते हुए 11 रन यहां पर बनते हुए 1 ओवर की समाप्त करने के बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट ओवर स्कोर कार्ड इज मूविंग ऑन 11 ऑन द बोर्ड। बिना कोई विकेट के नुकसान पर 11 रन यहां पर बनते हुए अच्छी तरफ से यहां पर शुरुआत हो चुका है रेड विंग्स कुंजत बेल के लिए। अपने बचे हुए बार वहां पर 24 गेंद पर रन चाहिए केवल 16 इज रिक्वायर्ड, रिमाइनिंग 24 बॉल्स। 4.00 पर 4.00 एग्जैक्ट रिक्वायर्ड रन रेट इस वक्त सामना करना पड़ता है रेड विंग्स कुंजत बेल की बल्लेबाजी के लिए। और देखना पड़ेगा कि गेंदबाजी पर किस गेंदबाजी हार इस वक्त गेंदबाज करने के लिए इमरान इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट विकेट टेकर माना जाता है। 8 विकेट के साथ इस वक्त गेंदबाज किया था इमरान ने। देखना पड़ेगा कि इमरान की गेंद पर क्या कुंजत बेल की इन साझेदारी को तोड़ पाएगा या नहीं, देखना पड़ेगा। पावर प्ले इस वक्त समाप्त करने के बाद वहां पर फिर से परिवर्तन करते हुए सेक्शन पर फील्डिंग में परिवर्तन करने के बाद गेंदबाजी करने के लिए तैयार इमरान, पर्पल कैप विनर इस टूर्नामेंट की। देखना पड़ेगा कि अब तक इनके पक्ष पर पर्पल कैप जाते हुए गेंदबाजी पर इमरान, 6 रन के निशान पर अशोक इस बार गेंद को
कट किया था ऑनसाइड के ऑफसाइड के निशान पर गेंद जाते हुए 30-10 दायरे के अंदर जो क्षेत्र रक्षक ने गेंद को रोक दिया था। 1 रन बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। इस 1 रन के साथ वहां पर रन आगे बढ़ते 12 ऑन द बोर्ड आफ्टर कंप्लीशन 1.1 ओवर। दूसरी बार इमरान गेंदबाज करते हैं अलोंग द कारपेट, बिल्कुल जमीन के सारे गेंद रख चुके थे और डायरेक्ट हिट शायद हुआ था। बल्लेबाज को वहां पर खतरा मार सकते थे लेकिन थोड़ी सी वाइडिश हुई थी। विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए। ठीक तरीके से वहां पर डायरेक्ट हिट किया तो वहां पर स्ट्राइक रन की निशा पर शायद बल्लेबाजी को वहां पर खतरा मान सकते थे लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर सुरक्षित बचते हुए जीवदान वहां पर मिल चुका है अशोक के लिए। और इसी के साथ रन संख्या यहाँ पर भागते हुए 13 ऑन द बोर्ड। इस बार गेंद को रिवर्स स्वीप किया, गेंद के नीचे वहां पर फील्डर आते हुए 1 रन फिर से वहां पर मिलेगा। अशोक पिछली ओवर पर 4 सेंसिबल क्रिकेट वहां पर खेलने के बाद भी 5वीं गेंद को उछाल दिया था डीप मिड विकेट के साथ 6 रन के लिए। इस छक्के के साथ धुवेदार शुरुआत यहाँ पर होने के बाद इस वक्त रन संख्या पर रुकते हुए 14 रन पर 14 ऑन द बोर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 1.3 ओवर्स। देखना पड़ेगा कि चौथी गेंद इस वक्त इमरान गेंदबाज करने के लिए तैयार। इस बार गेंद को उछाला, गेंद जाते हुए डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए। 1 2 3 3 टप्पा खाने के बाद जो फील्डर थे डीप फॉरवर्ड की निशा पर इन्होंने दौड़कर आगे आ चुके थे, वहां पर फ्रंट फुट लेकर आ चुके थे लेकिन गेंद इनको वंचित करते हुए समाप्त 2 टप्पा का यहाँ पर। और इरफान बेद्रा इस वक्त लाइव टेलीकास्टिंग पर ऐसा फरमा रहा था कि गेंद केवल 2 टिप्पा खाए थे बाउंड्री लाइन के पहले और 2 टिप्पा खाने के बाद बाउंड्री लाइन को पार कर चुका है। इस बार गेंद को ड्राइव किया था ऑनसाइड के निशान पर 30-10 दायरे के अंदर जो क्षेत्र रक्षक ने गेंद को रोक दिया था लेकिन बल्लेबाज के पास 1 रन प्राप्त करने का मौका था और 1 रन प्राप्त कर चुका है। 19 ऑन द बोर्ड। अब आखिरी गेंद शेष। इस बार गेंद को स्ट्राइक डाउन द ग्राउंड गेंद को खेल चुके थे लेकिन गेंद के नीचे फील्डर वहां पर क्षेत्र रक्षण में थोड़ी सी मिस फील्डिंग। 1 रन वहां पर मिल चुके थे। दूसरे रन भागने के लिए कोशिश किया था बल्लेबाजी ने, दूसरी रन वहां पर मिलते हुए इन 2 रन के साथ 31 समाप्त 21 रन यहाँ पर बनते हुए 21 ऑन द बोर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सेकंड ओवर। 2 ओवर समाप्त करने के बाद 21 रन यहाँ पर बनते हुए अब केवल बचे हुए 18 गेंद बाकी है, 6 रन चाहिए। एग्जैक्ट रिक्वायर्ड रन रेट 2.00 2.00 पर इस वक्त रिक्वायर्ड रन रेट को आगे बढ़ते हुए बल्लेबाजी टीम के लिए। देखना पड़ेगा कि 7 नंबर जर्सी पहनते हुए गेंदबाज सुहाइल फिर से यहाँ पर गेंदबाज करने के लिए तैयार। कुछ हद तक यहाँ पर थोड़ी सी इस बार ऑनसाइड के निशान पर गेंद को चला गेंद जाते हुए और देखना पड़ेगा इट्स अ बिग और इस छक्के के साथ मैच को आसानी के साथ 2.1 गेंद पर खेलते हुए रेड विंग्स कुंजत बैल ने जीत कर अपने अगले हंत को यानी सेमीफाइनल हंत को यहां पर प्रवेश कर चुका है। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। गेंद को उछालने के बाद गेंद सीधे टकराई सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। इस छक्के के साथ मैच को जीतकर अपने अगले हंत को यहां पर रेड विंग्स कुंजत बैल ने प्रवेश कर चुका है। और कंग्रेचुलेशन टीम Red Wings Kunjat Bail and all the best team challenge at there for your future games। और इस मैच का और कल का दिन मैच खेला जाएगा एनएम एलिगेंट और गोरी यंग बॉयज पांडेश्वरा के बीच। कल का दिन पहला मैच हो जाएगा और सभी दर्शकों प्रेक्षकों को यहाँ पर स्वागत करना चाहता हूँ। कल का दिन का दूसरी दिन का नेत्रावती